ना कुछ भी नहीं होना। टाइमर तो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम देवी और सजनों, क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान एंड इंडिया फाइनल मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। वेलकम अगेन। लाइव स्ट्रीमिंग का स्टार्ट, मैच का स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट बाकी हैं और टीम्स बना दे कर आउट। क्या कस्टमर से साउंड थोड़ा ये बताओ। बना देना। कुछ नहीं होता नहीं देखती टेंशन में रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच फाइनल्स। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है हमारे सामने। इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग बॉलिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान की टीम मैदान की तरफ रवां दवां। इंडिया के जीतने की परसेंटेज 69%, पाकिस्तान की 31%। और बारिश के इम्कान ज़्यादा। हेड टू हेड लास्ट मैच पाकिस्तान इंडिया से बुरे तरीके से हारा है। इंडिया 8 विकेटों से जीता है लास्ट मैच। पाकिस्तान और इंडिया की यंगेस्ट टीमें आपस में टकराएंगी ओरिजिनल टीमों के टकराने से पहले इमर्जिंग कप में। India won the toss and chose to bowl. इंडिया अपने लास्ट 9 मैचों में 77% जीता है और 197 स्कोर की एवरेज रही है। हाईएस्ट स्कोर
84 रहा है, लोएस्ट स्कोर 134 है। पाकिस्तान अपने लास्ट 4 मैचों में 75% विन किया है। एवरेज स्कोर 254 रहा है और हाईएस्ट स्कोर 322 एंड लोएस्ट स्कोर 181। यहाँ पर आपसे पहले ही बता दिया जाए, फर्स्ट बैटिंग करने वालों के चांस 50% है, यानी 50-50 चांस है टीम्स के हिसाब से जीतने के, इसलिए बैटिंग बॉलिंग ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान और इंडिया पहले और दूसरे नंबर में। इंडिया अपने तीनों मैच जीतकर नंबर 1 6 पॉइंट्स के साथ, और पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीतकर नंबर 2। दोनों टीमें आज फाइनल में टकरा रही हैं। इंडिया वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। लाइव आपके साथ लाइव क्रिकेट से मैं मोहम्मद अहमद चुराही आपसे लाइव स्कोर की अपडेट शेयर कर रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान का मैच ओडीआई मैच है ये एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। टीम ए इंडिया की और टीम ए ही पाकिस्तान की मध्य मुकाबल होंगी। इंडिया टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला कर चुका है। हेड टू हेड मुकाबलों में इंडिया इस टाइम आगे। लास्ट 10 मैचेस में पेसर्स ने 53 विकेट्स ली हैं, जबकि स्पिनर ने 94 विकेट्स हासिल करके रिकॉर्ड स्पिनर्स के हाथ में। इंडिया इससे पहले बांग्लादेश को सेमीफाइनल में हराकर पहुंचा है 51 रन से। उससे पहले पाकिस्तान को हराया है 8 विकेट से। इमर्जन एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। ये मैच कोलंबो के मुकाम श्रीलंका से खेला जा रहा है। ये मैच लाइव, और वोटिंग परसेंटेज 69,000 लोगों ने वोट किया है, जिसमें से 68% लोगों ने इंडिया की टीम को वोट किया है जीतने में परसेंटेज में, पाकिस्तान को 32%। बट नो डाउट पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी टीम है। मैच शुरू होने के बाद कुछ कहा जा सकता है कि कौन सी टीम खेलेगी। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का फाइनल कोलंबो श्रीलंका से लाइव, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। बारिश के चांसेस आज काफ़ी ज़्यादा। ह्यूमिडिटी 74%, चांसेस 40% है बारिश के। 1:02 की अपडेट है ये बारिश की। कोलंबो श्रीलंका लाइव। बस चंद मिनट में मैच स्टार्ट होने के लिए तैयार। पाकिस्तानी टीम क्रीज में आ चुकी है।
23 जुलाई 2 मैच का स्टार्ट होगा इंडियन टाइम, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1:30 बजे मैच का स्टार्ट होगा। मैच इंडिया won the toss and chose to ball first। इमर्जिंग एशिया कप 2023 3 जुलाई 1:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोलंबो श्रीलंका मैच। हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान 75% विन, लास्ट 10 मुकाबलों में पाकिस्तान 75% विन रहा है, इंडिया 77%, चांसेस 50-50। इस टूर्नामेंट में मोस्ट रनर रहे हैं हैश धुल 195 रन के साथ इंडिया के। सेकंड नंबर पर बी सई 191 रन के साथ 4 इनिंग्स में। थर्ड नंबर पर भी इंडियन ही प्लेयर हैं अभिषेक शर्मा 160 रन 4 इनिंग्स में। इसके बाद पाकिस्तान के उमैर यूसुफ 148 रन के साथ 4 इनिंग्स में। उसके बाद पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद हारिस 130 रन 4 इनिंग्स में। मोस्ट विकेट्स में भी इंडिया के ऑलराउंडर सबसे टॉप पर हैं। निशांत सिंधु 10 विकेट्स 4 इनिंग्स। और सेकंड भी इंडिया के ही हैं मनाज 9 विकेट 4 इनिंग्स। एंड थर्ड प्लेयर भी इंडिया के ही हैं रजहरदन 8 विकेट्स 3 इनिंग्स, जस्ट 3 इनिंग्स। एंड फोर्थ नंबर पर हमारे पास हर्षित राणा 6 विकेट्स 4 इनिंग्स। और 5वें नंबर पर कासिम अकरम पाकिस्तान के ऑलराउंडर 6 विकेट 3 इनिंग्स। मोस्ट सिक्सेस में भी इंडिया के सुदर्शन 6 सिक्स लगाए हैं इन्होंने 4 इनिंग्स में। साइम अयूब थर्ड नंबर पर 3 सिक्सेस 4 इनिंग्स में। अभिषेक 3 सिक्सेस 4 इनिंग्स में लगाकर दूसरे नंबर पर। ऑलमोस्ट देखा जाए तो टॉप हाई स्कोर्स, टॉप स्ट्राइक रेट में दूसरे नंबर पर अरशद इकबाल पाकिस्तान के। और फोर्थ नंबर पर मोहम्मद हारिस और 5 नंबर पर मोहम्मद वसीम जूनियर। एंड बेस्ट इकॉनमी रेट में पाकिस्तानी नंबर 1 साइम अयूब। ओवरऑल इंडियन प्लेयर इस टाइम टॉप रैंक कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बट इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा कमबैक करेगा। पाकिस्तान पहला मैच हारने के बाद आज जीतने के लिए पुरुमीद। इंडिया वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। पाकिस्तानी टीम क्रीज पर मौजूद। हेड टू हेड मुकाबलों में इस टूर्नामेंट में इंडिया के साथ एक मुकाबला उसे इंडिया ने विन किया है 8 विकेट्स के साथ। और मैच स्टार्ट होने में कुछ लम्हात बाकी, 13 मिनट बाकी। टॉस हो चुका है। इंडिया वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। मैं लाहौर पंजाब पाकिस्तान, लाहौर से लाइव आपके साथ मोहम्मद अहमद शुराही। आज पाकिस्तान और इंडिया का इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जारी है। बस चंद लम्हात में आपको टीम एक्शन में नज़र आएंगी। टॉस हो चुका है। टॉस के विजेता हैं, टॉस को जीतने वाले हैं इंडिया, जिन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया है। लास्ट टाइम बॉलिंग करने का निर्णय उनका बहुत अच्छा रहा है।
उनका ये फैसला बॉलिंग करने का उन्हें जीत के पास ले गया था। और कोलंबो के मुकाम से ये मैच आपको लाइव दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। पॉइंट्स टेबल पर इंडिया नंबर 1, 3 के 3 मैचेस विन किए हैं। पाकिस्तान ने अपने 3 में से 2 मैचेस विन किए हैं और 1 लॉस किया है। इस वेन्यू पर पाकिस्तान आज तक अपना एक मैच खेला है और एक भी नहीं जीता। एवरेज स्कोर 205, हाईएस्ट 205, लोएस्ट 205। इंडिया इस वेन्यू पर 3 मैच जीता और तीनों के तीनों और 3 मैच खेला और तीनों के तीनों जीता है। विनिंग परसेंटेज 100, एवरेज स्कोर 197, हाईएस्ट स्कोर 211, लोएस्ट स्कोर 172। जोहर की अजानों का टाइम हो चुका है। मिलते हैं आपसे अजान सुनने के बाद। ठीक है, कोशिश तक देते हैं माइक हो ना फिर खट
लड़ी साउंड का पता चलेगा वो बड़ा मजा आएगा उसमें तो। अस्सलाम वालेकुम मैन। स्टार्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइव क्रिकेट। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद अहमद शुराही। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल मैच स्टार्ट है। टीम ए पाकिस्तान की दूसरे ओवर की दूसरी बॉल और खाली पहले ओवर में शानदार बैटिंग साइम अयूब की 11 स्कोर दिए हैं, एक छक्का और एक चौका लगाया, बहुत आला। हो गया सब रेडी तो दिखा। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल जारी और अपील की है खाली बॉल, नॉट आउट। शानदार बॉल पैड्स पर लगी लेकिन साइम अयूब काफ़ी आगे क्रीज में आगे थे। ये अपील नहीं करनी चाहिए थे इन्हें। पाकिस्तान पहला ओवर शानदार आगाज, 1.3 ओवर में 13 स्कोर, 0 विकेट के नुकसान पर। एक्सीलेंट प्ले। इंडियन बॉलर्स बहुत आला बॉल, साइम अयूब टोटली बेट। दूसरे ओवर की चौथी बॉल डाली जा रही है और बॉल हवा में बहुत शानदार शॉट एंड 4। साइम अयूब अपनी फुल फॉर्म में इस टूर्नामेंट में इतना आला उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इंडिया के साथ पहले मैच में आउट हो गए थे लेकिन आज एक अच्छा शुरुआत, बहुत आला 4 लव। और बाउंड्रीज अभी तक 2 चौके और 1 छक्का लग चुका है। मैच 10 बॉलों का खेल हो चुका है कंप्लीट। शानदार 4। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल जारी, एक और चौका, शानदार शॉट, बहुत आला और बहुत प्यारी वाइड थी, वाइड के ऊपर चौका। कमाल है, एक बॉल भी एक्स्ट्रा मिलेगी और 1 रन भी एक्स्ट्रा मिलेगा। शानदार शॉट, बल्कि सॉरी गलत बॉल और शानदार रन। वाइड +4, एक्स्ट्रा 5 रन दे दिए गए हैं इंडियन बॉलर प्रेशर में नजर आते हुए। श्रीलंकन फैंस पाकिस्तान को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल स्टार्ट, बहुत शानदार बॉल खाली और बहुत प्यारे तरीके से साइम अयूब ने बॉल को कवर किया। साइम अयूब जाने जाते हैं अपने इस तरह की शॉटों से। और शानदार खेल जारी है इस वक्त।
बहुत प्यारे तरीके से साइम अयूब ने बॉल को रोका। दूसरे ओवर की छठी बॉल करवाने के लिए रेडी एंड शानदार बीट किया है बॉल को। बॉलर का एक अच्छा ओवर, बस वो वाइड की वजह से काम खराब हो गया थोड़ा सा। कोई विकेट नहीं, 22 रन पर 0 विकेट। पाकिस्तान के फरहान अली जिन्होंने अभी तक एक बॉल नहीं खेली। साइम अयूब शानदार खेल पेश करते हुए तमाम का तमाम मैच खुद ही खेल रहे हैं। 2 ओवर का खेल कंप्लीट, 22 पर 0 विकेट के नुकसान पर 22 रन पाकिस्तान के कंप्लीट। दोनों ओवर शानदार, एक में दिए 9 स्कोर, एक में दिए 11 स्कोर। और इंडिया के नए बॉलर इस टाइम टूर्नामेंट के टॉप ट्रेंड बॉलर हैं सिंधु जी और राणा जी। पहली बॉल करेंगे, पहली बॉल बीट कर दी गई है, बहुत शानदार बॉल। इंडियन टीम इस टाइम एग्रेशन मूड में। पाकिस्तानी फरहान अपनी पहली बॉल को शानदार बीट किया उन्होंने। पाकिस्तान और इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करवाने के लिए। और एक शानदार बॉल जिसके ऊपर एक स्कोर निकाल दिया गया फरहान की जानिब से। बहुत आला बॉलिंग जारी इंडिया की जानिब से। साइम अयूब एक दफा फिर से स्ट्राइक पे। स्ट्राइक रेट 9.86 का स्ट्राइक रेट। हरजिंदर सिंह राणा शाह हम इन्हें राणा कह कर बुलाएंगे। और राणा की अच्छी बॉल दूसरी, तीसरी बॉल करवाने के लिए तैयार राणा साहब। साइम अयूब आज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साइम अयूब उनकी पहली बॉल बीट करते हुए जो उन्होंने फेस की है पहली बॉल, शानदार बीट। कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की मगर चूके। शानदार बॉलिंग राणा साहब की तरफ से। और तमाम आने वाले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तीसरे ओवर की चौथी बॉल डाल दी गई है और साइम अयूब फरहान ने स्लाइडली इसे सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें करंटली एक व्यूअर देख रहे हैं, काइंडली 20 के 3। और चाचा पाकिस्तानी मैदान जो यार उन्होंने लगान देना, उन्होंने लगान देखा मेरे को टोकन लेना, मुझे टोकन दे दो, इधर आगे टोकन लेना मेरे को। और एक शानदार बॉल जारी राणा साहब की जिसके ऊपर एक खूबसूरत छक्का फरहान की जानिब से। अपनी तीसरी बॉल पर एक बहुत खूबसूरत छक्का लगाते हुए कोलंबो का यह मैदान और बहुत खूबसूरत छक्का। और यार सैर तो हो रहा है कि नहीं?
तीसरे ओवर की 6वीं बॉल गाड़ी से टूट गया और इस ओवर में शानदार छक्का जिसने पाकिस्तानी फैंस को दिया तो तीसरे ओवर के कंप्लीट 30 रन 10 की आदत कमाल है वो कमाल है राणा साहब अपना ओवर में उनका साबित करते हैं 2 ओवर में 21 रन इंडिया के टॉप बॉलर्स मानते जाते हैं इस टूर्नामेंट में खाना टूटे नहीं है एशिया कप ग्रुप 1 से पाकिस्तान से इंडिया नेपाल पाकिस्तान और इंडिया टॉप क्वालिफायर टीम चौथे ओवर का खेल जारी पहली बॉल और एक शानदार सिंगल पाकिस्तान के विनिंग चांसेस 1% रखते हुए पाकिस्तान टीम शानदार एग्रेशन के मूड में उस दिन की हार का बदला लेने के स्टाइल इस टाइम हमें लाइव 2 बंदों ने ज्वाइन कर चुके हैं चौथे ओवर की पहली बॉल सिंगल चौथे ओवर की दूसरी बॉल खाली जाले आज की है एंड पाकिस्तान तीसरे ओवर की दूसरी बॉल खाली जा चुकी है शानदार बॉलिंग हंगर चीकर की जानिब से शानदार कोशिश की जा रही है शानदार बॉलिंग की जा रही है इंडियन बॉलर्स की जानिब से इनका पहला ओवर भी अच्छा गया था वाइड में 4 की वजह से रन रेट का थोड़ा सा हुआ है चौथे ओवर की चौथी बॉल डाली जा रही है और शानदार एग्रेशन नज़र आते हुए और पाकिस्तान के यहाँ शानदार शॉट 2 रन मिलेंगे इस बॉल पर बल्कि 2 नहीं शानदार 3 रन हो चुके हैं वेल प्ले और ये थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है जिसकी जान से पाकिस्तान को 1 रन और एक रन मेरी जान कीमती है आपको एग्रेशन मूड के साथ साथ थोड़ा सा देख कर खेलना पड़ेगा मिसफील्ड से ग्रेस करें और पाकिस्तान 3.4 ओवर में 34 रन कंप्लीट कर चुका है साइम अयूब की शानदार शॉट्स फरहान भी अच्छा खेल रहा है 7 बॉलों में 10 स्कोर कर चुका है फरहान और वेल प्ले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल मैच और 5वीं बॉल डाली जा रही है
और बीट करना ही मुनासिब समझा पाकिस्तान के साइम अयूब ने। कप्तान पाकिस्तान के साइम अयूब नौजवान यंगर प्लेयर हैं, पीएसएल में उभरा हुआ नाम सामने आया और बहुत शानदार तरीके से बॉल बीट। बहुत शानदार शॉट्स मारी हैं साइम अयूब ने और कमाल का खेले हैं दोनों प्लेयर। अब तक 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। चौथे ओवर की छठी बॉल डाली जा रही है, बॉल हवा में और देखना होगा ये क्या है। एंड खाली कुछ समझ नहीं क्या हुआ है। नो प्लस बस सिंगल, ये क्या हुआ है। बॉल बहुत ज़्यादा हवा में गई थी, पाकिस्तान के लिए एक आउट होने का चांस बन चुका था और ये नो बॉल हमेशा से ही काम खराब करती है। और ये इंडिया की जानिब से नो बॉल, बॉल हवा में थी और कैच भी हो चुके थे जिस पर 1 रन मिला और आउट से बचे साइम अयूब। साइम अयूब के पास एक चांस, एक बड़ी शॉट और एक बड़ी हिट लगाने का। OMG, बहुत ज़्यादा बुरे हालात इस टाइम। पाकिस्तान विकेट दे चुका था और एक बड़ी विकेट थी कप्तान की, साइम अयूब सबसे विकेट थे, लेकिन अब फ्री हिट शॉट है, देखते हैं क्या बनता है। और साइम अयूब लकी, साइम अयूब की शॉट देखनी होगी, साइम अयूब फ्री हिट का चांस कैसे लेते हैं। और फ्री हिट होने को लिए तैयार, बॉल करवा रहे हैं और बहुत शानदार बॉल खाली, कोई स्कोर नहीं फ्री हिट पर। और चौथे ओवर के इख्तिताम पर 36 रन विदाउट विकेट। साइम अयूब को यहाँ पर कुछ एग्रेशन मूड से स्कोर करना चाहिए था, लेकिन और साइम अयूब कुछ मज़ा नहीं आया जो इन्होंने किया अभी। इस तरह तो गेम ख़राब है, पहली बॉल पर आउट हो गए हैं, फ्री हिट का चांस मिला तो उसे मिस कर गया। साइम अयूब को थोड़ा सा एग्रेशन मोड में खेलना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के कैप्टन हैं और फाइनल है वर्ल्ड कप का। हज़ारों बल्कि लाखों लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। उसके बाद मैदान में भी कुछ लोग हैं, तो आपको अच्छा खेल प्रदर्शन करना चाहिए, अच्छा खेल करना चाहिए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो बेशक ए टीम हो, बी टीम हो, रीजनल टीम हो, प्लेइंग 11 हो, कौन सी भी टीम हो, आपको हमेशा से अच्छा खेलना चाहिए क्योंकि पूरी कौम की आपसे उम्मीदें होती हैं। बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कोई मसला नहीं अगर उन्होंने बीट हो गए हैं। अभी 4 ओवर का खेल हुआ है, 36 रन 0 विकेट और अभी एक स्पिनर को बुला लिया गया है। अभिषेक शर्मा खेलेंगे, अभी करवाएंगे बॉलिंग। इन्होंने अपने कैरियर में 43 मैच खेले और 23 विकेटें ली हैं। 4 के इकॉनमी रेट, स्ट्राइक रेट 46 का है। बट ये टर्निंग पिंच पर पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा कर सकते हैं। और करंटली व्यूअरशिप पाकिस्तान की 3 की जा रही है। एंड गुड पाकिस्तान की और 5 ओवर का और बॉलिंग इस टाइम साइम अयूब करेंगे बैटिंग और ये शानदार चौका आते हुए बहुत आला साइम अयूब। यही एग्रेशन की बात कर रहा था मैं लास्ट ओवर में, बहुत आला, यही आपका एग्रेशन हमें चाहिए, बहुत आला 4। यही एग्रेशन मूड चाहिए आपकी गेम का। 5वीं ओवर की दूसरी बॉल करवाई जा रही है और शानदार बॉल। स्पिनर हमेशा से ही इस टर्निंग पिचेस पर कामयाब रहे हैं, बट पाकिस्तान के लिए बहुत आला थे। 5 ओवर की तीसरी बॉल बहुत प्यारे तरीके से बिट की थी और
बहुत खूबसूरती सिंगल निकाली है फरहान साहब, साइम अयूब ने। फरहान स्ट्राइक पर। ये अच्छा है कि आप हर ओवर में एक आधी बाउंड्री मारते रहें ताकि आपका एक रिदम जारी रहे, बना रहे रिदम आपका। वो खूबसूरती सी सिंगल ली है साइम अयूब ने। बहुत प्यारी बॉल की थी, बहुत प्यारी, जिसके ऊपर फरहान ने शानदार सिंगल की। और ये ओवर की 5वीं बॉल डाली गई है जिसे बीट कर दिया गया है शानदार तरीके से। 5वीं ओवर की 6ठी बॉल डाली गई है, वो भी बहुत अच्छे से बीट। अभिषेक का ओवर शानदार ओवर, पहले बॉल में एक शॉट, उसके बाद बहुत शानदार बॉलिंग, 6 रन दिए इस ओवर में। ओवर कंप्लीट एंड गुड। Abhishek Sharma after the first ball went for a ball, 42 for no loss. मोबाइल नहीं है यार, मैं लगा है कसम, एक ही बहुत जरूरी है यार। शानदार। और एक मज़े की बात है, एवरेज डाउन आई जा रही है। क्या सीन है पाकिस्तानियों? इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करने में कामयाब होगा। और 8.40 की एवरेज से स्कोर जारी है, 42 स्कोर हो चुका है 5 ओवर के अख्ताम तक। 5 ओवर अभी खेल बाकी। एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करेगा। अभी कुछ हम बात कर लेते हैं जो कल घटिया हरकत की गई है इंडिया आईसीसी की जानिब से, जो प्रोमो जारी किया गया है उसमें पाकिस्तानियों से नफरत ठीक जाहिर हो रही थी, जिसमें एक भी झलक बाबर आजम की नहीं दिखाई दी। हालांकि बाबर आजम 2 साल से ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है और उनकी करोड़ों में फॉलोइंग है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी फैंस बरहम, जिसके ऊपर शोएब अख्तर का भी रिएक्शन है। मैच का देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा ओवर जा रहा है इस टाइम। 3 बॉलें बीट कर चुके हैं अभी तक, शानदार। पहली तीनों बॉलें शानदार और चौथी बॉल भी बीट, बहुत आला ओवर। पाकिस्तानी बैट्समैन इस टाइम और 5वीं बॉल भी खाली, शानदार ओवर, वेल। और ये स्पिनर के जादू है कि इन्होंने इतना अच्छा खिला दिया। 5वें ओवर की 6ठी बॉल पे बीट और मिडन ओवर, शानदार। तारीफ के काबिल इतने अच्छी जोड़ी को मिडन ओवर करने के लिए। 6वें ओवर के अख्ताम पर 42 स्कोर, शानदार मिडन ओवर, बहुत आला। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, शानदार प्लेइंग। यार अपना
यही एग्रेशन है इनका और यही कमाल है। ओए 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 लेवल, बहुत आला बॉलिंग डाली गई है। युवराज सिंह, जूनियर युवराज सिंह। और एक पहले युवराज सिंह से बहुत लेवल बैट्समैन इंडिया के, और एक ये युवराज सिंह है, बहुत अच्छा पहला ओवर डाला है। 6 ओवर 42 रन बगैर किसी विकेट के। पाकिस्तान के साइम मयूर फरहान के बाद यूसुफ, ताहिर, अकरम, हारिस, मुबशिर, मेहरान, वसीम, इकबाल, मुकीम, तमाम के तमाम नए प्लेयर हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर हैं जिन्होंने चंद एक मैचेस खेले हुए हैं, साइम अयूब और हारिस, जो कि इस टाइम इन सब में सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं। अभी तक शानदार खेल जारी। 22 बॉलों में 22 साइम अयूब के, 15 बॉलों में 11 फरहान के। अच्छा खेल पेश किया जा रहा है। सातवें ओवर की पहली बॉल, एक और बॉल बीट। शर्मा जी ओवर कर रहे हैं। पिछले ओवर में इन्होंने 6 रन खाए हैं और इस ओवर की पहली बॉल बीट। पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने मोमेंटम में वापस आना पड़ेगा, वरना मसला हो जाएगा काम के लिए। सातवें ओवर की दूसरी बॉल जारी और थैंक गॉड दूसरे पूरे 8 बॉलों के बाद एक सिंगल ले ली गई है। ये इनका टेम्पो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, जो फ्री हिट मिस किया पाकिस्तान ने, और एक आउट मिस किया इंडिया ने फ्री हिट होने की वजह से। लेकिन इंडिया अपने मोमेंटम में वापस आते हुए काइंडली जो भी पर्सन हमारे पास आए वो हमें लाजमी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत खूबसूरत शॉट और फील्ड किया अच्छे से। एक और बॉल बेट। सातवें ओवर की चौथी बॉल डाली जा रही है और वो भी खाली। स्पिनर्स को खेलना मुश्किल, पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है स्पिनर्स को खेलना। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। और एक और बॉल खाली। दूसरा ओवर लगातार 11 बॉलों में जस्ट 1 रन पाकिस्तान का। इंडियन टीम खुश, यंगेस्ट टीम है अभी। ओवर के अख्ताम पर सिंगल। 7 ओवर बिना किसी नुकसान के 44 रन कंप्लीट। लग गया 7 ओवर बिना किसी नुकसान के 44 रन। और शानदार स्पिनर्स की बॉलिंग, शानदार अटैक, बहुत आला बॉलिंग की है। पिछले 3 ओवर्स में जस्ट 3 रन दिए हैं। और एक और स्पिनर ने एक और शानदार बॉल। स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनते हुए, क्योंकि पिच काफ़ी टर्निंग है और पिच एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी बॉल फर्स्ट आपके लिए फ़ायदेमंद थी, जिसे इंडिया ने अवेल किया है। और एक शानदार शॉट करने की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं। आठवें ओवर की तीसरी बॉल जारी और एक और बॉल बीट। इंडियन प्लेयर्स इस टाइम फुल एग्रेशन मोड में पिछले 4 ओवर्स में पाकिस्तान को टोटली बीट कर चुके हैं। शॉट निकलने ही नहीं दे रहे। और ये पाकिस्तान की भी एक चाल हो सकती है कि वो सुकून से और सब्र तहम्मुल से खेलें और खेल के बाद अपने खेल को अपने उसमें बढ़ाएं और खेल कर रहें।
और अभी एक और सिंगल, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कुछ करेंगे। ओह गॉड, पाकिस्तान की जानिब से 4 ओवर के बाद एक चौका मार दिया गया है। शानदार, साइम अयूब फाइनली 2 ओवर की रुकने के बाद एक चौका मार दिया गया है। साइम अयूब शानदार 4। ठीक है, और एक शानदार 4, जिस 4 के बाद बहुत शानदार शानदार साइम अयूब एग्रेशन मोड बहुत आला। शॉट मारने की वो पहले से कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम रह रहे थे अभी तक, बट गुड। सातवें ओवर के बहुत शानदार बॉल, आठवें ओवर की 5वीं बॉल सिंगल रन। साइम अयूब ने यूएई में 63 बॉल पर 56 रन्स किए थे, जो कि शानदार बैटिंग जारी की थी। उसमें काफ़ी अच्छी शॉट्स खेली थी लेकिन स्ट्राइक रेट डाउन रहा है उनका। और कनेक्शन तो नहीं ना, आ गया। आठ ओवर कंप्लीट, 49 रन, स्ट्राइक रेट से 6 का। इंडिया ऑन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। 8 ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान बगैर किसी विकेट के 49 रन कंप्लीट। पाकिस्तान की जानिब से भी देखा जाए तो एक शानदार खेल है और इंडिया की जानिब से भी एक शानदार खेल किया जा रहा है। काफ़ी पिछले 3-4 ओवर से रोक लिया गया है बिल्कुल पाकिस्तानियों को, और लास्ट बॉल भी बहुत प्यार से बीट की उन्होंने। अभी 8वें ओवर की पहली बॉल बीट और दूसरी भी बीट। करंट व्यूवरशिप एक ही है, काइंडली अगर आप आएँ तो थोड़ी देर रुकें, एंजॉय करें, हमारे साथ मिलजुल कर कुछ अपनी बातें शेयर करें, कुछ हम बातचीत करें, कुछ एंजॉय करें। आठवें ओवर की तीसरी बॉल, एक और चौका शानदार तरीके से। पाकिस्तान 18, शानदार प्लेइंग। एक और बॉल जो है वो बीट होगी। नौ ओवर कंप्लीट, 53 रन बगैर किसी आउट के।
साइम अयूब 29 बॉलों पर 27, फरहान अली 26 बॉलों पर 17, दोनों प्लेयर्स क्रीज पर मौजूद। 50 की पार्टनरशिप कंप्लीट। स्ट्राइक रेट 5.89 की। इंडिया वॉन द टॉस एंड चोज टू बॉल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इमर्जिंग एशिया कप 2023 फाइनल मैच। एंड स्पिनर बॉल्स इस टाइम कामयाब है उनके। अभिषेक ने बहुत शानदार ओवर निकाले हैं। अभी तक 3 ओवर्स में जस्ट 12 रन दिए उन्होंने। और पाकिस्तान के जानिब से 9वें ओवर की दूसरी बॉल और एक और चौका मार दिया गया है। शानदार पाकिस्तान प्लेइंग 11। साइम अयूब इस टाइम डट कर खेलने वाले प्लेयर्स में शामिल होंगे। साइम अयूब की जानिब से एक और चौका। पाकिस्तान के कप्तान साइम अयूब। कुछ देर के लिए खेल को रोका गया है। दूसरी बॉल 9वें ओवर की सिंगल। फरहान स्ट्राइक पर। फरहान 26 बॉल 17। फरहान ट्राई करेंगे शॉट लगाने की और देखना होगा कि किस तरह कामयाब होते हैं। लव पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत शॉट साइम अयूब की जानिब से। और ओवर की तीसरी बॉल बॉल हवा में और एक और फॉर साइम अयूब की जानिब से बल्कि नहीं, फरहान की जानिब से एक और शॉट। बहुत शानदार चौका। बहुत ही शानदार शॉट और बहुत खूबसूरत चौका लगा दिया इस ओवर में। दूसरी बाउंड्री एक साइम अयूब की और एक फरहान की। शानदार, यही चाहिए आपके, यही एग्रेशन चाहिए आपका गेम के दौरान। और 60 रन कंप्लीट, 60 रन की पार्टनरशिप कंप्लीट। साइम अयूब कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए। और बहुत खूबसूरती से सिंगल। 9वें ओवर की चौथी बॉल बीट करते हुए। ग्रेशिंग सा खेल देखने का मज़ा ही अपना है। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कोई भी मैच हो देखने में बहुत। और एक और शॉट और ये शानदार 6 फरहान की जानिब से। फरहान की जानिब से शानदार छक्का। फरहान के अपनी जो 10 बॉलें बीट किया उन्हें लेवल करते हुए मैं यही कह रहा था कि देखना होगा कि वो किस तरह शॉट लगाते हैं। और बहुत खूबसूरत छक्का लगाया फरहान भाई ने। फरहान भाई ग्रेट शॉट। दूधिया जिनका 30 ओवर बहुत अच्छे बॉलर हैं वो इस टाइम मुंह देखते हुए पाकिस्तानी टीम का। 68 रन 9.5 ओवर्स में। बहुत शानदार शॉट इस ओवर में। 2 चौके और एक छक्का। बहुत खूबसूरत ओवर। और ओवर के इख्तिताम पर एक और सिंगल। 10 ओवर का खेल कंप्लीट। 69 रन। पाकिस्तान ए टीम वेल प्लेड। इंडियन इस टाइम प्रेशर में और पाकिस्तान के विनिंग चांसेस बढ़ते हुए 56%। और बहुत आला शॉट्स खेली जा रही हैं, शानदार। 10 ओवर का खेल कंप्लीट। खिलाड़ी बाहर खुलेंगे। अभी बाउंड्रीज मारना थोड़ा मुश्किल होगा, सिंगल डबल आसान होगा क्योंकि खिलाड़ी खोले जा रहे हैं। पावर प्ले ख़त्म हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत छक्के का ये नज़ारा दोबारा से देखने को मिल रहा है। स्वीप किया है और शानदार छक्का रसीद। एंड करंट व्यूअर 1
शानदार शानदार। ग्यारहवीं ओवर की पहली बॉल, 1 रन के साथ खेल जारी रखा जाएगा। पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश करते हुए लास्ट गेम में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, 8 विकेटों से हारे हैं। बट इस मैच में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कम बैक करेगा और कोशिश करेगा कि जीत उनका मुकद्दर हो। ओवर की तीसरी बॉल, एक और सिंगल। फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप बहुत खूबसूरत, 64 बॉल्स में 69 रन्स। शहीबजादा फरहान और साइम आयूब। ओवर की पांचवी बॉल, एक और बॉल बैट। ओवर शानदार करवा रहे हैं शर्मा जी। इंडिया में शर्मा नाम के प्लेयर काफ़ी अच्छा खेल प्रदर्शन करने में हमें हमेशा नज़र आए। इस टाइम लाइव यूट्यूब पर जो लाइव मैचेस देखे जा रहे हैं उनकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा। और ये अभी किसी भाई की कॉल आ चुकी है। तस्लीम कासम इधर है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ग्रेटेस्ट रिवैलिरी 2 सितंबर सैटरडे लाइव फ्रॉम कांदा के मुकाम से। 11 ओवर का खेल कंप्लीट है। पाकिस्तान 71 रन बगैर किसी विकेट के पाकिस्तान जिंदाबाद। शानदार प्ले इस टाइम जारी। पाकिस्तान 71 रन बगैर किसी विकेट के 11 ओवर का खेल कंप्लीट। और 11वें ओवर के बाद पहली बॉल डालने जा रहे हैं अभिषेक। 4 ओवर में 14 रन दिए अभिषेक ने। शानदार बॉल, पहली बॉल में 2 रन, बहुत आला। युवराज सिंह को 3 ओवर में 21 रन दिए युवराज सिंह ने अभी तक, और उन्हें पहली बॉल में 2 रन का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम एग्रेशन मोड में और अच्छा खेल पेश करते हुए। और 11वें ओवर की दूसरी बॉल, और स्वीप कर दिया सिंगल के लिए। युवराज सिंह अच्छे बॉलर साबित होंगे इंडिया के लिए, क्योंकि स्कोर ज़्यादा खा रहे हैं। तो अगर ये साबित हुए तो अच्छा होगा हमारे लिए। अपने को स्ट्रीमिंग दे रहे 2 दिन।
और पाकिस्तान की जानिब से इंडिया की जानिब से तीसरी बॉल ओवर की। पाकिस्तान ने शानदार तरीके से बॉल बीट करते हुए कोशिश की कि शानदार शॉट मारे बैक की तरफ, मगर नाकाम रहे। और अभी मुझे लग रहा है कि व्यूवर्स आएंगे और पाकिस्तान की जानिब से एक और शॉट इंडिया के खिलाड़ी ने बेहतरीन रोका। ओवर की 5वीं बॉल, कोई रन नहीं बगैर किसी रन के। तस्लीम, इसकी आवाज़ खोलना। तस्लीमा में हिंदी आवाज़ खोलना। Slightly slow through there. The last ball coming up. What's he going to do here? I'm referring to the batter, not the bowler. Doesn't find the gap. Dot ball to end the over. Pakistan is 74 without loss after 12 overs. What a start this by Pakistani. Oh, beautifully struck. Inside out, and that will be 4 more. There is no stopping Sam Ayub today. He's looking like a man on a mission. Raced away to 40. As I welcome Shamim Chaudhry in the commentary box. Good afternoon, Raman, and what a delightful shot that is. Just opening the face over the top. That is an excellently manufactured shot. Much to the delight of the smattering of Pakistani supporters that have come in here. Just the way he's batting today, Sam Ayub, and the way he's changed gears today. Started off in aggressive fashion, made the fast bowlers rethink about the lines they'd be bowling, and against the spinners as well, he's changed the way he's approaching his game now. And I think the spinners will just have to be telling themselves they've got to replicate what they did against Bangladesh when the pace bowlers came in for a bit of beating early on. I like the way Abhishek Sharma is bowling today. He's read the surface. He's bowling a little slower through the air. At times he's got this tendency to push the ball through. This time around he's bowling a little slower. Oh, down the track. Taken on the full. And it's gone for 4. Arshit Rana is generally a good fielder, but he could have done better here. There was the effort there. Commitment was shown, but it's just evading him at the last moment. But the manner in which the shot was played, look at him shimmy down the wicket, makes into a full toss play. It's reasonably in the V. Two fielders converging. Arshit Rana over the top. But yeah, I'm sure he could have done a little better. He's taken a couple of stunning catches as Arshit Rana in this edition of the tournament. Despite being a fast bowler, he's a great athlete. He's very good in the outfield as well, and that's why I think he'll be a little disappointed that he wasn't able to cut the 4 off. Indeed, the bowler might feel a little aggrieved. You've got to give that support, the commitment. The commitment was not lacking. It's just the finishing, just diving over the ball. I'm sure he wants to finish that. Forget it and just wait for the next one if it comes down his way. That is lifted into the deep quite comfortably. Couple of runs taken quite easily. This is a great start. 13 gone, 86 without loss.
Remember, Pakistan are the reigning champions of the Men's Emerging Asia Cup. Having won the title in 2019, they're up against the winners of the inaugural edition back in 2013. India had won the title. They'd beaten Pakistan in the final 10 years ago. It's a matchup of these arch rivals once again in 2023. It's good to see there's a turnout of spectators, and I'm sure the numbers will swell as the evening progresses. Down the ground, and that's struck firmly for four. Beautiful shot this from Farhan. Oh, what lovely movement of the feet of team seen on two occasions here in the previous over. Once again gets to that pitch and the flurry of the bat. Look at that. Bat speed, perfect contact, straight as an arrow. No possibility for any of the fielders try and cut that off. Looking very menacing, very aggressive, the two openers here for Pakistan. The intent has been positive. And what a start now. Now Dhruv Jurel's just gone down and had a word with the bowler. And I wonder if it's just mind games or is it something that he's actually spotted that he's conveyed to the bowler. Well, if he sees a batter expose his intention a little too early, that is where you have the chance to just pull the ball back or maybe pitch it further up. Saib Zada Farhan got a 63 against UAE in the opening match. Then against India as well, got 35 in that context. An aggressive 35 in the context of that match. He's now on 39 of 44. Oh, brilliantly struck again. There's just that sweet sound of the willow whenever Saim Ayub's been playing his shots today. And just the manner in which he's gone at his run shows that he's oozing with confidence, hardly given an opportunity for any kind of expectation from the bowling unit. It has been tough work. Current run rate 6.73 will tell you that domination is up for the moment. I get a feeling here that Yash Dhol would be thinking of handing the ball to Manav Sutar as well. So Abhishek Sharma's bowled well in his 5 overs. But there will be a case to get Manav Sutar on soon. 14 gone, 92 without loss. What's happened in this final so far? Pakistan here, remember, put into bat. Saim Ayub showing great intent. Starting off with a 6-over fine leg and then a boundary through the covers. And then from the other end, Farhan said, I'm not going to be one to be left behind. No, he wasn't. He was joining the ball now. It's just a close call there. For once, the ball beat in the bat, but there's so many shots in the V and also that slug sweep. Both sides of the wicket, the left-hander getting a slug sweep, the right-hander getting a slug sweep, really hammering the ball to all parts of the ground. It's going to be extreme pressure, Raman, on the bowlers. And as expected, as I was saying in the previous over, Yash Dhol would be looking to get Manav Sutar on for 2 reasons. Look at that economy rate for Manav Sutar in this series. He's gone at under 3.5 runs per over. The other part, he's picked up 9 wickets. He's taking wickets consistently through the tournament. The best of 3 for 32 for him. And he's one of your conventional left-arm spinners. He's a little quicker in his run-up and his approach to the bowling crease. But he does get that pivot, does get the hip thrust going at the time of release, can extract a lot of perches off the surface. Can Manav Sutar. Straight away. Sometimes you feel that the left-arm orthodox went into a left-handed batter. Just the missed chances that India had. Remember, that was off a no ball. The catch was taken by Dhruv Jurel. And then this. Probably was a bit of glove. And a field for leg before here with live pictures. Single. No signal from the umpire, which means there was probably bat or glove on ball.
There have been a bit of that, very close proximity to the bat and the pad. Also, it makes it quite difficult for the umpires to really gauge. You have to keep an eagle eye on proceedings. Slip being brought in now for the right-hander. That's a good plan. It's a good plan to get the first slip fielder in for the right-handed Farhan. Oh, the edge. That's what I'm saying, that Manav Sutar, unlike Abhishek Sharma, will extract a little more turn off this surface. He's got that ability because of that pivot that he's got. And also the ball's getting a little older, getting more grip and pushes off the wicket. But does he have that arm ball? That is what I'd like to see him do. Mix it up with the conventional left arm orthodox swing. Getting the drift, getting the turn, getting the edge of the bat. Then surprise the batter with the one that comes in with the arm. A change in the field for the right-hander. They've dropped a fielder back at sweeper cover. Down the track. Long on is there, but he won't get to the ball. Convincingly struck by Farhan, and that 6 brings up the 100 for Pakistan. What a terrific way to get to the 100. Belligerent mood at the moment, and once again, that he's got his dancing shoes on. Both of them have. Look at this. Gets to the point of contact so comfortably. Once you're moving, it's not the easiest thing to keep your balance. Then a flourish of the bat and the maximum. Terrific. The batting prowess shown here by Farhan. 100-run stand for the opening wicket for Pakistan in the final. Just tells you they've come out with a lot of purpose here. Third 6 by Farhan in this innings, and look at the 50 split. The first 50 coming off 51, the second one just taking 37 balls. He's stepping on the gas, feeling more comfortable, trusting the wicket. All combined together for this partnership to flourish. Another single. They've got 11 off that first over from Manav Sutar. 15 gone, 103 without loss. लाइव चला रहे हैं यार, कोई देख ही नहीं रहा, फायदा कोई नहीं हो रहा। 15 5 bowlers used so far by the India A captain Yash Dole. Look at the economy rate of Harshit Rana and even Manav Sutar in that first over, conceding 11. But that wouldn't deter the captain from continuing with Manav Sutar, but he's going to bring about another bowling change. And Harshit Rana is coming back for another spell here. His first 2 overs were expensive, went for 21, but now he's got the option of having 4 boundary riders. Remember, we're in the middle of phase from over number 11 to over number 40. You're allowed 4 boundary riders outside the 30-yard circle. Yeah, he'll be hoping that those boundary riders can just stem the flow of runs, but what he'll have to be careful about Harshit Rana is not give any width, because the track is playing so comfortably and the batters have really got their rhythm going very comfortably. It's going to be very tight, going to have to be very tight. Beautifully struck, and what a way to bring up his half-century. Saim Ayub is taking on the bowling attack from India. It's been a race between the 2 batters, and who gets to that milestone. 650s in List A matches. Saim Ayub, look at the way he struck that. We've seen so many of those balls in the V, and this is one of the straighter ones. The full face of the bat just past the umpire, who had to take evasive action, looking rather ominous. And welcoming back for his second spell, Harshit Rana will be a little worried. They'll get the single. Saim Ayub got a half-century against the UAE A side as well. He's got a 56 of 63 deliveries in that match. He's got a handy half-century here, and this really is setting the platform for Pakistan A to get a big score on the board in the final. I think both captains wanted to bowl first. That's what we heard on the toss. Maybe ruining the fact at the moment
That's the breakup. 12 singles maximum and 7 boundaries. I just like the way he's adjusted his innings. Started off with those pick-up shots over deep backward square leg. And look at how he's reacted when he's got to the half century. He said, okay, it's all right. Thank you for the applause, but my job isn't over yet. And that just tells you he's got a bigger purpose at the back of his mind. They're looking for 2 here. They will get it. Remember, these are long boundaries, 70 meters. And another 50. This time it's Saibzada Farhan who brings up his half century with that brace. A little more sedate, if you can call it that, in comparison with Saim Ayub. But they've really been going after the bowling in the manner in which they've interspersed the big shots with the deft touches, rotation of the strike. It's been sensible cricket. And you can see from the demeanor, you're mentioning the non-celebration of the 50. You can see that they feel it's a job half done. I remember there was that leading edge for Sam Ayub that was caught by the wicket keeper Dhruv Jurel, but it was a no ball bowled by Rajvardhan Hangargekar. And how expensive is that no ball going to turn out to be? But this was that shot that brought up the 50 for Farhan. Yeah, called his partner immediately for the second run, turned around. Generous applause from his teammates, and they can afford to smile with this very spirited, quite emphatic start here by Pakistan A in this final. Nelson on the board, and worries compounding for Yash Dole, the India A captain. He's tried a few things here, but it hasn't worked out yet for India A. Another single. And that's what I meant by Saim Ayub's batting today. Just the way he's adjusted the pace at which he's gone about things, adjusted his stroke play as we've seen bowling changes being rung in. Just the way he works out that last ball. It was pretty close to him. There's a little cramp for space. All he did is wait for it to come, open the face, and use the angle. That is excellent. Skill set shown. He's got the powerful shots going. He's got those deft touches, soft hands. Nice combination. Reminded of Saeed Anwar, and especially his record against India was phenomenal. Change of pace by Harshit Rana. Single will result. They've got a run off every ball in that over. 16 gone, 113 without loss. And that, of course, also will be time for a drinks break.
100-run partnership for the opening wicket, and both the batsmen getting half centuries, 52 apiece for Saibzada Farhan and Saim Ayub. Let's take a look at what happened. They were put into bat for Pakistan, and that first over going for 13 from Harshit Rana. And then from the other end, Saibzada Farhan also opened up, showed us a wide array of shots. Seems to be enjoying themselves, but early on there were some going the bowler's way in terms of beating the bat. The slog sweeps were operated to perfection, both sides of the wicket, with the left-right combination really getting on with the proceedings. And the inside-out shot, not the easiest thing to do. And when they're walking down the wicket to meet the ball, looked so very balanced at point of impact. That was very noticeable. Lots of shots down the ground, in the V, and some straight as an arrow. Width offered, they're going to be slapped away through the covers. That's how both the openers brought up their half centuries, but there's a catch that's been put down, a catch taken off a no ball, and that's costing India A today. Wicketless, all 5 bowlers who've been pressed into service, and Harshit Rana and Manav Sutar, in that one over that Manav Sutar's bowled, was a tad expensive. They've gone it over 10 and over. They say cricket is a great leveler. The last time these two met, Saim Ayub couldn't even get the runs on the board. Didn't bother to score a 35 by Saibzada Farhan in that match when Pakistan only mustered 205 and were completely outplayed. But look at what is happening in the final here. They've got the leading wicket taker coming on to bowl now. Those are his list A career numbers, 15 wickets, playing his 12th match, Nishant Sindhu. But he got a 5-4 in that semi-final against Bangladesh. He's got 10 wickets to his name in this edition of the tournament as Nishant Sindhu. He's been the go-to bowler for the captain. Whenever he's required wickets, he's turned to Nishant Sindhu. A 5er in that semi-final, had a 4-wicket haul against Nepal as well. And a very good economy rate, going at under 3.5 runs per over. The India A team will be hoping that Nishant Sindhu can replicate what he did, as mentioned, against the Bangladesh A team in the semis when Bangladesh batters were really dictating terms. Lost the first wicket at 70. As we see another one over the top and fielded on the bounce. Those are the 5 wickets that he took against Bangladesh. What a catch by Nikin Jose. I think, you look at the 5-wicket haul and you say Nishant Sindhu got 5 wickets, but you've got to say that Nikin Jose contributed with some great catches. This was Rayan Parag anticipating the reverse. Yash Cole taking a couple catches as well. What a spell. A match winning spell from Nishant Sindhu in the semi-final against Bangladesh. Can he turn things around for India A here? Need a U-turn, basically, and a couple of wickets, you never know. The cat might be amongst the pigeons, a little bit of a worry for the batters to regroup and restart. At the moment, prime task, break this partnership. That's where I feel that when you're in a situation like this, the fielders have to back the bowler up. You've got to take those catches, cut out the boundaries, restrict the batsman to being on strike, get the dot balls going, and then latch on to the catch if it comes around. The umpire just asking for something here. The helmet, I think. It might have hit the helmet, so the concussion protocol will be gone through, and that's a good thing to do. Umpire is very alert to the fact whenever the ball hits the helmet, any part of it, maybe even the visor on occasions. Yes, and that's why the physios come out straight away. There will be that concussion check that will be done. It's just come off the forearm and hit him square on the visor. And which is why I think it's great the way the protective equipment has evolved for batters over a period of time. The 30th of August, remember, the senior teams will be in action. Asia Cup 2023 gets underway. Group A features Pakistan, India and Nepal.
Group B's got Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan. Looks like a tough Group B as well. And top 2 teams from each group will qualify for the Super Fours. Back to match action. You're talking about the rotation of the strike, and that has also been so very significant in this compilation of the innings. 17 done, 115 without loss. Well, they seem to be matching each other in terms of the score that they've got on the scoreboard at the moment, Saim Ayub and Farhan. But a change of ends now for Manav Sutar. He's coming on to bowl. His second over. Down the ground. Hit high, hit handsome, and hit for 6. Wow, this is belligerence. The manner in which he's changed hands, it's not having a look at him, he's ready to take him on. And those dancing shoes on again. This has been so spectacular, so noticeable is the way they've gone to the pitch of the ball and the full flourish of the bat. Really goes through with the shot, doesn't give the chance to the fielders even conceive of getting it within the boundary line. How close is that? How close is that? This is the wicket, the breakthrough that India A were looking for. It's finally come about. Manav Sutar strikes, and Saim Ayub will have to go. He's looking so good, shake of the head as he walks off, just trying to make room for himself, trying to cut that ball, and on the second grab, he's taken it, much to the relief of the batter. This cramped for space as he tried to cut just the face of the bat, and it was elation. That was the strike they've been wanting so far, and India just managed to get that crucial first wicket, that of Saim Ayub, gone for 59, and they're now 121 for 1. Manav Sutar picks up the first wicket to fall in this final, and Yusuf walks out at number 3 for Pakistan A after a mammoth opening wicket partnership of 121. Omar bin Yusuf over 1300 runs, averaging close to 32 in his List A career. In the semi-final against Sri Lanka A, Omar Yusuf got 88 of just 79 balls. So he's coming into this final on the back of some runs under his belt. It's always a new day, it's always a new innings. This is the wicket. Look at him, it just came back to him, straightened ever so slightly, was cramped for space. And just managed to get a better back to that. He has to be circumspect, the new batter in. Despite what he has done in the recent past, got to just give that bit of support that's needed now. Build up another partnership. Be careful, the bowlers will have the tails up. Manav Sutar's wicket takes his tally to 10. And take a look at this. The initial appeal was for leg before, but look at the reaction of Dhruv Jurel. Just flicking the ball up from the left hand and taking the catch, which proved to be so important. Because Saim Ayub has been given out caught behind, not leg before, so that catch was so very important. 18 gone, 121 for 1.
Bowling यार नेश After 18 overs, 121 for 1, the first delivery of the 19th over, going for a single. And India getting the all-important breakthrough. Saeem Ayub is man to go. He's batted so well. Got Pakistan after a flying start. चल चल नेश Been dismissed. Nishant Sidhu at the moment carrying on from the media box end. And Omar bin Yusuf is here because the last man out was Saeem Ayub. And the wicket came after he has hit a six. So very, very important wicket for India. If it was not caught, it would have been a straightforward LBW. So totally beaten up by the bowler Manav Sutar. bowling यार It was nicely bowled, wasn't it? Coming round the wicket, left arm round the wicket, bowling, turning back in. निशान Manav Sutar right throughout this Imagine Asia Cup has been the go-to bowler for India. Smashed it towards cow point. Two is the call. And comes back to second run. This is good running by the Pakistani batters. बढ़िया नेश And Sahbzada Farhan लगे रे भाई continuing well. And that's चलो यहीं the रोकेंगे six यहीं from रोकेंगे Saeem Ayub. Excellent use of the feet. And the very next ball, the bowler gets the revenge. ठीक है bowling It's very important that one of these batters carries on. At the moment, looks like Sahbzada Farhan is the one who's looking good to carry on and get a big one. And Omar bin Yusuf, fresh from that half century against Sri Lanka in that semi-final, was a match-winning knock. It's important that he also carries on and gets a big one. Absolutely. He's someone who loves pressure. After 19, Pakistan A 127 for 1. The sixth ball has been used so far by India, and only successful bowler for the moment is Manav Sutar with the wicket of Saeem Ayub, who scored a magnificent half century. And to continue from the far end, nicely played, beating the short third man fielder, and the outfield is so fast, and it goes for a boundary. Playing with the field, Umair bin Yusuf. Cha-cha cricket enjoying. Slip was taken out in this over. For Manav Sutar, played it really late, let the ball come to him, opened the face of the bat. Delicate late cut for 4 runs. Almost played near to the wicketkeeper's glove through Jurels. That's how well Omar bin Yusuf has been batting. Confident man. It's not all about hammer and tongue. And this Manav Sutar in the last game, Manav Sutar bowled really well to pick up 3 wickets. And he was the go-to man right throughout this tournament for India. And he uses the arm ball really well, can spin the ball pretty well as well, and his lines have been pretty straight. Keeps the LBW option always there. Able to change the pace of the ball as well. Excellent rotation on the ball. And always in the contest. That's so important for a bowler. That's why you see him at the top of the highest wicket takers. Second position. Highest 2 wicket takers are bowling in tandem for India. And skipper Yashtul will be wanting these 2 spinners to continue their good work and get the breakthroughs, but the India is looking desperately.
at the moment having a square break, and today Saim Ayub, the only wicket which fell, was taken by Manav Sutar. And again that LBW, those straight lines I'm talking about, good length, but always attacking the stumps. That's so important for a spinner, especially on a sluggish pitch. Always in the contest. He was hit for a 6, but he didn't back out. Came back stronger. It's attacking angle coming round the wicket to the left-hander. Probably the two batters are feeling the heat in the middle. It's been pretty hot in the last couple of months in Sri Lanka, especially in Colombo. And the Pakistani batters definitely feeling the heat, taking a small break at the moment. These were the 3 wickets for Manav Sutar against Pakistan. Hasibullah there missed out on today's game, and this was Mohammad Haris, the captain. So 3 important wickets in the last game. The game plan going forward for Pakistan, I'm pretty sure that one of these batters to carry on and get the middle order players like Mohammad Haris and the rest to play those cameos, to put the Indian spinners under pressure. Plenty of spinners when it comes to India. It's just about whom to use, who against which bowler, which batter is going to be important. Dimensions is all around 70 meters. There's no short hit, unlike the other grounds using a middle pitch at the R. Premdas Stadium. At the moment, slip in place. It's a way to go forward for India. They need wickets to cut down the run rate. Nicely bowled, wicket to wicket. And as you said, both highest wicket takers are bowling in tandem. So that's why Pakistan needs to be intelligent. If they do not lose wickets in this phase, then they have the upper hand. Probably pay them, both these bowlers off. 10 overs, maybe 45 runs, 50 runs. May not give them because that be the game plan going forward to Pakistan, Shaheens? I definitely think that would be really good for Pakistan, because we have seen there's not enough anything for the fast bowlers. If you let the best spinners keep quiet, then you definitely have an upper hand. Mabin Yusuf trying to use the feet, but Manav Sutar has been equal to the task, bowled really well. The lengths have been really good. Down the leg side. Help on its way and beats the field at deep square leg. That's a bad delivery. Praising the bowler and firing it down the leg side for a baby. And Umair bin Yusuf almost asked the bowler to bowl that length because he has been using the feet on every delivery. This time stayed in the crease, created that length for himself. The line a little bit on the leg side. Very well executed sweep shot. Both these teams, especially Pakistan, played the sweep shot really well. This is good batting. A boundary followed by a single. Intelligent. 20 overs gone, 136 for 1. Plenty of experience for Pakistan players when it comes to list A matches. Take a look at those numbers. And this is where the experience also counts, especially in crunch games such as a final. And that too, the greatest rivalry, India versus Pakistan. Absolutely, and not only the list A, they have got a lot of experience in list A. Some of these players, around 7 to 8 players, have represented Pakistan at international level as well. And HBL PSL, that has been a huge factor. Saim Ayub. And that's a big shot once again. Sahibzada Farhan. He's taking on the Indian bowlers. That's a 6-6er in this innings, and this one is more like a slap. Clears the front foot.
That would have cleared the boundary in any grounds in the world. Massive. Easily would have carried close to 90 meters. And Pakistani spectators at the Arvind Stadium are elated. What a stroke, what a statement by the Pakistan openers. After being put into bat, just on the experience, Sana, just want to give some numbers to you. Pakistan, the playing 11, they got 374 games in between them, whereas the Indian lineup, the playing 11 has only 176. So the huge difference when it comes to experience. And that can be a difference. Shahzada Farhan with 54 List A games. And that can be the difference between soaking up the pressure in the final, in a big tournament. Absolutely, I think soaking the pressure and being calm in the middle under pressure is very important. For the moment, Pakistan are doing really well and the dressing room is pretty calm. The job is not yet done. It's an unbeaten Indian A team. It's a solid team. Bats deep down. They've got some good players in that lineup. It's important to stay in the competition as far as possible. And we saw, again, even against Sri Lanka, they had a great fight. Even Pakistan scored 322. So this match is going to be a good one. Dot ball to finish the over. 146 for 1 after 21. When it comes to experience, only 2 players of the Indian A team have played more than 20 games. Riyan Parag and Abhishek Sharma, the experienced campaigners. This is the learning curve for all these youngsters. I reckon this man on screen has led the team really well. Definitely a future captain in my own eyes. Been quite calm under pressure. And the thing is, will score a lot of runs, unbeaten team, but when it matters the most, Indians at the moment will be worried with the start. This is a slip in the middle. That's unlucky. How unlucky is that? Just spoke of the captain. He brings the breakthrough for India A. That is definitely very unlucky. Sahibzada Farhan was looking so good. He slipped in between. He really wanted that run. Umair bin Yusuf saying no in time, but it was Sahibzada Farhan who went down very quickly. When he turned, he slipped. And that was the undoing of him. It's the captain, Yashdul. Unfortunate. He batted so well. Pretty lucky there, India, to get that wicket. Farhan, after a magnificent 65 of 62, is run out. Pakistan A, 146 for 2. Pakistan lost their second wicket through a run out. Number 4 batter Tayyib Tahir is in decent form. Just got a 26 against Sri Lanka A in that semi-final, but he can hit the ball. Playing his 53rd game, average of 43 almost. Definitely decent numbers. At the moment, India A fighting back. This can be a big moment in this match. Sahibzada Farhan was looking so good, but it was Yashdul, the captain of India A, with a very good throw, good pickup. That's the moment we are talking about.
Sahibzada Farhan wanting that single, played it with soft hands, but Umair bin Yusuf said no and he slipped. No time to go back. And a very good pickup, easy pickup and quick release from the captain. In all honesty, there was no run, in my own opinion. Umar bin Yusuf had the non-striker in sending the batsman back. Unfortunately, the slip was the difference. Yashdul, very good fielder. And a short extra cover against the left-arm spinner. In the right-hander is batting usually. Your best fielder fields that short extra cover, and that's Yashdul. And you don't take a chance with those fielders. Unfortunately for Pakistan, they took that chance and paid the price. And he may have taken that single with Saim Ayub when they were set. When a new batter comes, then you have to adjust accordingly. It's a very good over, just a single and a wicket. Threw a run out in that over. 22 to gone, 147 for 2. That's a man on screen who took the run out in the last over. Seem to continue this time. Shot and ask it to be hit and put it in way. The classy way. Brings up the 150 for Pakistani. And that's the shot of someone in form. Just faced 6 deliveries. Excellent weight transfer. A lot of power behind that shot. Dispatched the bad ball. He has been so good against the spinners. Doesn't miss out on those. Slowness of the pitch is quite evident in that delivery. It wasn't that short, but he just set up. That's much better. Nice loop, nice guile. It just goes to show, in this pitch, you'd rather be fuller and getting hit straighter than getting his cross better. I don't think that's the way forward for any of the bowlers. Absolutely can't agree with you more. Because he can get some extra time when the ball is short. When the ball is because gripping a little bit in the pitch. Very good soft hand singles. These kind of pitches, when the batters are playing for the turn, the one which goes with the arm is the danger ball. Sandu, very close call here. Direct this time it misses the fine leg fielder. In the end, not much damage done. 3 runs coming back and going for the 4th. There's a comedy of errors in the middle and gifting away 3 extra runs for Pakistani. Good aggressive running. Even after the run out of Sahibzada Farhan, you have to give credit to the Pakistani batters. Aggressive running, soft hands, taking on the fielder. A wild throw. And 4 extra runs. How often do you see 4 runs being run across by the batsman, especially in Asia? You don't get bigger boundaries, unlike playing in MCG and all these big grounds where one side is massive. You get the 3s, you get the 4s, you got to get the relay throws in. But this occasion, thanks to overthrow for Pakistani, they managed to grant 4 runs towards the call. And comes back pretty easily. This is very good batting by these 2 batters. They're both new to the pitch, so that's why they can do that. Modern day cricket, the fitness levels are so good. Even if you are on your 50s and 60s, we see players doing that more than often. Expensive over for India. 11 runs from that over. 158 for 2 after 23.
These are the list A games for the Indian team. 4 players, single digits. Dhruv Jurel, Manav Sutar, the left-arm spinner, the off spinner, Yuvraj Singh Dodia, and the big pick, Rana. This goes to show the inexperience of these players. And it's a great opportunity playing in this kind of a tournament, showing the entire world what they're capable of. Only 2 players have played more than 40, exactly 43. That's Riyan Parag and Abhishek Sharma. This may be the difference among the 2 sides. Yes, definitely experience plays a huge role. But Manav Sutar, how good he has been with just 5 list A games, and he has had the most impact. Missed the field at short extra cover. Coming back for the second run pretty easily. This is good batting. Just on the Indian A team's average age, all the players, I think it's the only team in this ACC Emerging Asia Cup is to have players between 19 to 22. So the way forward for India is quite clear by Ajit Agarkar, the new chairman of selectors, is to give plenty of chances for the players who have done well domestically in IPL, in a tournament like this where you play against top quality opposition like Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan. So experience what these players carries forward can be immense for their growth in the future. Absolutely. That's the balance you have to create, whether you are looking short term, long term. Every board they will have their priorities in the way they go about things. But yes, it's so important to have both these goals and work on them, the short terms and the long term. The quality of these Indian players is so good. At even 19 to 22 age gap, the way they've been performing and showing their talent and showing their skills in the middle is absolutely scary when you think of the army of players what India possesses in all formats. Short ball, asking to beat it and clears the boundary. 1 bounce. It's not so good bowling by Manav Sutar, the left arm spinner. 5 overs for 35 is quite expensive. 24 gone, Pakistan A, 166 for 2. Trying to stitch together another partnership for the 3rd wicket. This partnership worth 20 runs at the moment. Cracked away for 4 off the last ball of the previous over. Short and was asking to be put away. And Tahir doing it quite comfortably. Let's start off a fresh over now as I welcome W.V. Raman here in the commentary box. Thank you, Raman. It's been a case of Pakistan dominating the proceedings here at the Prem Madasa, and the young India A side being put to the test here. A lot of learnings will come for sure. They'll have to go through this phase. They've got to hang in there, go through this phase, fight it out, and then gradually crawl their way back into this game here. It's well run. Good single taken. And I'll come back to that point, WV, because Parvez and Sanam Mir, when they were on the commentary stint, they were talking about the limited list A experience for this India A side. But you look at the squad members. What does this squad comprise of? And you look at players who've played for India under-19s in the World Cup back in 2020 and then again in 2022, the young players who played there. That's the reason why this squad comprises the players between that 19 to 22 age bracket. And that's why it's a progressive path that's been given to those youngsters, WV. They've done the right thing here. They're picking players who are just around 22 years of age, max. And that's the best way to do it. And that's why, don't just go by the experience. This is a learning curve for a lot of these boys.
to move up the experience ladder. Also bear in mind these guys are quite experienced even though they are around 22 years of age because they start playing representative cricket from the age of 15, and in India you get to play 4-day games when you're playing under 16, so there's a lot of experience in a way, but yet this is the best way to go forward. Not pick guys who have been playing for a long time and who have played quite a lot of cricket, just the right age group. That's exactly what it's all about, emerging team. End of the over at the halfway mark, Pakistan 170 for 2. Yash Dole, he's had to marshal his resources today. He's had to bring in the bowling changes. 6 bowlers used thus far. Rayan Parag hasn't been brought in to bowl just yet, but I think we may just see him come on. But just finishing off that point and talked about the experience. Look at some of these players. Sai Sudarshan, what a fantastic IPL he had in 2023. Abhishek Sharma got a couple of half centuries in that IPL. And when you're playing the IPL, you're rubbing shoulders with some of the international stars from other countries and then matching your skill set with them. Yash Dole as well. Harshit Rana played, as did Rajvardhan Hangarkekar. So there are lots of young players in that squad who did well in the IPL, and they've been growing in experience. But the 7th bowler now being pressed into the attack by Yash Dole. Economy rate of 4.94 for Rayan Parag. He's primarily a batter who can bowl some useful off spin. Of course, he does try to bowl everything. On and off, he bowls leggies and then he bowls the off spin with sidearm. Cheeky stuff this from Tahir. He got some runs, did Tahir. A half century in the opening game. Didn't get to play all the matches back to back. Just made up his mind as soon as the ball was being bowled where he wanted to play this. Right ploy this. As soon as there was a change in bowling, he's decided to call the shots. They're looking to keep the domination going, and that's exactly the right way to go about it. When they've been provided a good start by the openers, and they're sitting pretty here at the halfway mark. They're 170, and then they got to keep that pressure up by being positive, by being dominating. 27 for this partnership. Tahir is 29 years old, remember, so he's no spring chicken, someone who's cutting his teeth for the first time. He's been around on the domestic circuit. And this Pakistan A side does have a smattering of players who've played for the national team as well, so there is that experience that they have. Both these batters have got runs in the previous game. It is confident as well. Nothing like having runs under your belt for a batter, and both these batters have got runs in the semi-final. While none of the India A players have yet got the senior team call up yet or been capped. And that's why I talked about the step. Oh, this could be close. They take the single. There was a bit of hesitation, but in the end the single completed easily. And I'll complete my point as well, that though this India A side comprises uncapped India players in terms of the senior side, but they've shown great maturity. We saw that in the semi-final when they were under the pump. They made a comeback. They need to do that here as well. Quite a few of them out here are on the way there anyway, the way I see it. And that's the reason why this team in the emerging team squad. End of the over. They got 4 from it, 174 for 2.
Omer Yusuf's on 26 of 28 deliveries. Got a very handy knock of 88 in that semi-final against the Sri Lanka A side, where he got those 88 of 79 deliveries. An important innings in the context of the semi-finalists. Pakistan got 322 on the board. And just talking about him, he's got the responsibility as well. He's the vice captain for the squad. Top run getter, 348 runs in the two-match first-class series between Zimbabwe and Pakistan Shaheens earlier this year. So he's come good with the bat when it matters the most in the knockout phases of the tournament. This is where the fielders need to back up the bowlers, cut off these singles. Nick Jones once again doing a good job there. He's been excellent right through this tournament. Short, hit in the air and hit in the gap as well. That'll be 4. This is a big outfield. The spinners have to realize there's not much of deviation for them from the surface. They got to try and bowl a fuller length here. They can err on the fuller side but not drag it in short like that, because these Pakistani batters are really good, and anything short they've been severe and they put it away without any fuss. Also looking at the way Omer bin Yusuf's batting, wonder if the captain might be tempted to have that deep square leg fielder a little wider towards mid-wicket rather than too square. Down leg. Yeah, this is the problem. When the bowlers are bowling all over the place, the captain can't do much about it. Another boundary coming. That's because of a ill-directed delivery from Abhishek Sharma. The previous one was really short, and this one full and outside the leg stump. The batter had to get some bat for him to pick up a boundary. Yes, in fact, to signal runs by the umpire, so there was a hint of bat onto pad. And the ball still had enough pace on it to cross the boundary rope. Suddenly the boundaries have started to come in this over from Abhishek Sharma. He's conceded 2. Quite a few loose deliveries are bowled by the Indian spinners in this particular game. That's so much better. If you get hit down the ground, you take that than being hit square. 27 gone, 183 for 2. The final over of the power play went for 16. The first over of the innings went for 13. So you look at those two blue lines that just stand out in that Manhattan, highlighting how Pakistan started the power play very well, ended it in quick fashion. Oh, this could be a chance, yeah! Has he latched on? Ryan Parag, well, isn't too sure. And I think this may be referred to the third umpire. He's first going to the square leg umpire to check if he can give him a clear idea here. Now it will be the third umpire who will come into play. Neither Lyndon Hannibal nor Buddhi Pradhan being very sure, so Morshid Ali Khan's got to take the call here. I get the impression that Rian Parag said not out because he would have realized if the fingers were not underneath the ball. Well, this looks close. And a lot of times it can happen that the fielder's not very sure. What's the take from the third umpire, Morshid Ali Khan here?
It's dipping on him. And he does well. He goes with both the hands. Had it covered, but as he got the fingers underneath the ball, didn't think he thought he had the fingers underneath the ball. I think that's because of the right hand, which he'll keep an eye out for his left hand and keep an eye out on the left hand, the fingers of the left hand. Now, did he get that underneath the ball? Did he get the middle and ring finger of the left hand under the ball? Really touch and go this. Now look at it from this angle. Now keep an eye out on the left hand, because maybe the right hand comes onto the ball a little late, but he does get something on the ball with his left fingers. We will leave it to the third umpire, Raman. Yes, it's definitely a tough call, and we can be thankful we are not sweating over having to make this decision. Well, out it is. Rehan Parag gets the big wicket here. And Rashid Ali Khan, the third umpire, ruling that in favour of the fielding side. That'll be a big wicket. Umair Yusuf will have to go back to the hut. He's not looking happy at all. Rehan Parag does well here to go low to his right to pick up that catch. It's a good effort this from the bowler. He was completing his follow through and going the other way, and then he had to change direction. Does well. End of Yusuf for 35, and Pakistan here 183 for 3. A breakthrough for India A, getting rid of Umair Yusuf for 35. A sharp cotton bowled, being affected by Rehan Parag, getting a wicket in just a second over. India A have got a breakthrough here. Kasim Akram walks out to bat. Average is 35.27. And he walked out in a very good situation here. Pakistan are 183 for 3. And the pitch is good for batting, not much of turn. Got a few runs, Kasim Akram, as well as a 6-wicket haul in one of the matches in the group stages. Straight plays a big shot. There's a fielder there. Taken by Harshit Rana. Gleefully accepted by the fielder at deep mid-wicket. And 2 wickets go down in successive deliveries. Akram was quick to latch on to the shot delivery, but finds the fielder. The shot was on. It was unfortunate that he found the fielder. Straight into the fielder at mid-wicket. Just a couple of steps in is all he had to do. And he pouches it safely. Harshit Rana, good catcher. Makes no mistake at all. Yes, and Kasim Akram will have to go back to the hut, much to the delight of the Indian fans. He's gone without scoring. 183 for 4 now. There's been no dearth of excitement and drama in this final, as the captain of the Pakistani side, Mohammad Haris, walks out into the middle at number 6, and he's got to face the hat-trick ball. He likes to play shots.
Even in the last league encounter against India, he looked to play shots, even though his team was in a precarious position when he walked out to bat. And of course, here he's got to first save the hat-trick and then see what he has to do. Down leg, and that's going to be called a wide. With a googly, he got a wicket on the previous delivery that he bowled to Qasim. Not this time around. You have to really admire the aggression of the modern day cricketers. Looking to play an aggressive shot first up, and he's walked out to save an hat-trick. Suddenly India are looking to get back in this match. 2 wickets, one of them of the set batter, Yusuf. They got to make the next half an hour theirs, because they got back-to-back wickets. They have to really work hard for those wickets. That's what I was talking about earlier as well. The temperament that this young India A side has displayed all through the tournament. Let's take a look at the 2 wickets that have gone down. It comes from Riyan Parag. You would have expected the left-arm spinners to pick up wickets, but Riyan Parag gets 2 wickets at the start of this over, and then it's up to the other bowlers now to pile the pressure on from the other end too. Look at that second wicket that went down. Qasim, on the very first delivery that he faces, sees the googly, wants to go for the big shot, singles out the fielder in the deep. He'll be very disappointed. Two wickets in that over for Riyan Parag. It's 185 for 4. Credit once again to the way India A have fought back in this match. There was a mammoth 121 run opening wicket stand. A lot of times when that happens, teams tend to feel nothing's going their way. The shoulders start to drop. The misfields start creeping in. Oh, leading edge here. Could be another wicket. Will it get to the fielder? No, it won't. Abhishek Sharma running in from the boundary rope. Couldn't get there. These little things have to go in your favor in a key game. Off the leading edge, that could have easily gone to a fielder, but it lands in between the fielders. Nitin Jose was running towards it, as was the fielder from long on, Ashit Rana. Oh, again a chance here. Oh, it's lobbed over the head of Nishant Sindhu. What are Pakistani trying to do here? They're really playing that shot really well. Well, they're just being lucky for sure. But again, closing the face of the bat, playing off the leading edge. It's a case of things going through their heads now. The assurance is not there. A couple of quick wickets, they're looking to work the ball around, which means that you know that they're thinking quite a lot. Play with the straight bat. Oh, that could be close. And it is a wicket. Yes, it is. Nishant Sindhu strikes. Gets the captain of the Pakistani side, Mohammad Haris, out leg before. Success for Sindhu. Lyndon Honeywell is the man officiating at the media box end. He had no hesitation at all. And that ball isn't off the pitch. Went with the arm, went in with the arm, and the pull shot was perhaps not the best option on that occasion because they were not short enough. He's gone for 2, Pakistani 187 for 5.
Three wickets have fallen for Pakistani in the span of the last 4 runs that they've scored. As Mubasir walks in at number 7. And suddenly you get a feeling that Pakistan A seem to be losing their way in this innings. Over 1,000 runs for Mubasir Khan, averaging close to 31 in his List A career. He's just got to settle the nerves here. That's what it's all about. You've got to persevere. One good catch taken by Rian Parag of his bowling. The next one was a poor delivery, but you were lucky enough to get a wicket. And again, left-arm spinner traps a batter out. And 1 gets you 2, 2 gets you 3 in cricket. You've got a fielder at first slip. Attacking captaincy by Yash Dole. He himself is standing at that short extra cover position for the uppish drive. This is clever thinking by the India A captain. Slip in place. That's good captaincy. Ooh, he's mixing it up nicely. Nishant Sindhu, the arm ball to end the wicket taking over. 29 gone, 187 for 5. Let me know when we are back. 121 for the opening wicket, and then after another small partnership for the third, they've lost 3 wickets in the span of 4 runs, have Pakistani, and this is where Taib Tahir needs to just settle the nerves. He's the batter who's been out there for a while. He's got to try and buckle up here, but Manav Sutar comes back into the attack. Let's take a look at the previous wicket that fell. Deceived by the length there. It was fuller in length. He misjudged it completely and played a full shot. And once the ball made impact on the thigh, he moved as he completed that full pivot. Look at the timeline. The runs are hard to come by. Wickets have fallen. Boundaries have dried up. Take another look at that leg before. Yeah, once the ball hit the leg, there was a distinct movement towards square leg. Runs here off the outer edge, but it's a controlled shot. They've got 2, they want 3. I dare say that's going to be fraught with danger. Just 2 is what they'll have to settle for. But look at what happened in that over. There were a couple of top edges that fell in no man's land. This was the first one where it just fell short of Abhishek Sharma. The other one lobbed up over the bowler's head, and Tahir survived. But then came that wicket. It has to be said that the middle order is frittering away the foundation given by the openers. It's up to the lower order now to indulge in a rearguard action. Love the choice of words, WV. In the 30th over, yes, half the side back in the hut. And they'll have to rebuild here, will Pakistani. Manav Sutar, 10 wickets for him in this tournament. 11 wickets is what the other left-arm spinner Nishant Sindhu has moved up to. And for India, as I've been saying time and time again, in this tournament, left is right. 30 gone, 190 for 5. What a turnaround. Looking at the scorecard, just half an hour back, it was absolute domination.
And the wickets that have fallen, that have gone towards the changing of fortunes towards the Indians. This was the slip that caused the trouble. Couldn't recover. And that was a catch that was referred upstairs. It was eventually decided the catch was clean. Nicely eased into the deep for a single. Sana, a position that Pakistan would not have anticipated after that fabulous start. Absolutely. Some unaware shots. Yes, the shot was on, but you should have known where the fielder is. Not a very good shot again when you are just new to the crease. But a bit unlucky for Shahzada Farhan and Umair bin Yusuf both, I think. Quick run there. If it was direct, he would have been in trouble. Is the attitude of the Indian A team also never say die attitude, despite the fact being on the back foot with the attack that was there. Have another look at this. Good pick up, quick release. Direct hit would have been very interesting. And this is where Pakistan needs to be intelligent. Yes, there have been some misfortunate wickets there. But what they need to do is reassess the conditions, have a different target. The captain said 290, maybe anything above 250, 260 on a spinning track can be a fighting total. But these two have really got to batten down, build up that partnership. Showed some irresponsibility. One of the batters coming in, first ball, he was trying to hit it over the top, uncalled for. And this is quite a pleasurable feeling of deja vu for the Indian A team. Did a similar kind of thing in the semi-final against Bangladesh. After being pegged back 94-1 and then getting them all out for 150, that's something that the Pakistan A team will have to be wary about. That's where they are good. Once you give them a way through into your batting lineup, they will go all in. So credit where it is due. Tickle round the corner. That's going to go fine, and that's going to reach the boundary now. Give some welcome runs to the Pakistan A team at the end of 31. It's 196 for 5. Batting so far for Pakistan A. Tayyib Tahir still not out on 22. Mubassir. Just played down the ground. Right, Parvez Maroof is standing by with the guest downstairs. Thank you, Coms. Got Sitanshu Kotak, the head coach of India. You must be really happy after the start what Pakistan got in the way your team has fought back. Yes, I think it's a good recovery. They had a good start, obviously. The wicket was playing well, and the batters, credit to them, they batted well with the openers. You caught by surprise how the Pakistani openers attacked the fast bowlers? More than anything, I think all the 3 games we played here, ball wasn't coming that nicely on the bat in first inning. So a little bit wicket looked same, but he played better, and they genuinely attacked well and they batted well. You must be very thrilled with the spinners, how they bowled right throughout the tournament, not only today. No, they bowled really well throughout the tournament. I think after that start, and once we got a couple of wickets, we bowled few loose balls, which spinners have not done this tournament so far. But then again, now we are back on track. So and what do you think is a decent score to chase down in this pitch? The way wicket has played so far, I think anything up to 275, 300 is easily chaseable. Anything over that would be somebody will have to play really well. And tactically, it's the best time to bat with the new ball. So that's something that you'll keep in mind as well, isn't it? Definitely, yes. So far, every game, the second half been the
better with new ball also coming on the bat. Under the lights, it looks so far that ball's coming better on the bat. So that's what obviously the reason we wanted to field first for first 10 overs and then betting first 10 overs and under the lights. Thank you. Wish you all the best. Thanks, Chief. Over to you. Back to the combox. Just dropping it down. No chance for a run there. Ends the 32nd over. 198 for 5. Sir, after this over drinks? After 2 overs? That's the way it's gone. Till about the 17th over, no problems. Easy, smooth sailing, and then the trouble started coming with those little squares showing the fall of the wickets and really coming back strongly into this game. The India A team, after that wonderful start by the Pakistani openers, looked to be taking the game away from the Indian A team. Just kept on going. That is the magnificent trophy that they're playing for. Tayyab Tahir, he has looked really comfortable against the spin, and so was Umair bin Yusuf. When they were batting, Pakistan were cruising with some wickets in the middle, and they will have to readjust, rebuild. Lots of overs to go. They can tell themselves that we can even afford to bide our time because of that initial momentum that was created by the openers. 100%. And both these batters know that they have, as a pair, they have the best chance now, because after that the tail starts. We do have some all-rounders, and we have seen Mehran bat a bit. We have seen Mohammad Wasim Jr. with the cameo. But if we want to see 50s and centuries, this pair, they have the credibility, they have the skill to do it. Even without the blistering start, a current run rate of 6.09 in the 33rd over, you'd say we're pretty comfortable. Maybe lost a couple of wickets more. That almost crept through. The ball just held its line, got the inside part of the bat. Mubassir Khan going to play that cover drive, expansive, takes the inside edge. Another good over with the ball. It's 33 done. 199 for 5. The Men's Emerging Asia Cup, the inaugural winners India in 2013, taking on the last winners, the 2019 winners Pakistan, in this iconic Premadasa Stadium here in Colombo. Big tussle between the two giants of Asia. And a lot of activity going on. We saw some powerful hitting early on, domination by the batters, and then the spinners coming into the fray, doing a good job with good support from the outfielders. So it's been quite an intriguing game so far, and more to come, I'm sure. Just throws the bat at it and gets to the boundary. He made it look very simple, didn't he? That's the 200 up for Pakistan. Tayyab Tahir, one of the most valuable players against spin for Pakistan. Inside out, plays it with so much ease. Excellent weight transfer, extension of the arms, still head. And he feels for that one now. Need to get a better bat. The keeper Jurel making an effort to catch that ball. And he just passed the bat. Close call.
from the reaction of the bowler and the keeper, it did feel like there was a faint edge. So it will be a drop catch. Well, after the 4 coming back, the man and another chance here, underarming that quickly. They're on their feet, so very agile. Got safely through the batter. You still have to think whether these kinds of runs are really required at this point, because this is the last batting pair for Pakistan. After that, you still have some batting in the tank. But if they get out now, then a lot of trouble for Pakistan. The run rate is not an issue, the wickets are. Absolutely. And you just feel you can, as I mentioned, patience is a virtue. And here, under pressure, showing your temperament is so crucial. Well, he's enjoying with a little lift through the tooth. And they'll be trying, Pakistan will be trying to find the gaps in the field to get the ball through the gaps. Because of those 250s in the middle, 37 balls and 45, Pakistan can take their time. And that's why a couple of dot balls here and there don't matter right now. After 204 for 5. And that will be the drinks. Pakistan getting off to a rollicking start after being invited to bat. Sam Ayub and Shahzada Farhan really getting amongst the runs very, very quickly. Absolute domination early, and Yusuf chipping in. But then the problem started for India. That's the huddle, the decision to put Pakistan in didn't quite work out. They were off in a flash, very expensive first over. And from both ends, the left-right combination really took a fancy to the Indian bowling, and they really went about their manner in a very, very attacking way. And there's a big appeal, maybe a bit of bat, not quite there. Shots down the ground, slog sweeps by the left-hander, by the right-hander. It was all there. 360 degree of attack. The inside-out shots will delight to watch from both the batters. And Saim Ayub with straight drives, a very good celebration on his 50. Then Shahzada Farhan followed with his 50. Both the batters looked really good. Saim Ayub down the ground to Manav Sutar, and the very next ball gets out, caught behind. Then we saw some more sweep shots from Pakistan batters. Big hitting from Shahzada Farhan.
until this run out. Unfortunate, he slipped. There was no run there. And Tayyib Tahir kept punishing the bad deliveries. Then it was Umair Yusuf, a dismissal, close call there. And then Qasim Akram, a shot on the very first delivery, not knowing where the fielder was. Some outside top edges. And then it was the captain Muhammad Haris falling down to the arm ball. They've had their little rehydration. It is very hot and muggy here in Colombo. One little thing that worries me sometimes, Sana, is after any kind of break, the batters have got to regroup, rethink, refocus. That's when the bowling unit has that opportunity to strike. Absolutely, and this partnership just 17 of 33, but it is going to be a very vital partnership because this is the pair that can definitely take Pakistan to a target that is a fighting one. And we heard the Indian A team coach saying that he'll be reasonably happy if they can restrict them to 270, 275. Anything over that would make it difficult, would be scoreboard pressure on them. So these two should assess the situation and say that we're aiming for that. We can afford to wait for the loose balls. We can show some temperament here. Absolutely, it's still a long way to go with 5.9 current run rate. They can go to 296. And of course, if you have wickets in hand, you can always accelerate. So for Pakistan, the priority has to keep these wickets in hand now. And also frustrate the bowlers. 6-wicket partnership may have come slowly, but it is in the process of building. And it's going to put pressure on the bowlers and to the batter's advantage. So I said he almost made it into a full toss, but at the end it was just check shot. 35 done, 205 for 5. Tayyib Tahir uses his speed, big swing of the bat. It's way up. It's going many a mile. That'll ease some nerves. Just the point I was making. Can wait for that loose ball to come along. And he picks the bowler and the ball really well. First ball of the over for the maximum. In the last over, he picked the first ball to go over covers, this time down the ground. Absolutely marvelous shot, particularly the state of the innings when they're just slowing down a little bit, just the momentum that's needed to get a move on. 19 for 7 sixes, and he checks a shot. That is good cricket. Big no from his partner. And the intent has been brilliant from Pakistan. Yes, there have been a couple of rash shots in between, but every batter that has come in seemed to feel like that they mean business. A very good shot once again. Always premeditated that reverse. He was into position very quickly. Just gave the pace to a nicety. Just helped it on its way. And he's shown his range of shots. He's really strong down the ground in that mid-wicket region, and this time uses the reverse sweep, back of the bat. Knows the third fielder was quite wide, plays it fine. Important 4 runs. Seemed to have so much time in getting into position and playing that. Reverse sweeps are normally spur of the moment set of decisions taken. And just whip away. That is good cricket. Gets the big runs, then uses the angles well. And this is where he's different to maybe Sahibzada Farhan. He can hit the ball long, but the way Tayyib Tahir uses soft hands to rotate the strike against spinners, that makes him a better player of spin. Prompted a few changes in the field. No, enticement, he almost fell for it.
Gets the inside part of the bat. Very fortunate. Now that's average batting. When you've already got 11 off the over, you've got a set batter. Why would you play a shot like that? Giving a chance to the opposition to come back. This partnership is looking to look good now. 30 of 43. Has better compactly behind and just ambles the single to finish over number 36. It's 218 for 5. Quite a few from the Pakistani have played international cricket. As you see, another big hit from Tahir. Bracket shot Abhishek Sharma, and he was quick to latch onto it. Tahir dispatches it over the boundary. They had the job of steadying this innings, and they've done a good job so far. And, the best thing about this partnership is that they're not missed out on capitalizing of loose deliveries. The phone box with me is Parvez Maroof. Hello, WV. Definitely. I think that's where the Pakistani batters, not only these pair, especially Tayyab Tahir, everybody, whenever an opportunity has been offered, they have taken with both the hands and accepted it. At the moment they are rebuilding it. There was a mini collapse in the middle, and now it's all about batting out the 50 overs. If Pakistan bats out the 50 overs, 300 is definitely on the cards. Ayub has played 8 international matches. Harris has played 14. Quite a lot of experience in terms of the list A matches, and having played international cricket in the Pakistani A side. On the other hand, the India A side has got young cricketers who are not about 22 years of age, and they've done well here in this tournament. They come into this final unbeaten, and they're hanging in there now, as is a challenging enough final this for the young side, but they need to persevere. It's a matter of another few overs now. And a 17th list A half century for Tayyab Tahir. What a fantastic knock under pressure. He came in when the chips were down, trying to rebuild the innings, and he has played really well. Shot again, over the top, mid-wicket fielder. Oh, Hungarekar. For a moment I thought he's going to hang on to it, but in the end, valiant attempt, just not good enough to hold on to it, or else to save the boundary. 37 gone, 232 for 5. The current run rate is 6.27 for the Pakistani A side, and this partnership is worth 45, just 50 deliveries. Suddenly, Pakistan have made sure that Indians are not going to have it easy, and this partnership has become a very crucial one for them. They lost their way in between. They lost 3 wickets, scoring only 4 runs, but Mubasir and Tahir are doing a good job of rebuilding the innings here at a brisk pace. And the India A side needs to produce something here quickly. Tayyab Tahir has been really good. 8 boundaries, and 4 times first ball of the over has been dispatched for a boundary. That means he's putting the bowler under pressure straight away, as well as twice of the last delivery. Change in bowling. Dodia has come back for his second spell. He's starting his 6th over.
Tahir has played a very good knock here. Width an offer, but not capitalizing is Mubasir. The timed innings for the Pakistani middle order batter who has been experienced campaigner for a while, and partnership building for the Shaheen with 45 is exactly what the Pakistani need. Need those singles and not boundary will come, and eventually even a 300 mark in a final is a massive score. Is at the current run rate, they'll get to 311. Will Pakistan A? It's a healthy run rate. This 6.21, and they sustained it. They got off to a good start. Doesn't find the gap on this occasion. We saw the Pakistani A openers indulge in some brutal hitting at the start of the innings. They caught all of us by surprise the way the two openers started their proceedings. Even I had a chat with the Indian A coach. He did mention that they caught serves, but in the end that's what good teams does. When the chips are down, you come into the game as underdogs, where the Indians are the favourites. They caught nothing straight away, but there are thoughts for the Indians as well, the way they fought back in the middle overs. Going for a big hit. He's got hold of that. That's a huge hit. That six brings them the 50 partnership, and it takes Pakistan A to 240 for 5. A fantastic opening partnership of 121 between Farhan and Saim set the tone for the Pakistani A innings. After that, there's been steady contributions from everybody. There was a little bit of a slide, but in the last 3 overs they got 35 runs, and suddenly the gears have changed, and this will get the batter a couple of runs. Gradually the Indian fielders are beginning to look a little bit ragged here. These two batters have made havoc in this field. Lots of mistakes as well. Luckily, the last delivery, Abhishek Sharma. This was a good shot. Midfield was broken. Square leg comes down. And misfield through the leg. We just mentioned about the Indian fielders being run ragged. This is another example of it. Dodia was the fielder. He had to run to his left. He had it covered, and that's what will disappoint him. He got behind the ball but allowed the ball to go through. They've been really good at the Indians in this tournament, but he makes the distance, he covers the distance and then lets it go. And this is the time they got to really focus hard and try and give their best, save some runs and try and put the pressure on the batters. Tahir is taking charge of his innings here, and he's done a good job of it. He's batting on 62, just 48. Momentum shift in this game has been quite evident. The first wicket, Pakistan had the momentum. In the middle overs, Indians came back with 5 wickets, and now Pakistan are taking it back to their own side. This is what a final does. This is what the greatest rival does to you. Pressure. This is the sex we are talking about. Take a look at this. Extending of the arms. Oh, middle of the bat would have cleared any grounds. Massive. Bit of turn and bounce for Sindhu. Mubasir is just looking to rotate the strike and allow
Tahir to be on strike. That's a good ploy that from him. He was shaping for a big hit. Made a last minute change. End of the over. 247 for 5 Pakistan A. None of the India A players have yet to make their debut for the Indian senior side. They are young cricketers and they are on the way up. They are trying hard to get there sometime in the future. And most of them have been doing really well in the domestic circuit. And some of them have done really well in the IPL as well, which is a fantastic platform for them to rub shoulders with the best and against the best as well. I'll have to correct myself here. In the previous stint I said that the senior selection committee led by Ajit Agarkar and his selection committee has selected this bunch of players. I'm just corrected by Shashank Kishore on Twitter saying that this has been picked by the junior cricket committee headed by Tilak Naidu, the chairperson. Just a correction there. That's good to see the youngsters being given a chance. Average age between these players all are between 19 and 22. And they will learn among these experiences. Once again a misfield. They'll look for the second. I'll get it easily. Of course, both Ajit Agarkar and Tilak Naidu would have had a chat about this. And they're in constant communication, both of them. Right way forward, giving plenty of chances. As you said, these players have performed really well in their domestic Ranji Trophy, Duleep Trophy, and then all of a sudden they get the opportunity. That's hit away over the infield. That's a boundary. And that brings up the 250 for the Pakistan A side. They're really turning the heat on here, Pakistan A, and Tahir especially in fine nick. It's a poor delivery by Yuvraj Singh Dodia. There's no field square through the offside by saving the boundary, and bowls a half volley on the offside. Straight away after that stroke, deep square leg comes in, and Surya Pakawar drops back. It's been good batting, and also they're targeting the first 40 overs. This time on the leg side, he's got hold of it well enough, and that's a big six. He's kept the umpire busy as Tahir, and he is really demoralizing the Indian spinners here with some big hitting. A calculated risk. He understands only 4 fielders are permitted outside the circle, and this is the last over in the second power play and maximizing it. And Dodia is bowling it full right in his arc for a batsman who has settled really well. He's not going to miss out. The first boundary through the offside, second a massive 6 over mid wicket. Looking to run it fine, pick up a single, doesn't find any kind of response from his partner. The inside out was really good and it was hit powerfully. And the next one, the 6, was it even more harder, even more longer. The wheels are coming off. Dodia is at the moment just firing it in. Partnership has 73 of 67 deliveries. Brilliant so far by these Pakistani batters. Up and over, that'll go to a boundary. Now he's toying with the bowlers here. One through the offside in front of the wicket, 1 over long on, and 1 behind square now. I don't understand this feel by India. Austin bowling to a right-hander, 5 fielders in the offside, and all what Tahir has to do is to find the gap and be a bit vigilant, and that's exactly what he did. So not all about power shots, it's all about using the guile as well. Just don't understand the captaincy at the moment, having only 4 fielders in the leg side. He picks up a single, retains the strike, 265 for 5, Pakistan A after 40.
चलो boys, time de. Contributions coming from the top of the order really well for Pakistan A. 2 half centuries at the top. Tahir batting on 80, and it gives you an indication of how dominating Tahir has been. If you cast your mind back to the score at the end of 35 overs, Pakistan A were 205 for 5, and in the last 5 overs they got 65 runs. Correction, 60 runs. This partnership is worth 78 of 69, and then it's moved on to 79 of 70. Yeah, reverse sweep, back of the bat. No more innovation by Tayyip Tahir. It's not all about massive sixes and bounds. It's all about getting those singles, rotating the strike. And these two players have been brilliant. This outside is a genuine outside edge with a brilliant deal by Manav Sutar. And 2 away runs. At the moment, the problem is for the captain of India, and he cannot be attacking. Ideally, you like to have a slip fielder. And when you're 5 wickets down, the batsman has been so good. Unfortunately, there is no slip field in place, and resulting in 2 runs. Gradually, Pakistan A is looking to take this game away from India A. Definitely India A will have their work cut out chasing this score. Under lights, under pressure, in a big game, a crunch game. The greatest rivalry, all this pressure. And that man on screen, Yashtul, will play an important role for India A. Played away fine, that'll run away to the boundary. This is good batting. Mubasir joining the party now. Perfect example of using the pace which the bowler offers to the batter. Playing it really late, almost off the glove of the wicket-keeper. And the third man fielder was quite squarer. When you're bowling quicker, you need to be finer, but unfortunately for India A, the place placement has been a bit under the par, I say. He will pick up another run here, playing over the infield. It's interesting how both the sides somehow have got the number 280 in their heads. The Pakistani captain said 280 he was looking at the toss, and then we heard Kotak say, the coach of the Indian A side, say that beyond anything past 280 will be difficult to chase. And Pakistan A are 273 for 5. And at the end of 41 overs, they're 274 for 5. Yeah, best partnership going on. This is Tayyip Tahir, 82 of 57 deliveries. He's been quite powerful. Anything full, he's been not making the back seat, doing those cute little strokes as well. Whenever the off-spinner pitch it up, he has taken the aerial route and been quite successful. Brilliant so far. Very interesting stats as well. Best partnership against India in the entire tournament. India is playing the 5th game of this tournament. Has been Simon Farhan, the first wicket in this game, 121. And the second is an ongoing partnership, which is 87 of 75 deliveries. That shows how well Pakistan A on the day have performed under pressure. Sindhu to start his 9th over. And he'll be up against Tahir. Pakistan A have got 9 more overs to bat. And even if they get 30 odd runs, 40 odd runs, they would have set a very good target for India A. You mentioned about Mohammad Haris at the toss said 280. Very similarly against semi-final against Sri Lanka at Pisara, where I did the toss, he said the same, 280, and they ended up scoring 322. Anything above 300 is a match-winning score, and India has to bat out of their skin to win this championship. Nudged away on the onside. He'll pick up a single. Mubasir is providing excellent support to Tahir.
He's not trying to be a hero here. He's realized he's got to play the supporting role, and he's doing exactly that. A slight message, probably from the captain, or maybe a written message in the bottle. Never know. Using tactics, new tactics. India needs some luck somehow at the moment. The only option he's got left is to bring back his medium paces now, because he's tried a lot of spin. In the last few overs, nothing really has happened. They've not made any impression on the batters. So he's got to try and change the tempo of the game. Spot on. He's tempted to be one of the quicks. Bowl those cutters into the pitch. Change the pace of the game and get the batsmen to think differently. At the moment, they know it's only going to be spinners. 90 runs partnership of just 79 deliveries, rather 80. It's been a good partnership, obviously, and it's come at a very crucial time, just when Pakistan were almost looking like losing their way. End of the over, 277 for 5. .277 on the board. This is turning out to be a fantastic batting effort for Pakistan A, and it seems as if for the third time in this tournament they'll be putting 300 plus on the scoreboard. They've done that twice before this. Look at those two partnerships. The opening wicket stand of 121, and then this partnership really tightening the screws here. They've really got to move on in this partnership, but the game has ebbed and flowed quite a bit. And are there going to be any twists and turns? Wouldn't be surprised. The change of pace that our previous commentators were talking about being affected here, and that's I assume not quite the last throw of the dice, but at least an option that the skipper was forced into. Yes, he's been forced to get the quicks back. Hangar Gekar, 2 overs, none for 14. Should have had a wicket of Saim Ayub early on, but had him out caught off a no ball. And that no ball turned out to be very expensive, because we saw that opening wicket partnership to go on and put 121 on the board. The coach was talking about a 275 plus score that's going to put them in trouble. That looks very much gettable now. They're going to cross that. Ahead along its way, and that will be 4. He picked his spot there, did Tahir, saw the fine leg up inside the 30-yard circle, knew exactly what he was doing. He's so very quick into position. Once you're playing the scoop, you've got to be right there. Look at him, just there, quite a big stride away. You can lose your balance. Seem to have his eyes on the ball and get just that perfect bit of bat on it. Just take it away to the boundary. Looking very ominous. 330 plus on the cards here. It's the current run rate over 6.5 runs per over, and at this rate they get to 333 in a final. Big runs, especially on a surface like this. Short. Wanted to just wrap that ball over short third. Didn't get the timing right. It's a typical pace bowler's retort. When you're hit for a boundary, you come back. But I think the batter was expecting that. And it almost played into his hand when he tried to ramp that away. Look at this. He's waiting and he tries to get it away. Not quite getting hold of that. But there was
That improvisation on the cast got the bottom part of the bat. Didn't get room, didn't have enough room to play that kind of shot. Tayyab Tahir. Tahir got 51 of 67 balls in that match against Nepal for Pakistan earlier in this tournament. Looking for a single, they'll get it easily. It's clever batting by Mubasir, who's content on playing second fiddle in this partnership. Absolutely, very sensible cricket. It just taps the ball away, soft hands, looks up at his partner. Didn't have to say yes, just looked up, the understanding is there, and they crossed over quite comfortably. Shows how pretty they're sitting in the middle with all the hard work done when the wickets were falling and then grinding their way into this game and now taking the ascendancy with some big hits. Delight amongst a smattering of fans of the Pakistani side. When you look at the field setting, there are 4 boundary riders on the leg side. There's no one cutting off a single on the leg side. That's the short ball, so you know he's going to be bowling short. Spare a thought for the bowlers in this kind of situation. There's hardly anything in the track. The batters are in a marauding mood. You've been hit away for a boundary first up. You need to come back strongly in the over. And that's the reason why I was saying that with the predominant leg side field on the boundary, Tahir is trying to either play the ramp or play the uppercut to play the short ball on the offside. This is easy pickings. Can he afford to do that? It's lucky that it didn't find the gap because it was there for the taking, just drifting down leg. So you're right. The thought process should be about the off stump or outside the line of the off stump. Every time you become too straight and drift, you're in for trouble. He's into the 90s now. Tayyab Tahir, 91 of just 63 balls. 10 boundaries and 3 sixes with a strike rate of 144. He's playing this ODI like a T20. Cracking innings. And this could turn out to be a match-defining one. They've got one, which means the partnership now worth 99. And that'll end the over as well. 43 gone, 286 for 5. Almost every batter of this Pakistani side got runs against his name, barring those two, Akram and Haris, the captain who fell early. Barring those two, everyone else contributing to the cause. 286 on the board, 121 runs for the opening wicket, and now 99 for the 6th wicket. The 2 highest partnerships that any team has had against the India A side in this edition have come in the final. And just the right time for it. The partnership has been so impressive. You've got to take into consideration that they started off when the innings was tottering. Cluster of wickets falling. They took their time. We're looking at the big hits, the highlights. There's been a period of play where they had to really grind it, really play some defensive shots, frustrate the bowlers initially, and then once they got the feel of things going, started going after the bowlers, and how it's produced that how quickly those 99 runs have come has been there for all to see. Excellent work. Credit to the batting side. You've got to give it to Tayyab Tahir, the way he's played and structured this innings. A lot of times you find fault with the bowling team in terms of what's gone wrong. Hit down the ground.
And that's hit a fair distance. The 100 of the partnership comes up. This 6th wicket stand is now worth 105. Oh, this is mayhem here. Look at the way. Look at the shimmy down the wicket. Gets underneath that one. Full flourish of the bat. Lovely follow through. It's got the elevation. It's got the distance. It's got the maximum. It's the second 100-run plus partnership that's come against India A, and it's come in the same match in the final. And now he's looking for his 100 here as well. He's got one. Is that off the bat? Run signal, yes, so it's 100 for Tayyab Tahir in the final of this ACC Men's Emerging Teams Asia Cup 2023. A match-defining innings. Yes, it is. 400s in List A matches, and what a time to get it. And he thanks the Almighty. This has been a tremendous innings. The compilation of the innings so very crucial, as making the point. He came in with his partner at a time of stress, but he's shown a lot of mental resilience in addition to the wonderful skill sets he has. Big striker of the ball, also has deft touches. It's been a delight to watch. What an innings. 11 boundaries, 4 sixes for Tayyab Tahir. Yes, the delight quite evident on his face. It's a big innings. Lucky there. The edge will get him 4. He was foxed in the flight, but still gets 4, and the 300 comes up for Pakistani. When it's going your way, the luck, Lady Luck upstairs looks down on you. Could have gone on to any part, to any of the fielders. You had to reach for it. And despite that, getting enough bat, the upper part, not in control, but 4 runs nevertheless. 4 streaky runs, but it'll keep on piling the pressure. Inside out. What a shot this. He's not got 4 for it, but Ryan Parag was there. But what a clinically executed shot. One of the most difficult shots to play. And he was well inside. Look at the amount of space he makes for himself. Plays it inside out. The perfect shot, but doesn't result in the boundary. You get a boundary of a streaky shot. There were vagaries of cricket. Mel Mubasir says, I'm not one to be outdone. 4 to end the over. 44 gone, 305 for 5. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइव क्रिकेट। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, Emerging Asia Cup 2023. India won the toss and chose to ball first. Pakistan batting extra. Tahir, great century. Only 69 balls and 118 run. Level. और तमाम ख़वातीनो हज़रात को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। पाकिस्तान के 300 रन कंप्लीट, और इसका तमाम क्रेडिट साइम अयूब और एजाज भाई, जिन्होंने शुरू में खड़े होकर मैच को सहारा दिया, कमाल का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उसके बाद बीच में मिस हुआ, कोई हमारे लगातार 3 आउट हो, 5 बल्कि आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ताहर भाई ग्रेट मैन, 69 बॉल्स में उन्होंने 107 रन कीर दिए। एक कमाल के हमारे यंगेस्ट बैट्समैन निकलेंगे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे आगे चलकर। और अरसलान भाई का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ दिया लाइव स्ट्रीमिंग में। और बहुत आला शानदार मुबशिर 41 बॉल 26, मुबशिर भाई पूरा साथ दे रहे हैं। ताहिर का भी 6 ओवर्स का खेल बाकी। देखते हैं बैक टू बैक पाकिस्तान क्या स्कोर करेगा और आज का मैच, फाइनल मैच जीत पाएगा कि नहीं। इंडिया इस टाइम फुल प्रेशर में, पाकिस्तान को कम से कम 350 रन तक जाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विन करेगा। इंशाल्लाह।
तसीम तू भी लिखी या कुछ नहीं था लिंक जो और पास लिखी एंड वेल और एक और सिक्स शानदार बहुत आला मुबशिर की जानिब से एक और सिक्स ये मैं अपने Angle and the swivel round and the control. Look at that. Using the pace of the ball and putting it away for the maximum. A half tracker. That's not going to impress the captain, but it definitely does impress the crowd. The result of that half tracker from Hangar Gekar. Here, I'm a lot of discussions going on in the outfield with the captain coming to the bowler. Another field, Hangar Gekar being advised to do things right. He's been asked to change angles. Maybe this is the ploy that might work. The wide Yorker. Yes, that's the plan. That's exactly what you've got to do. He's coming round the wicket. Now, there are times when you look to take wickets. And now when you're under the pump, this is the time when you look to contain the damage that's being done. Rightly spotted there, Raman. Very good call, and also keeping your cool in getting that, the wide Yorker. Just a tad wide, it might have been gone for a wide. You've got to keep your cool in terms of your skill sets. Now look at the field as well. They've got a fielder at wideish third man at the boundary. They've got that short third very straight. So the line has to be outside off. This one's, I think, slipped out of his hand. He was again looking for the wide Yorker. He's gotten away with it. Just a single of that ball. Yeah, a little lucky on that occasion. Just slipped out. It is very hot and humid, and you have sweaty palms. Must be the reason why. Thankfully, it was not above waist high. That could have been further trouble. Batsman trying to hit it too hard, missed an opportunity. Now look at where the wicketkeeper is standing as well. It'll give you a clear indication. Dhruv Jurel is standing very wide outside the off stump. So you know what the plan is. You know Hangar Gekar is targeting probably the 5th or the 6th stump. Outside off. That's where he's going. Down the ground. There's long on there. Gleefully accepted by Abhishek Sharma. Hangar Gekar finally tastes success in this match. But not before Tayyab Tahir got a magnificent 100. He's out for the 108. But what a knock this. It has been an exceptional knock. He tried to carry on with the momentum, but that change of angle and the length of the ball didn't get underneath that one. Good catch taken in the deep. At last, with the breaking of the partnership, some relief for the Indian supporters and the Indian A team. Terrific innings comes to an end. Tayyab Tahir gone for 108. It's a 313 for 6. The fall of Tayyab Tahir's wicket brings Mehran Mumtaz out there into the middle. Now, will this be the difference between a 335 or a 360? Mehran's the new man in. He'd like to continue with the momentum here. Batting average just about 15, but you know, this is the time when you come into bat with 5 odd overs to go. You not look at the batting average. What you'd look at is the strike rate. But look at the kind of applause that Tayyab Tahir is getting from his teammates. That's very nice to see virtually the whole team converging, congratulate him. He's done the job. He's taken his team to a very strong position in this final. Now, probably want to keep Mehran on strike. Played away. There is sweeper cover, so single of the very first ball that he faces. But the reason why Mehran's had to come out in the middle is because the wicket's gone down. 45 gone. 314 for 6.
Third man, final point covers. Scoring at almost 7 runs and over. Pakistan A in this final of the ACC Men's Emerging Teams Asia Cup 2023. They're the defending champions, remember, having won the title in the last edition in 2019. And those last 10 overs bringing 105 runs, 109 runs, correction. They really shifted gears, and what a time it's come. But now it's time for the Indian A bowlers. The reason why the new batter is in, he tried to get underneath that one and hold out into the deep, but he's done the damage. He's played a superb knock, and his team are in a very happy position and well appreciated by his teammates there. The smiles break out. They know they have some sort of control over this game now. There's power in his hitting today that we saw. Over the top, and this is going to be 4. Handy blow from Mehran, who's just come to the crease. That's his first boundary. I was wondering if Mehran has been given the license to go for it. I mean, now that they've lost the services of the man who got the runs, some would have thought maybe give the strike to the man on form in the middle there. Shamim, I think every batter who steps out into the middle now will have the license to go for it for Pakistan A. 4 wickets still in hand. You don't get any bonus runs for having them when the 50 overs are done. They'll come and have a go. Off the inner edge. I think that's a better length to be looking at. Look for the Yorker. Look for the fuller delivery just around outside off stump. Not often you see Harshit Rana have figures of not for 36 in the 4th over in a one-day match, and so all the luck favouring the batters just like that is going to go their way. When things don't sort of click for you as a bowler, the batter gets that little bit of advantage. He's getting the inside part of the bat and the ball runs away. Could have gone and hit the stumps, not to be. What they need to look at doing is try and create those situations where the batter has to generate the pace off the bat and are unable to get under the ball. Projected scores in the range of 350 and thereabouts. It's a huge ask for India A here. Looking for the Yorker. Ended up being a low full toss, which is not that easy to put away. This is a fine line between Yorker and a low full toss, and even if it's pitched further up or short of the batter, you can put it in the slot. So you're right, low full toss is always not the easiest ball to put away. You see there, trying to get underneath that one, got the toe end of the bat. But I think they're going to just have some free-flowing batting in the middle from both ends. And India will need some slices of luck to stem this flow of runs. Change of angle. Harshit Rana comes over the wicket to the left-hander. Slower one. The change-up's coming into play now. You just got to keep doing that consistently. Slow down the ball. Do not allow the batter to use your pace. Make them manufacture the shots. And in the process, when they're trying to hit it too hard, it doesn't really come off the bat. Time it sweetly enough. So some kind of a check on the run getting at least, if not the wickets. Huge score on the board already for Pakistan A, and the captain had said that at the toss, that it's a final. If you get runs on the board, chasing may become a difficult task for the India A side. Pulled away. Just a single, and I wonder in hindsight, would batting first have been a better idea for the India A team in the final? They faltered in the last match in the semi-final. 211 they were bowled out for. Maybe that was playing on their minds, that decision not to bat first. Runs on the board in a final. How many times have we talked about that? The pressure of chasing any number of runs at times gets to a side, but this is going to be a test. A litmus test for this young India A squad.
How many can they restrict Pakistani to? That's the first question. And do they have the wherewithal to chase it down? End of the over. 46 gone. 3:22 for 6. It's a run feast at the R. Premdasa Stadium. 322 for 6 after 46 overs. Who would have thought in a final that the batting team first, in fact, will pile up this bigger score at the moment. He's been brilliant. This is the main Asia Cup coming up very soon. Group A, Pakistan, India, Nepal. Group B, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan will be fighting it out. The top two teams will get into the second round. The four teams will play each other once again. And the big final. And all the Saxon stars on the 30th. India, short extra cover fielder. Takes it. So easy catch and a brilliant delivery by Hangarekar outside the off stump. And a very important wicket for the last 4 overs for India A. Mubassir Khan, he has looked so good. Time and again, in the last game as well, he was involved in a brilliant partnership. This time also supported Tayyib Tahir so well. From the toe end of the bat. Easy catch for Nitesh. Important wicket in this last phase of the game. The set batter gone. Has really played well. For 35 of 47, Pakistan A, 322 for 7. Mohammad Wasim Jr., the big hitter, very useful with the ball. Can he make some damage for the Pakistani with the bat? He certainly did some lasty hitting in the semi-finals, playing his 29th game. List a half century as well under his belt. A very good striker of 114. Can he pile up some misery on this Indian attack? Rightly pointed out, we've scored 24 of 17 deliveries in that important semi-final. Finished the innings really well. And those are the last 25 runs that really put extra pressure on the opposition. Hangarekar has come back really well. Came round the wicket, picked up a couple of wickets, bowling outside the off stump. And at the moment he's changed the angle, going over the wicket to the new batsman, Wasim Jr. Hit the card and no second invitation needed for Junior. Mohammad Wasim Jr., the only player in this lineup who has represented Pakistan in all 3 formats. This is the fall of wicket, the last wicket. Mubassir Khan trying to accelerate, keep accelerating. Toe end of the bat, easy catch. Easy catch taken by the sub-fielder Nitish Kumar Reddy at short extra cover. Follow wickets. It's a brilliant partnership for the opening batters, and then there was a flurry of wickets in the middle and a huge partnership in the middle for the 6th wicket between Tayyib Tahir and Mubassir Khan has made sure Pakistan A have mastered a massive score in a final. Nicely bowled again. Keeping the same tactic way outside the off stump. Very impressed by Mubassir Khan. He has been involved in 2 partnerships against India under pressure. One with Qasim Akram in the last game. This time Tayyib Tahir, it was a very important knock from him as well. He has not represented Pakistan at the international level so far. And good from the team management to have Qasim Akram and Mubassir Khan, both off spinners, all-rounders,
in the same team. Brave call there by the think tank. I think it's a very good call, getting the left arm spinner into the team. And the slower surface, that's nicely played through extra cover. 2 runs taken. I'm not too sure about this line by Hangarekar. I think it's a very good call, getting the left arm spinner into the team. Trying to bowl outside the off stump. Any bat, even an edge, will be a boundary. He's rather get one fielder from the leg side into the 30-yard circle and get third man back. Absolutely. Short. They can bring the deep fine to short fine. The projected scores 348, 352. Pakistan, definitely Pakistan will be looking at that 350 mark with 3 wickets in hand, and Wasim Jr. still there. Field remains the same. Oh, nicely bowled. That is nicely bowled by Hangarekar. Slowing things down, pretty unlucky there. The wicketkeeper got a bad bounce. Saw it in the last one. Saw the batsman going to the off stump, trying to paddle it over and bowl that slow ball into the pitch. Very well bowled. The keeper had a mixed day today. This should have been taken. He put the body behind the line but took the eyes off at the last end. Awkward bounce in front of the wicketkeeper. Could have done better, but I just thought it's quite sensible not to face the ball right away. Wasn't sure whether it's going to come to his face or the body. In the end, not much of a damage done. Nicely bowled, and good batting. A reverse slap. Mentioned about bowling outside the off stump to have the third man back. Unfortunately, India didn't. 47 gone, 331 for 7. Plenty of contributions by the top order as well as the middle order. Excellent batting up top. Saim Ayub was brilliant with 59. Sabdada Farhan looked $1 million 65, but it was Tayyab Tahir. A brilliant 100 of just 71 balls, 108 of 71. What a knock under pressure when wickets were falling in the middle. He has represented Pakistan in just one game internationally, but he has shown such temperament. No. And Tayyab Tahir, he has been the highest run scorer in the Pakistan One Day Cup, so he was in form. He took on the Indian bowlers right from the word go, punished every bad delivery, showed a lot of range of shots down the ground, over covers. Scored 100 against India, scored 71 for Central Punjab in the Pakistan One Day Cup final. He's the one for the final. Umair bin Yusuf for the semi-final. Tayyab Tahir for the final. Sorted. Hallmark of a good player, performing under pressure. Every batsman want to get out there now. Sufyan Mukim already geared up. Certainly Tayyab Tahir, stocky player, he backs a punch, and some of his sixers that clear any ground in the world. Inside edge and good out. This time trying to go over square leg outside the off stump, and Harshit Rana gets his man. And the field set has brought this shot out. Pervez, you were talking about how the third needs to be back. This time it was back. And that's why Mehran Mumtaz tried to drag it to the leg side. In the process, edged it to the keeper. Fast bowler's instincts, Sana. Mumtaz gone for 13. Pakistan 332 for 8.
Pakistan losing their 8th wicket. Brings in Sufyan Mukim at number 10, the wrist spinner. He will have a huge role in this pitch with his wrist spinners bowling into the pitch. Bowled really well in that semi-final against Sri Lanka. Picked up a couple of wickets. Very important wickets in the middle overs. These goods by Harshit Rana. Straight away for the batsman, the new one, digging it short and hitting that length. Absolutely, that's important. We'll be seeing more cutters, off cutters here, taking the ball away. This was also a bit wider. He's bowling to his field. And you keep seeing the aggression whenever there's India-Pakistan. Mehran Mumtaz will definitely come back when he's bowling with some aggression. He's been added to the Pakistan side. He played the last game against India but missed out against Sri Lanka. There's no harm in having a bit of a chirp, a bit of humour, as long as everything in the game and remains in the game. Bounce attempted by Harshit Rana, slowing it down. Interesting to see whether it was a slow ball bouncer. Doesn't look like digging it really short. And this is something that, seam up, very slow. This is something that the Pakistani two quicks, Arshad Iqbal and Mohammad Wasim Jr. got to keep an eye on. The best time to bat is with the new ball. If Pakistan can manage to bowl the first 10 overs quite in a low score, they will have a good chance. But being said that, the Indian batting top order is magnificent. They are in superb form and they will probably rely on their top order. And maybe Pakistan can use spinners from one end because they are playing extra spinners. They've got a left arm and Mehran Mumtaz, Sufyan Mukim, the wrist spinner, and two offies. Did he find the gap? No, just a single. And this is stat. At Arpindasa Stadium, team chasing the highest chase was last year in June, Sri Lanka, Australia. Game number 3 in the one day was 292. So India to win this game, they have to be a record-breaking chase. That's how tough it's going to be. Absolutely, and we saw in the middle the ball started spinning a bit also. It's not as easy a wicket to bat on, but credit to the Pakistan batters, the intent was always there. Even when the wickets were falling, they were going for runs. And that's what put India back on the back foot. Otherwise, at one point when Pakistan were 187 for 5, India was totally back in the game. Shifting of momentum in this game has been quite evident. First wicket, Pakistan well in control in the middle overs. India fighting back, and in the death overs as well. Pakistan back into the game and bossing at the moment. 48 gone, Pakistan 335 for 8. Avishka Fernando, top of the ladder, 255 in 4 games, and Yashdo, Sai Sudarshan, the two Indians, will have to be among the runs. They have to score big if India have any chance of winning this game. Both of these players, Tayyab Tahir, after the 100 he scored today, climbing up to the 4th position. Hangar Gekar coming around the wicket to the left hand at Sufyan Mukim. Third man is back finally. Was a full one just outside the off stump. Knocked away for a single too long on. Does the right thing. Sufyan Mukim brings Mohammad Wasim Jr. on strike. You know he loves to play these cameos. Pakistan, when Mohammad Haris lost the toss, he also wanted to bowl first, but sometimes the toss it's better to lose the toss sometimes, because he thought 280, 290 can be a good score, and Pakistan has really exceeded their own expectations here.
in your career, you had one of those moments where you think you go to the toss, I like to lose this. A lot of times, Pervez. I was captain for 8 years, a lot of times. Brilliant. Deep fine leg, deep mid wicket, long on for Mohammad Wasim Jr. Smashes it, mid off up. Oh, that's a massive stroke. A poor delivery again. Mid off up, outside the off-stump Yorker. It's not going to work. And that's the best part of Mohammad Wasim Jr.'s hitting. It's not only on the leg side. He can lift the ball up on that long off region with ease. I've seen him done time and again. Excellent, important runs, taking the match away from India maybe. Rubbing salt into the wound in these death overs. Extending off the arm of Mohammad Wasim Jr. Off you go, he says. Change of field again, mid-off drops back. And third man comes up. Interesting call, and Hannibal gives it wide. I think it may be a sensible thing to do because it's way outside the awesome, though Mohammad Wasim Jr. was going to his right. Good batting. Now he was looking at using the lap shot because the fine fielder is in, the square fielder is in. But it was too wide, almost off the pitch. Good decision from the umpire. Some exercises for Big Hannibal. Both the umpires had plenty of exercises today. 4s, 6s, wides, lots of energy in the field by both the teams. Slow ball this time, nicely bowled. This is exactly what the two seamers got to be doing much more. Slow ball, cutters into the pitch. It's hard to time the ball. Very well bowled, well disguised and well played as well. Mohammad Wasim was halfway through the shot. He wanted to swing it hard, but check shot at the end. Angar Baker, though the score line says 344 for 8. Scored some decent deliveries, just that on the day all the Indian bowlers have taken apart for some brilliant batting by the Pakistan A side. In a final 344 for 8. You lose the toss, being put into bat. A magnificent effort. Absolutely, no credit taken away from the Pakistan team. Yes, there are experienced players, but other teams had experienced players too. Afghanistan with 9, Sri Lanka with 9, Bangladesh with 8. So yes, experience matters, but you have to put that experience into action each day, every day. And what a day to put that experience in action for Pakistani. Nicely bowled again. A good point, you brought it up regarding international players in all the teams. Yeah, that's where the young Indian team, none of the players have played any international cricket and very new to the list A cricket. This is the experience, they'll learn. They've got all the attributes and skill levels to succeed. We all know when a young Indian player comes to the system, goes to the NCA, and then all of a sudden they become world champs. You've seen with many of the players present and past. Another slow delivery. This is brilliant. Very good bowling, and Pervez saying that it's still just halfway through the match. You don't know. We have seen India A chasing targets. All I'm saying is that yes, experience does matter, but what a day for Pakistan A to bring that experience to the fore. Now, India has won 3 games out of 4 chasing in this championship. The other side is Pakistan has won thrice defending. So it's all equal there. It's all about getting a good start. You never know. Cricket is a funny old game. A couple of batsmen get set. We may be into a brilliant game. Another slow delivery to end this 6th over. Pakistan A 344 for 8.
The hill country of Sri Lanka awaits the big one. Pakistan versus India up in Kandy. That's going to be a blockbuster coming up very soon. 2nd of September on a Saturday at Pallakale, which is Kandy, Sana. That's going to be a brilliant game. Absolutely. We have always seen how India and Pakistan games bring the best out of players. On the 2nd of September, that is, the first round, both the teams get through, which I'm pretty sure they do. They'll meet again in the second round at this very stadium, the R. Premadasa. This place is going to be electrifying with all the fans. Absolutely. So much cricket coming. Asia Cup, World Cup. Treat for the cricket lovers. Plenty of cricket coming for Sri Lanka as well. LPL just going to start as soon as Pakistan tour of Sri Lanka ends with the test match. Then the Asia Cup, then the World Cup. This time another scoop over, not over, trying to go over, but almost being caught at fine leg. I feel Mohammad Wasim Jr. will do well to use his strength and probably go over long on mid-wicket area. Yes, especially when the bowlers are using the slower ones more. They understand Mohammad Wasim Jr. enjoys the pace. Both the fast bowlers, Harshit Rana, Hangagekar, have been showing some skill with the slower deliveries. The wrong option taken by Mohammad Wasim Jr. Rather try to be cute. I think he should be using his power. Saw in the previous game as well against Sri Lanka with a couple of sixes he scored. Even today, he's better off for targeting the front boundary, which is long on, long off, mid-wicket. Probably Sufyan Mukim, who's not so strong hitter, could use those paddle strokes. Mohammad Wasim Jr. before even the ball was delivered, he was off. And Sufyan Mukim is just wanting to give strike back to Mohammad Wasim Jr. Arshad Iqbal, who's still in the dugout, can definitely rocks. इंतजार किस बात का है? Let's rock. आज बाकी यूट्यूब में थोड़े व्यूज पता क्यों आ रहे हैं मैं काम दसा अपना लिंक कॉपी कर ते विच छुट्टी जाए इन्हें कमेंट आ गई काम तो लास्ट ठीक है फर्क पड़ेगा but that's why Mohammad Wasim Jr. he denied that singer because he wants to play the last delivery, go for the maximum there. So much activity happening and everyone being entertained. Just to get some breath back, isn't it? Getting too excited over here. Now the final ball coming up. 1 for 49 of 5.5 overs. Both the fast bowlers have been taken to the cleaners. The spinners have well. Pakistan have been brilliant today. Final ball coming up. Another Yorker flicks it towards square leg.
Wasim Jr. maybe coming back for the second. And makes it easier. And that is a good score. 352 of 50 overs. What an innings from the Pakistan A batters. They've really put a big total in the final against India A. 353 runs required to win this final. The defending champions making sure that they are going to make India work if they have to win the title. The defending champions playing like champions. In the final, after being put into bed, they have gone on a leather hunt. With concerned faces in the Indian dugout, I'm pretty sure they got enough good players to at least give a good fight. But I think don't write this Indian A team off. Yes, experience-wise, they're not so experienced. But if they get the act right, if a couple of batsmen gets together, you never know. As a cricket, it's a funny old game. Absolutely, there's talent in both teams, and this has been the story for Pakistan A. Excellent start at the top. Saim Ayub with 59 for Sabzada Farhan 65, Umair bin Yusuf 35, but the star of the day, Tayyib Tahir, 108 of 71 deliveries when wickets were falling. The century stand you spoke about, that was the difference. Two of them, in fact. The opening batsmen, Saim and Farhan, of 108 deliveries, exactly 121, and Tahir and Mubassir were the game changer. 126 in a very quick time. The highlights of the innings so far. Pakistan were put into bat, and from the word go, the first over went for 13 runs. It was Saim Ayub against Harshit Rana, and then Sabzada Farhan came to the party. All the bad deliveries were punished. The spinners were on, the fast bowlers, yes, there were chances, but Pakistan had the first say in the game. Excellent sweeps, shots down the ground, over covers, inside out, and the spinners, the attack was taken to the spinners. Everyone was taken to the cleaners. Saim Ayub opening the batting, making sure that the foundation was laid. There was the Farhan, the other opening batsman, did really well. Saim Ayub, when he came down the track, boy, punch. That was his dismissive bat to the pad and neatly taken by Dhruv Jurel, the wicket keeper. Umar bin Yusuf started quite steadily. Farhan was going everything unlike this happened. An unfortunate slip made sure that he was run out. Then it was Tayyib Tahir as well as Umar bin Yusuf taken the spinners into the winners. And then Umair bin Yusuf handing one back to the bowler, and Qasim Akram, the first delivery he faced, goes to the deep mid-wicket fielder. There were a bit of chances there, and Mohammad Haris gone with an arm ball. This is the time where India A came back into the game, but it was Tayyib Tahir and the fireworks that really put Pakistan back into the driving seat. They were driving seat ever since Tayyib Tahir was striking it so well. It's not only about power strokes, but some guile and having the presence of mind about the field where exactly it is, and when he comes down the track, every time it's been a clean hit. That brings up the first 100 for him. And he was very well supported by Mubassir Khan, who after Tayyib Tahir went like in this fashion, went on to accelerating the scoreboard. But it didn't last for long as Mubassir Khan departs, and then Mehran Mumtaz as well. But it was Mohammad Wasim Jr. again with the fireworks. 17 of last 10 deliveries he faced. Good score on the board for Pakistan, 352. These are the high scores. Avishka Fernando sitting up the ladder. Yashdul, Sai Sudarshan, Tayyib Tahir, all playing this game. And we got Shamim Chowdhury downstairs. Let's see who has got. I've got the Centurion Tayyib Tahir alongside me. You came in at a very difficult time. Well, when you came in, it's 146 for 2. But then 3 wickets falling within 4 runs. Must have been difficult to work your way out of that little position that your team were in then. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I am blessed today
that Allah blessed me because it was tough when I went inside because wicket wasn't that easy. Because ball was a bit old at that time, we can't hit the ball. So with the new ball was coming, but after like old ball, it was hard to play, and we lost 2-3 wickets back to back. And I spoke to my partner that we will take this a bit long, then we will charge them. So obviously every team needs momentum. Indeed, that is the period when you are under pressure and you have to be very selective with your shots. You cannot, even if you feel that you should go for runs, you just re-stabilize the innings. That's what you did with Mubassir in particular. Yeah, obviously, like when we lost wickets, I spoke to a partner. I goes like, if we get very bad ball, then we will hit it. Otherwise, we will take it long, take it one. We will rotate runs and we'll take it long. But once you started hitting, I mean, we're seeing it. You've been hitting all around the ground. You're so very comfortable. You're trusting the wicket to play your shots. Yeah, it was like when I went inside, it was hard at that time. But slowly, I was getting like, I goes like, I can hit the ball now. And you needed the support from your partner. Yeah, even though he spotted me like. Yeah, absolutely. Very good. It was wonderful to watch. You've done the hard job. You've put the runs on the board. Thank you very much. And you feel your bowlers are going to do it for you? Sorry? When you got back and you try to restrict the opposition. Yeah, obviously, like we lost first game against them, so it is good. Like it is final, so we will stick them under 200. Thank you for talking to us. Best of luck to you for the rest of the game. Thank you. Thank you, Shamim. And that's the story of the bowling of India A. 1 wicket for Harshit Rana. In the beginning, both the seamers were expensive, but couple of wickets for Hangagekar at the end. He bowled really well. Ran Parag with couple of wickets. And the final, that's the story. Confirmation, India needs 353 runs in 50 overs to win the title. पता नहीं गाना किसी को किस हिसाब का बनता है कि गुजरता आवे
India A, Pakistan A in the ACC Men's Emerging Teams Asia Cup. The two batters of India got their work cut out. Sai Sudarshan, Abhishek Sharma need to score big, and that's why Pakistan A has been successful. 352 for 8 with plenty of contributions. And in the bowling lineup, plenty of bowlers going for plenty of runs, but in the end, the two bowlers picking up 2 wickets each, and 352 is what Pakistan made, and that's what the India A got to chase down. 353 runs in 50 overs. It's been a leather hunt so far. Pitch is really good, and these two batters we've seen in this competition as well as before how good they can be. They just need a good start, and if they do, they will go ahead. As I say, a very good evening to Shamim Chowdhury. Good evening, Maha. That's Sai Sudarshan, and a lot will depend. The average is good. He's got to really batten down early on alongside his partner, who, as you mentioned, have got their work cut out. There will be scoreboard pressure, understandably, with that mammoth target to eclipse. Abhishek Sharma, 43rd match. Decent average, 1298 runs. But they've got to really put their heads down, be very selective with their shot making. They can trust the wicket, as we've seen the Pakistani batters do that. They've got to take a leaf out of the approach of the Pakistani batters to try and get to this target. Control aggression is what India A openers got to do. I'm pretty sure the class of these two left-handers will be really good in a very good batting pitch. Just had a look in the middle innings, and there's absolutely nothing to speak about when it comes to the pitch. That bound on screen, the captain will have their cut out. Plenty of bowling options for Pakistan. Remember, they're brought in that left-arm spinner Mehran Mumtaz into the attack, dropped Ahmad Butt for this game, the seam bowling all-rounder. Just like India, Pakistan has got plenty of spin options. Arshad Iqbal all ready for the first ball of the chase. Down the leg side, some swing early on. Swing but not controlled. Fortunately, a loosener, and you can understand that. With a pace bowler just coming in to bowl his first ball, gets a little overexcited in trying to put some shoulder into it, and in the process loses his line. I'm sure he's going to correct that very quickly. Just like how India started with their first innings, Harshit Rana on the first ball was a wide. Similarly, Arshad Iqbal down the leg side. But encouragingly, for the big lanky fast bowler, there was some swing. If he gets it right, I tell you what, both these left-handers will be keeping a close eye. Just like that, but no swing. I think that is what is going to be in the mind of the batters. You saw the first ball having a little bit of shape, then this one going a little straighter. Most runs in the ACC Men's Emerging Teams Asia Cup, 255 by Avishka Fernando, 195 by the skipper of India, Yashdul, and Sai Sudarshan has got the runs behind him to give him the confidence to go for a big innings in this crucial final. Sai Sudarshan and Yashdul, if they surpass Avishka Fernando, I think India will be in a firm seat chasing the mammoth score down. Slightly shorter, this is what India needs to do. There's boundaries hard to come by, get the singles. Whenever you can get your innings off and running, it takes a lot of the butterflies in your stomachs away, because it's always important that you get off to a good start. He's the second youngest player to score a 50 in an IPL final. Sai Sudarshan, 610 runs. What about that average? 76.3 in the previous List A tournament. IPL 2023, 362 runs. Had a very good average. A brilliant player, playing for the Tamil Nadu state. Saw him first when I was part of the Tamil Nadu Premier League. Played in my team like a Kowai Kings. He was superb. And also the back of a length delivery, always
early on in innings is going to put the seed of doubt in the batter's mind whether to go forward or back. If you can put it in line, that just reduces the chances of scoring. So keep it tight, keep the pressure on the batters, wait for them to make a mistake. Especially from a 5-4 against Sri Lanka in the semi-final. In the day game, bowled really well with pace, with bounce, with aggression. And he will enjoy these conditions, bowling under lights. Again, as you said, hitting back of the length, wicket to wicket, no wicket at all. That's very good. As a pace bowler, you can get a little overexcited, but you know the nature of the wicket. You know it's in favor of the batting unit. So you've got to be a little defensive in terms of not really trying to bowl hard and bowl fast and try to get the batter in all sorts of trouble. It's just containment. That is the name of the game at the moment. Control aggression by the two batters as well as the fast bowlers is what the situation demands. As you said, it's a good batting pitch. Don't try to be a hero. Don't try to be too quick. Hit those guns just like that. Abhishek Sharma off the mark with a single. Ample time, as we saw in the Pakistan innings, to shift gears and really go quick at the end. This is Iqbal in that first semi-final against Sri Lanka. A 5 for 37. Which you're mentioning. Batters try to take him on occasions and they've caught in the deep. Intelligent bowling, didn't time that at all. So he confuses the batters with his pace just like that. Real pacey one. Beautifully shot. Oh, was it forward all over it, got some hand. The fit fast and certainly saved 2 runs. That was a beautiful shot by Sai Sudarshan. Just for 2 runs. First over gone, 5 for no loss. चलो ध्यान आपकी जगह पे आया कर जल्दी बैठ जाओ मेहर में बैठ जाओ छोड़ो उसको. India and Pakistan before has won this cup once each. Who's going to be today? Previous winner Pakistan, the defending champions, played like champions today. But India, they got a formidable batting lineup. Qasim Akram, as expected with the new ball with 2 left-handers, bringing in the off-spinner. I think it's a very good choice by skipper Mohammad Haris. The fielders outside the circle are at deep mid-wicket and long off. Slip in place. Short extra cover point. Sweeper who's in the circle. Short third man. 6-3 field. 6 in the offside. Firing down the leg side. It will be a leg by. Well, both the bowlers starting off with balls down the leg side. That's going to be signalled a leg by, as you said. Just gives the captain the luxury with that mammoth total that they've posted to try things out, and even the placement of the field. You can just afford to be a little more attacking now with the slip in position, bringing the offie in. 3 within, 4 almost within the 30-yard circle on the offside. Sensible call to bring the off-spin in, especially considering the fact that Mohammad Wasim Jr. is a very good bowler with the older ball. And with the new ball, he seemed to hit the deck hard. And Sudarshan and Abhishek in the previous game against Pakistan was very aggressive against Wasim Jr. This makes a lot of sense, bringing the off-spinner with 2 left-handers in. Qasim Akram will be trying to redeem himself. Really played irresponsible shot first ball he faced with the bat. Gave the opportunity for a hat-trick to the bowling unit. But now he'll just feel that needs to do his bit with the ball. इसको छोड़ दे. Good bowling. Slightly fuller this time, going with the angle. The boundary options are over extra cover the inside out. One of the nicest stroke in the cricketing manual. Or go a slog sweep or over mid-on.
Those are the boundary options. How I see. Nicely going into the pitch and single as well. It's a question of when you pick the ball to hit, because sooner than later that little required run rate is going to keep on bothering you if you don't get a steady period where you milk the runs and get the rotation of the strike going. That's where the first 10 over score is going to be very important. If India could muster something close to 70, 75, they are definitely in the game. 2 gone, 10 for no loss. Plenty of batting to follow for India. King Jose at number 3, skipper Yashdul, Ishan Sindhu, Riyan Parag, Dhruv Jurel, the wicketkeeper. Everyone can bat. What they need is a good start. Bowling change from the far end. Just 1 over from Arshad Iqbal. Second off spinner in the team. Mubassir Khan into the attack. Horses for courses. 2 left-handers, 2 off spinners. Here's the call. And comes back to second run. This is good aggressive running. This is what they need, the running between the wickets if there are no boundaries coming along. Just the point I was making, is rotation of the strikes, so very important in the early part of the innings. This is how they did it. Just ambled across initially, realization it was deep enough, then suddenly put on the skates and hurried through. Nice shot, nicely played. That was a brilliant shot. Abhishek Sharma was not true to the stroke too early. Waited for it and placed it perfectly. Left-handers are so elegant. Just that punch didn't really follow through with the bat, but the timing and the placement, so very nice. Streaking away to the boundary. That'll raise his spirits, give him confidence. Man in form, Abhishek Sharma. The way he's timing the ball, slight misfield. And very close. Mohammad Haris, the wicket keeper, is very confident. As they say, never run on misfield. Is that close? The Pakistani set up, think they have got the man. That'll be tragic. They seem to be going along smoothly. Just that error you make in trying to go for a run on a misfield. The recovery. Have a look at this. And it's not direct, it's picked up now. Oh, I think he's okay. Seems to have just slid his bat in. What commitment by Sai Sudarshan. Take a look at that for a dive. Talking about putting a price on your wicket. This is a brilliant dive. Any youngster watching this coverage, that's how you value a wicket. You're throwing yourself in an all-important game. Brilliant. Little things done right. Ground is battered, grounded, as well as the gloves are in the ground as well. Brilliant. And the decision pending will soon tell us that the batter should be safe, is not out. Third umpire Moshad Ali Khan from Bangladesh making the decision, but what a good effort, and that's what you just mentioned. The diving, last minute dive saved him. Putting a value in your wicket, isn't it? When you play this level of cricket, the commitment, the little things, the basic is what is important. The rest of it will take care of itself. Beautiful shot by Abhishek Sharma, just couldn't get the gap. Slight misfield, and Sai Sudarshan went like a flash and a big dive to save himself. He is lucky it was not a direct throw, he'd have been gone. With his good effort in recovery from the fielder and throwing it very quickly. Sai Sudarshan on 5, a wicket.
the central hills of Sri Lanka. I'm pretty sure it's going to be a jam-packed stadium. People will be travelling down from abroad, from Colombo to Kandy. It's going to be one heck of a match, but I don't think anyone in the Asia, whether in the world, will miss out that coverage. Oh, some turn. This is what Qais Akram is looking for. 1 or 2 balls to grip. Yeah, the ball's still new. You can't really expect it to turn square. So you can hope for those little perches off the track, just like the hint of turn, enough to induce the edge. To create that doubt. Did he get some hand to it? Abhishek Sharma, did he leave the crease? Don't think Lyndon Hannibal, the umpire, is interested. A nice shot. It deserved a boundary for sure. Unfortunately for Sai Sudarshan. So important to play straight, not miss straight. You can't be too good. I think he might have just got a finger to it. Slight hesitation, but no damage done in the end. 4 overs gone, 30 for no loss. That's the game the entire world is waiting for. 2nd of September, live from Kandy. The greatest rivalry, Pakistan against India. The beautiful city of Kandy, Pallakele International Stadium. The capacity close to 25,000. That will be jam-packed. Yeah, it's a beautiful stadium, just as it is here at the Premadasa. It's a very mouth-watering prospect, isn't it? You're mentioning the fact that it can happen maybe 3 times if the results go the way people want it to. I mean, the expectation will be that they'll get to see more and more India-Pakistan games amongst the big boys. And I'm sure Sri Lanka will have a say about that, so will Bangladesh. Absolutely. Plenty of batting to come for India. Up to number 8 or number 9. Lots of batting. Just need a foundation to be laid with the top order. So far, Sudarshan Abhishek has started decently well. All what they need, in my own opinion, Shamim, 10 overs, 70 to 75 runs without any wicket. That will put enough doubt on the Pakistani side as well. Arshad Iqbal back into the attack, slip in place. Just a 1 over from the spinner. He's much better, hitting the good length areas. Good length, short of length, or back of length now. That is not good at all. Rather lethargic, and it's given them 4 extra runs. That is not on. You want to be tight with your fielding. You want to be accurate. And these overthrows might cost it. Gives that little bit of respite to the batters. Getting the runs easily without too much effort. Over enthusiastic field at cow point. There was no one backing. And the batsman has made it pretty easily. And after he throws, he said, oh, no, nobody. I think that is where the game awareness comes handy. The fielder at deep fine leg had no chance. You know, just hang on to the ball. You should always realize if there are any backups. Beautifully played. Looks very good. Sai Sudarshan is moving very well. He is looking very, very fluent in the field, very languid. Is the manner in which he's getting the meat of the bat. Nepal came to suffer from the bat of Abhishek Sharma. 87 of 69 balls. Learning curve for the young men from Nepal. They're taken to task whenever there was a short pitch ball, and those covered drives that he plays forward of on the front foot or the back foot, and that's the slog sweep employed to perfection. Both these players looks very elegant, front foot or back foot. They look fearless, playing the ball on its merit, not taking unnecessary risk. Those are the hallmark of good opening players, and these two have certainly done that right through this tournament. Doing a good job
except for one instance when there was a little bit of doubt. I think that even the running between the wickets has been good. That occasion when there was a misfield and they ran, they just about made it. Nicely getting the scoreboard to tick over. Outside edge, not carried. It's a single to third man. You spoke about creating doubt. I think that's what Pakistani bowlers should be doing. The pitch is good, conditions ideal for batting. Create enough doubt and get the Indian players play out of their skin rather than going through the motions and giving them freebies. Indeed, there will be periods of play where the batters are going to be content to just milk the runs, frustrate the bowlers, and in this kind of a situation, it can get a little bit, especially if you're a pace bowler, and not getting the support extraction of the wicket that you are trying to get. That gets a little frustrating. Shot. What a shot. Fielder did well to get some finger, but I'm telling you, that was timed so well, still to convey the boundary. Probably the shot of the day. So far, the way he's going, I suspect he's going to produce some more. But look at this. Short arm punch. Cracking. Just rolls the wrist over. Enough. The power of the bat, the speed of the bat. Just beyond the fielder. Possibly got a finger to it. Wrist work at its best. The fielder at square leg could have done much better. He couldn't get bent down in time. As I said, that was a shot and a half. And Saeem Ayub was the guilty party. Drop downs to a deep square leg. The slip fielder vanishes, goes to short mid wicket. Plenty of activities in the field. India started well so far in the chase. Probably looked like a slow ball, and that deep square leg field had no chance. This is very good by Sai Sudarshan. Ends the over with a boundary. 5 gone, 45 for no loss. The Asia Cup 2023, 30th August when it all starts in Multan. Pakistan versus Nepal. Bangladesh play Sri Lanka at Kandy. The third match, Pakistan-India, that big match we're talking about. Bangladesh again go to Lahore. And just have another look at that. And Pakistan and Sri Lanka, the two venues used for the Asia Cup. Spoke about Bangladesh-Sri Lanka game. Just like now, the rivalry has started in the commentary box. Shamim? No rivalry here, mate. We're friends. You're trying to create something that's not true. How can someone have a rival with you? You're such a lovely person. Just have some love to you. Shamim always. Run out of chance. A direct hit would have been close. That was almost a suicidal run, but unfortunately for Pakistan, direct hit was needed and couldn't get it. Yeah, two occasions when they seem to be getting a wicket, and both occasions due to the effort in the field. No direct hits, and if there were, look at this, just you're short. Two occasions, close calls. Tayyib Tahir, the fielder, he scored 100. It's his day, missed out by a whisker. Slightly quicker, vacant mid-wicket area, 2 is the call. Just a single. This is very good. Sai Sudarshan being really busy. The bound is not to be there, gets a single. You can be overawed by the scoreboard pressure with the amount of runs you're looking at, but these two have made it look so very simple. Just not taking any kind of risk, playing the ball to its merit. And Pakistan were 42 without loss, so India 5 runs ahead at this stage. They can just compare that and feel that they're well on the way. Just need to keep their cool and be a little selective.
in definitely better batting conditions. Firing down the leg side. Wicketkeeper Harris had no chance, and 5 runs it is. And brings up the 50 for India. Now they love the way, the manner in which they got to the 50. Just drifting down the leg side. You can feel Qasim Akram under a bit of pressure, just trying to spin the ball in. Instead, it's going down the leg side, way down the leg side. Just got to keep the cool, the Pakistan attack. At the moment, I feel like they're clumsy in the field and look panicked. And the two Indian openers are all at ease, going through the motions, playing the ball on its merit without any risk. Come down the track and over extra cover. This is good batting. Ends the 6th over with a boundary. 6 gone, 56 for no loss. Pakistan put up a huge score of 352 in their 50 overs. And Tahir got a brilliant 100 for them. Farhan got 65. Saim got 59. 2 wickets each for Angargekar and Parag. And a strong reply from India, 56 without loss. Tall shot of the fielder. I got Sana Mir with me in the com box. Good evening, Sana. Good evening, WE. What a contest we are having. Till now, India A with the counter punt. Very good delivery from Arshad Iqbal. Surprised the batter. Surprised by the pace there on that occasion. Sai Sudarshan. Current run rate is 9.08. This is a stiff chase, no doubt. One of the ways to approach this chase is to break it down into 3 parts. First part of 15 overs and then the second part of 15. Target 100 runs each in these phases. And then the last 20 overs, look at the remaining 150 odd runs. And when you see India A batting, it does feel like that they have done that. They have looked at ease, didn't seem to overhit the ball, just timed it well, aided with some not so good fielding from Pakistan, but overall, right on the money. Yes, that's one thing we've seen. Pakistan can be tardy on the field, and when the pressure is built on them towards the middle of the game, they can succumb. Nicely bowled. And what Sai Sudarshan does really well, he played this delivery very well also, but he covers the stumps. He takes the middle stump guard and almost covers the stumps, and that's why you have to be very accurate as a bowler to not give him any room. Excellent delivery, excellent bouncer from Arshad Iqbal. Especially the length, because he's already covered the stumps. Anything short of length, he whips it from outside the off stump towards mid-wicket. We saw him do that in the previous over too. Was it the leg? The keeper thinks so, but the umpire is keen on seeing where the ball was. He was keen to see if the ball had touched the helmet. Mohammad Haris has to cool himself down. He gets really excited about all these celebrations, and in the process hopefully has not given 5 runs away. Just survived by a whisker. It rolled very close to the helmet. Oh, hardly anything there. As a captain, he's got to try and ensure he keeps his wits about himself and doesn't get too excited, because you can so easily get distracted if you get excited yourself. Whipped away straight to the fielder.
excellent bowling from Arshad Iqbal, understanding how Sai Sudarshan is covering the stumps and giving very little area for Arshad Iqbal to operate with the line and the length. This over has been really good. 5 dots. Yeah, that's the line you need to bowl at him. You can't provide him with, because he's playing shots of the same line on both sides of the wicket. He's crunching it through the offside and then he's also whipping it towards mid-wicket. These two left-handers have been in good form for India A. And talking about the chase and the approach from India A, the middle order batters are all good runners between the wickets. This is a huge outfield. So there will be a lot of opportunities for twos. And the fielding will play a huge role in this match. Taken on the full and he will get a boundary. Not really timed well enough, but there's enough bat on it. Boundary to end the over. India A 60 without loss. Change bowler, right arm round to you. Chalo, back here, Comprehensive passage to the final for the India A side. Comfortable victories in the earlier games. They were tested a bit by Bangladesh in the semi-final, but they crossed the hurdle. Will they cross this one here at the Premadasa in the final? Fresh over from the off spinner. Talking about the outfield, you will see it's really a big field. 70 meters all round, and this was the last ball of the previous over. And that's what I'm saying. He creates that line and length, covered the stumps, made Arshad Iqbal bowl that Yorker, attempted Yorker. ओवर के लिए इनको खेल दिया है कवर्स के में एक और डॉट डिलीवरी डॉट के साथ अब स्कोर है 61 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 7 ओवर और 3 दिनों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर जो अगर कोई दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है तो आपको बताते चलो कि वहां पर बारिश ही बारिश है भाई, बारिश ही बारिश है और मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा टाइम जो है वो बचा हुआ है। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या बनता है। What? 61 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे अब इंडिया का स्कोर, पाकिस्तान का स्कोर 49 था इसी स्टेज के ऊपर। मुबशर जो है वो बॉलिंग करते हुए 4 गेंदें अभी तक करवा चुके हैं मुबशर, जिनके ओवर की रहेगी अब 5वीं गेंद। इस गेंद को खेला है मिड ऑफ के एरिया में, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा। 700 लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5200-5400 के करीब दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइबर्स की अगर बात की जाए तो 6,78,915 हो चुके हैं। अब अगर सब्सक्राइबर्स के टारगेट को हम मिस कर रहे हैं, वो अगर होता तो बहुत ही पेस के साथ बढ़ते हैं। ओवर्स के एरिया में गया क्या है इस गेम को ड्राइव, बहुत ही उम्दा टाइमिंग, लेकिन कोई भी रन नहीं आया इस गेम के ऊपर। 62 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे 8 के बाद। 8 ओवर्स के बाद 62 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 252 गेंदें और 291 रन की जरूरत है अब टीम इंडिया को। 8 ओवर्स के अंदर 62 रन बना दिए उन्होंने। 28 के स्कोर पर साई सुदर्शन और क्या लेके अभिषेक ने 27 बनाए में 22 गेंदों का किया हुआ है अब तक उन्होंने सामना। यहाँ पर अब क्या लगता है कि पावर प्ले के अंदर टीम इंडिया का स्कोर जो
क्योंकि 2 ही फास्ट बॉलर हैं तो शायद ये लास्ट में जाकर उनकी ज़रूरत पेश आए। और ये वाला जो स्पेल है ये भी थोड़ा शॉर्ट स्पेल ही रहने वाला है अर्शद इकबाल का, क्योंकि पाकिस्तान के पास तीसरा कोई भी फास्ट बॉलर अभी मौजूद नहीं है आज के इस मुकाबले। दे आर प्लेइंग एन एक्स्ट्रा स्पिन। 64 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इसके बाद जॉस को आना है बैटिंग करने के लिए, दुल को आना है बैटिंग करने के लिए और निशांत सिंधु को भी आना है बैटिंग करने के लिए। तो सभी का स्ट्राइक रेट 90 के आसपास का। जॉस का स्ट्राइक रेट 76 का है। और की है अगली गेंद, बड़ा शॉट, टॉप एज, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। हारिस की तरफ से एक अच्छा कैच लिया गया है। यहाँ पर अब आउट हो चुके हैं ये प्लेयर, नाम है जिनका बीसाई सिद्धार्थसन। सिद्धार्थसन जो है वो दोस्तों आउट होते हुए पाकिस्तान के बॉलर अर्शद इकबाल ने। और यहाँ पर नो बॉल को चेक किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नो बॉल। मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे इस चीज़ की फीलिंग आ रही थी कि ये नो बॉल हो सकती है और लग यूँ रहा है कि नो बॉल को चेक किया जाएगा। जी बिल्कुल, साई सिद्धार्थसन जो है वो दोस्तों अभी भी खड़े हैं और नो बॉल को चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर नो बॉल लग रही है दोस्तों ये गेंद। किस्मत भी जब आपके साथ ना हो तो ऐसा ही होता है। द फुट इज ऑन द लाइन और लाइन बिलोंग्स टू अंपायर और अंपायर की तरफ से जो है वो अब देखते हैं कि क्या डिसीजन दिया जाता है। इट्स अ नो बॉल दोस्तों। जी बिल्कुल, पहली नज़र में ये देखने से लग रहा है कि ये गेंद नो बॉल है। जी हाँ दोस्तों, नो बॉल। और अब देखते हैं कि जी बिल्कुल दोस्तों नो बॉल है ये गेंद, मुझे तो यही लग रहा है। और अब अंपायर को चेक करने पर जो है वो अंपायर जो है वो सही फैसला देंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अब नो बॉल लग रही है। लेकिन पहले स्टेप में अगर देखा जाए यहाँ पे फुट लैंड किया है, फुट जहाँ पे लैंड किया है वो ऑनलाइन है। और अब लेकिन अगले फ्रेम्स को अगर देखा जाए तो फिर फुट जो है वो स्लाइड कर जाता है, आगे निकल जाता है गेंद से, तो इसलिए वो फिर नो बॉल हो सकती है। यार अब देखते हैं कि बनता है क्या। और नो बॉल को चेक किया जा रहा है एंड इट्स अ नो बॉल। सॉरी, इट्स नॉट अ नो बॉल। इट्स नॉट अ नो बॉल और आउट हो चुके हैं प्लेयर, क्योंकि जब फुट लैंड किया था तो तब वो ऑनलाइन था। और जाहिर सी बात है, पैर जब पहली जगह पे लैंड करता है तो वही जो है वो समझी जाती है अब लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसलिए आउट हो चुके हैं अब साई सिद्धार्थसन। जाहिर सी बात है, बाद में तो पैर जो है वो स्लिप हो जाता है और पहले के पैर स्लिप होने के बाद तो फिर वो जाहिर सी बात है नो बॉल हो ही सकती है। लेकिन अब जो है वो दोस्तों अभी भी साई सिद्धार्थसन जो है वो अपनी क्रीज के अभी भी जो है वो दोस्तों ग्राउंड से बाहर नहीं गए हैं। ये अभी भी ग्राउंड से बाहर नहीं गए हैं ये। और यहाँ पर भी जो है वो दोस्तों बाहर नहीं गए हैं। एंड थर्ड अंपायर की तरफ से कोई कॉल आ रही है। थर्ड अंपायर की तरफ से जो है वो दोस्तों कोई कॉल आ रही है। देखते हैं कि अब बनता है क्या। जी बिल्कुल दोस्तों, ये थोड़े से ड्रामेटिक सीन्स यहाँ पर चलते हुए, बहुत ही ड्रामेटिक सीन्स जो है वो दोस्तों चलते हुए यहाँ पर अब जो है वो पहले के प्लेयर को आउट दिया गया, लेकिन अभी तक प्लेयर बाहर नहीं गए। और फाइनली अब प्लेयर जो है वो दोस्तों बाहर जाते हुए, क्योंकि जो फोर्थ अंपायर थे उन्होंने रोक के रखा हुआ था उस प्लेयर को कि वो बाहर ना जाएं। और अब जो है वो दोस्तों फाइनली बाहर जाते हुए 64 पे पहली विकेट गिर गई है और जॉज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अब आउट है। जी बिल्कुल आउट था, लेकिन अंपायर ने जो है वो पता नहीं क्यों उनको जो है वो रोक के रखा हुआ था काफ़ी देर के लिए। और फाइनली जो है वो अंपायर ने, जो थर्ड अंपायर थे, फोर्थ अंपायर थे, वो आए और आकर उन्होंने रोका हुआ था। रोकने के बाद जो है वो अभी कहा कि भाई आ जाओ आप। तो दूसरी तरफ रेन का डिले है एशेज़ के अंदर, आपको ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। एशेज़ के अंदर अभी बारिश है। विकेट गिरते हुए पहली, और अब जॉस जो है वो दोस्तों आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। लेट्स सी हाउ ही विल बैट। अर्शद इकबाल पाकिस्तान की टीम को दिलाते हुए पहली सफलता। राइट आर्म ओवर द विकेट अर्शद की ये गेंद, इस गेंद को बैकवर्ड पर जाकर थर्ड मैन के एरिया में खेलते हुए सिंगल को जो है वो पूरा कर लिया गया। सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कोर है 65 के नुकसान पे। तो विकेट वाला ओवर आते हुए टीम पाकिस्तान के लिए 3 रन जो है वो इस ओवर के अंदर बने हुए हैं अभी तक।
800 लाइक्स भी कर दिए हुए हैं आपने अभी तक। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1000 कर दीजिएगा। अंगूठे का ऊपर की तरफ निशान जो है आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। गाइस अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब विकेट गिर गई है और जो है वो देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या रहती है। हमें चाहिए अब 42 सब्सक्राइबर 6,79,000 तक जाने के लिए, सिर्फ 42। 65 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 8 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। यहाँ पर ओवर की रहेगी अगली गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का अभिषेक। 5वीं गेंद है इस ओवर की। बॉलर आए गेंद किया, ये गेंद जो कि शॉर्ट पिच, इस गेंद को बैटर ने लीव किया और लीव करते हुए जाने दिया विकेट कीपर के पास डॉट के साथ। 65 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 8 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। अटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को लीव करते हुए जाने दिया विकेट। आई सेड 8 ओवर के अंदर विकेट आएगा और ऐसा ही 9th ओवर के अंदर विकेट आया। जी बिल्कुल, पल्लवी कृष्णा का ये कहना है कि उनकी प्रेडिक्शन जो है वो 90% जो है वो 99% सही हुई है। जी बिल्कुल, पल्लवी कृष्णा प्रसाद सही बोला सर, आपकी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही रही है। अभिषेक जो है वो 28 के स्कोर पे 24 गेंदों का किया हुआ इन्होंने सामना। यहाँ पर जॉस ने 1 रन बनाया हुआ है और की अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है कवर्स के एरिया में। कोई भी रन जो है वो लेने का मौका मौजूद नहीं है डॉट के साथ। और 65 है के नुकसान पे। डोंट यूज बैड लैंग्वेज इन लाइव चैट, ज़रा ख्याल रखिएगा मॉड्स लाइव चैट का। आज ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लाइव चैट के अंदर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल होने की, तो आप इसका ख्याल जो है लाजमी तौर पे रखिएगा। स्कोर अब 65 है के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर लंबी बारिश जो कि अब चलते हुए लगातार, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो मैच शायद ना हो पाए क्योंकि 3.5 घंटे का खेल अब ज़ाया हो चुका है और 3.5 घंटे ही अगर खेल और ना हो पाया तो यकीनन उस मैच के रिज़ल्ट यानी कि मैच को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया जा सकता है। तो 65 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 9 के बाद। पाकिस्तान की टीम के पावर प्ले के बाद 69 रन थे और टीम इंडिया का स्कोर अब 65 है 1 के नुकसान पे। तो बॉलिंग में तब्दीली करते हुए अब बॉलिंग में लाया गया है मेहरान मुमताज़ को। मेहरान मुमताज़ लिस्ट कैरियर में इन्होंने 22 मैचेस के अंदर 23 विकेटों को अपने नाम किया हुआ है और हर ओवर के अंदर 5.25 रन देने की मतलब दे देते हैं ये। तो अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं दोस्तों ये। लेट्स सी हाउ ही विल बॉल। यहाँ पर उनके ओवर की ये पहली गेंद, लेफ्ट आर्म ये बॉलर है, इस गेंद को मिड ऑफ के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा कर लिया गया है। इजी पिकिंग्स फॉर टीम इंडिया हेयर, सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कोर 66 है 1 के नुकसान पे 9 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। पावर प्ले के बाद ये दोनों ही टीम्स जो हैं वो लगभग स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर की बुनियाद पर लगभग जो है वो हमें बराबरी की सतह पर ही दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट पिच बॉलिंग ने साई सिद्धार्थन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग किया और शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर ही वो आउट हुए। 66 है स्कोर 1 के नुकसान पे। यहाँ पर अब देखा जाए तो 66 है स्कोर 1 के नुकसान पे टीम इंडिया। 9 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 7 का, करंट रन रेट भी लगभग 7 के आसपास का ही है। यहाँ पर और की अगली गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए 1 रन को बआसानी पूरा कर लिया इन दोनों ही बैटर्स ने। बहुत ही उम्दा रन विकेट सिंगल के इजाफे के साथ स्कोर 67 है 1 के नुकसान पे। अब क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, इस हवाले से दीजिएगा आप सभी दोस्तों में जल्द से जल्द बता। 67 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 9.2 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। एंड ACC इमर्जिंग एशिया कप का ये जो फाइनल मुकाबला है ये पूरी आबोताब के साथ अब आगे बढ़ते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जॉस ने इस गेंद को ड्राइव करते हुए कवर्स के एरिया में खेला है और एक्स्ट्रा कवर ने इस दफ़ा अच्छी फील्डिंग की। गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद आई है अब वापस और 67 है 1 के नुकसान पे। अब $67 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 9 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। विच टीम इज गोइंग टू विन दिस मैच, इस हवाले से दीजिएगा आप सभी दोस्तों में जल्द से जल्द बता। यहाँ पर जॉर्ज ने 2 बनाए हुए 3 गेंदों का किया हुआ है सामना। ऑन बैट ये गेंद जिसे फ्लिक करते हुए
खेल दिया है लेग साइड में, स्क्वायर लेग के एरिया में गई ये गेंद, 1 रन का होते हुए फिर से इजाफा, सिंगल के इजाफे के साथ स्कोर अब 68 के नुकसान पे इंडिया की टीम की बल्लेबाजी है। और देखते हैं कि टीम इंडिया इस टोटल को जो वो अच्छे तरीके से चेस कर पाएगी या नहीं, ये चीज़ अब देखने लायक होगी। कोलंबो से जो है वो दोस्तों खेला जा रहा है मुकाबला इन दोनों ही टीम्स के दरमियान, और एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का ये मैच जो कि अब रहते हुए बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बल्लेबाज ने मिड विकेट के एरिया में खेल दिया। मिड विकेट की पोजीशन पर फील्डर मौजूद हैं जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है। वापस स्कोर 69 है, 1 के नुकसान पे 9 ओवर्स और 5 रनों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्त का ये सवाल आया भाई। हम जो है वो दोनों ही टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बोथ टीम्स आर गुड। जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी वो जीते, सिंपल सी बात है। बैकवर्ड पर जाकर इस गेंद को जॉस ने पंच करते हुए पॉइंट एंड कवर के एरिया में खेलते हुए सिंगल लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे वो। डॉट के साथ अब 69 है स्कोर, 1 के नुकसान पे। एशिया कप की अगर बात की जाए तो एशिया कप क्या ये टूर्नामेंट और फाइनल मुकाबला है आज इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। काफ़ी दोस्तों की जो है वो अब आमद होना शुरू हो चुकी है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए, बने रहने के लिए। यहाँ पर अब 69 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 10 का खेल हो चुका है पूरा। पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान की टीम ने भी इतने ही रन्स बनाए थे लेकिन पाकिस्तान की टीम ने कोई भी विकेट लूज़ नहीं की थी। टीम इंडिया ने भी उतने ही रन्स बनाए लेकिन उन्होंने 1 विकेट को जो है वो अब लूज़ कर दिया है। तो दैट्स द सिचुएशन एट दिस मोमेंट। यहाँ पर अब पावर प्ले नंबर 2 की शुरुआत जो है वो अब होते हुए, जी बिल्कुल, पावर प्ले नंबर 2 जो है वो दोस्तों उसकी शुरुआत होते हुए स्कोर 69 है, 1 के नुकसान पे 10 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है। स्ट्राइक पे मौजूद ये बैटर नाम है जिनका अभिषेक को ओवर की ये पहली गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर आते हुए खेल दिया है पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल पास से, थर्ड मैन के एरिया में। कुछ देर के लिए गेंद हवा में थी और बच गए हैं यहाँ पर। अब ये प्लेयर नाम है जिनका अभिषेक शर्मा। पावर प्ले दोनों ही टीम्स के लिए लगभग बराबर ही गया है और अगर देखा जाए तो अब जो है वो कम बैक की कोशिश में ये टीम हमें दिखाई दे रही है, टीम पाकिस्तान। लेट्स सी कि वो ऐसा अब कर पाएंगे या मतलब टीम इंडिया, क्योंकि विकेट को उन्होंने लूज़ किया हुआ है इससे दैट्स ऑल। और अब थोड़ा सा जो है वो स्लो खेलते हुए और की अगली गेंद ऑन पैड, ये गेंद जिसे खेल दिया है मिड लेग के एरिया में, 1 रन का होते हुए इजाफा। तो अब जो है वो विकेट गिरने के बाद कम बैक की कोशिश में होगी टीम पाकिस्तान। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अब क्या लेके विकेट की तलाश में होगी, मतलब विकेट के बाद कम बैक करने की कोशिश में होगी। खैर अब देखते हैं कैसा होने वाला है या नहीं होने वाला। यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं अब अभिषेक शर्मा जिन्होंने 31 बना रखे हैं। इस गेंद को कवर्स के एरिया में खेल दिया है, कोई भी रन नहीं आया। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद को कवर्स के एरिया में मतलब खेला था, कोई भी रन इस गेंद के ऊपर नहीं आया। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का स्कोर बोर्ड भी लगा दो भाई, अभी वो मैच शुरू नहीं हुआ है। अभी मैच शुरू होने में 24 मिनट का टाइम जो है वो बाकी है। जैसे वो मैच शुरू होता है तो उससे पहले ही हम उसका स्कोर कार्ड लगा देंगे। आप जो है वो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना लें। 71 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 10 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर एक बार फिर से दौड़ते हुए आए। गेंद क्या ये गेंद जो कि ऑन पैड इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग के एरिया में, 1 रन का होते हुए इजाफा। सिंगल के इजाफे के साथ 72 है स्कोर, 1 के नुकसान पे। अगर डकवर लुइस मेथड लगेगा तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, इंडिया की टीम भी बिल्कुल बुरा नहीं खेल रही। अच्छा जो है वो कह लें कि इस मैच के अंदर अभी तक जो है वो हमें रिस्पांस देते हुए दिखाई दे रही है। शानदार तरीके से जो है वो टीम इंडिया इस मैच के अंदर आगे बढ़ते हुए हमें अब दिखाई दे रही है। दे आर गोइंग सो वेल इन दिस मैच। यहाँ पर अब स्कोर 72 है, 1 के नुकसान पे। अगर बात की जाए गाइस, बात की जाए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की, तो वहाँ पर बारिश है और बारिश की वजह से शायद कि वो मैच का रिजल्ट ना आ पाए। टप्पा लेते हुए ये गेंद जो कि हल्की सी अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेल दिया लेग साइड में, मिड विकेट के एरिया में खेला। कोई भी रन जो है वो लेने का मौका मौजूद नहीं है। स्कोर 72 है, 1 के नुकसान पे। और वहाँ पर टी ब्रेक आने में 1 घंटे का टाइम अभी बाकी है।
तो मिरेकल ये है कि उस मैच का रिजल्ट जो है वो आ पाए, अदरवाइज जो है वो ऐसा लग नहीं रहा कि उस मैच का रिजल्ट जो है वो आ सकता है। 72 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 10 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। वसीम जूनियर ने नेपाल के खिलाफ 4 विकेटें ली थी और अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने वहाँ पर, लेकिन देखते हैं कि अब सिचुएशन जो है वो उनकी बॉलिंग की जो है वो दोस्तों क्या रहने वाली है। स्किन को बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है जॉर्ज ने कवर्स के एरिया में, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा। तो सिंगल के इजाफे के साथ 73 स्कोर, 1 के नुकसान पे 11 का खेल अब हो चुका है पूरा। स्कोर और गेंदों के फ़र्क की अगर बात की जाए तो जो है वो दोस्तों 46 का ये फ़र्क है स्कोर और गेंदों का। 50-50 ये मैच है जी, बिल्कुल अभी भी 50-50 है ये मैच, क्योंकि वैसे टीम इंडिया जो है वो हावी हो रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अभी 50-50 है, क्योंकि अभी जो है वो इंडिया की टीम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ही है। 73 है स्कोर टीम इंडिया का, 1 के नुकसान पे 11 का खेल अब हो चुका है पूरा। और 1000 लाइक्स पूरे करने के लिए दिल से शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर 1000 लाइक्स ऑन दी वीडियो। अगले ओवर की अब होगी शुरुआत। एक एंड से स्पिन बॉलर और एक एंड से फास्ट बॉलर जो है वो अब हमें बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। विकेट टेकर को जो है वो अब मतलब ज़्यादा बॉलिंग इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर हैं और कोई भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं है इस टीम के ऊपर के पास। ओवर की ये पहली गेंद जिसे खेल दिया है वापस बॉल के पास जॉस ने, कोई भी रन जो है वो लेने का मौका मौजूद नहीं है। ओवर की रहेगी अब दूसरी गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का जॉस। ओवर की अगली गेंद को कवर्स के एरिया में खेला है, बहुत ही उम्दा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए फील्डर गेंद के पीछे और शानदार एफर्ट। पहली दफा पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो लाजवाब देखने को मिली है हमें। 2 रन्स बचाए हैं डाइव लगाकर इस गेंद को रोकने के बाद फील्डर ने, कासिम अकरम ने। और अब बाउंड्री को चेक किया जाएगा कि ये चौका हुआ है या नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बाउंड्री को चेक किया जा रहा है कि ये चौका हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें चले कि ये चौका नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी एफर्ट। 75 है स्कोर टीम इंडिया का, 1 के नुकसान पे अब 11 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ओवर की रहेगी तीसरी गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का जॉर्ज। बॉलर आए, गेंद की अच्छा गेंद, विकेट या गेंद जिसे बैट एंड बैट को साथ मिलाते हुए खेल दिया गया है। अब वापस another डॉट डिलीवरी डॉट के साथ अब 75 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 11 का खेल हो चुका है पूरा। तो 75 है स्कोर, 1 के नुकसान पे जॉर्ज जो है वो अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं, जिन्होंने इस गेंद को ड्राइव किया है कवर्स के एरिया में। एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर फील्डर अब मौजूद, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है वापस एक और डॉट डिलीवरी डॉट के साथ। 75 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 11 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद 75 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ऑलरेडी 5 ओवर्स ऐसे हैं जो कि डॉट खेल ली है टीम इंडिया ने। बैकफुट पर रहते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन के बल्कि फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन के एरिया में खेलते हुए एक और सिंगल को पूरा कर लिया है। सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कोर 76 1 के नुकसान पे। रिक्वायर्ड रन रेट अब करंट रन रेट से पहली दफा जो है वो क्या लेके ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दी है पावर प्ले के बाद। तो अभिषेक शर्मा जो है वो स्ट्राइकर एंड पे अब मौजूद हैं। ओवर की अगली गेंद का जो करेंगे सामने बॉलर आए, गेंद क्या ये गेंद जो कि शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद को जो कि ख़राब गेंद थी फाइनल लेग के एरिया में खेलना चाहते थे ये प्लेयर, लेकिन नाकाम रहे। गेंद गई फील्डर के पास जो कि फाइनल लेग की पोजीशन पर सर्कल के अंदर थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया अंदर द डॉट डिलीवरी डॉट के साथ। अब स्कोर 76 1 के नुकसान पे। फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एशिया कप 2023 की अगर बात की जाए तो 2 ग्रुप्स में टीम को रखा गया है। ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। ग्रुप बी के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 76 है स्कोर, 1 के नुकसान पे। स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं अब अभिषेक, 32 रन बना रखे हैं उन्होंने, 31 बल्कि स्ट्राइकर एंड पे अब जॉस रहने वाले हैं। और दूसरे एंड से बॉलिंग करते हुए मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर जिनके ओवर की ये पहली गेंद और इस पहली ही गेंद के ऊपर दे मारा है एक खूबसूरत चौका। शॉर्ट पिच ये गेंद थी, बैकफुट पर गए ये प्लेयर और इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में उठाते हुए पहुंचा दिया है बाउंड्री के पार। 80 है स्कोर, 1 के नुकसान पे। लवली 4।
तो स्कोर है 81 के नुकसान पे 12 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। एटी फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जॉस जो है वो दोस्तों अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है। मोहम्मद वसीम जूनियर की ये गेंद और बोल्ड कर दिया है, नहीं बल्कि कैच आउट हुए हैं दोस्तों ये प्लेयर। अंपायर के फैसले से जो है वो इतने खुश दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया है तो दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर रिव्यूज नहीं है, तो इसलिए टीम इंडिया अपनी दूसरी विकेट को लूज करते हुए 80 के स्कोर पर, और अंपायर के फैसले से इतने खुश नहीं हैं। और यहाँ पर जो जॉज हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये गेंद उनके यूनिफॉर्म से टकराते हुए गई है। बहरहाल अंपायर का फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर का फैसला हतमी है। नंबर 2 ये कि यहाँ पर आपको बताते चले कि अंपायर का फैसला इसलिए भी मानना पड़ेगा क्योंकि रिव्यूज नहीं हैं। सो विकेट गिरते हुए 80 है स्कोर, 2 के नुकसान पे 12 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। पाकिस्तान विद अनदर विकेट। सो 12.2 ओवर्स के बाद 80 है स्कोर, 2 के नुकसान पे। जॉस जो है वो, लेकिन जॉस जो है वो दोस्तों बिल्कुल भी खुश नहीं अंपायर के इस डिसीजन से। 80 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ऐसे ही आज उमर बिन यूसुफ भी बिल्कुल खुश नहीं थे अंपायर के डिसीजन से जब उनको कैच आउट दिया गया। तो ये चलता है क्रिकेट के अंदर, इट हैपन्स। तो 80 स्कोर, 2 के नुकसान पे 12 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। 74 गेंदों के ऊपर 80 रन बनाते हुए टीम इंडिया। विकेट गिर गई है, पहली गेंद के ऊपर चौका आया और एक बार फिर से वही शॉट रिपीट करने के लिए गए थे प्लेयर। मिड विकेट के एरिया में गेंद को उठाने के लिए गए थे वो, लेकिन बल्ले के किनारे से टकराते हुए गेंद विकेट कीपर के पास गई, अंपायर ने आउट दिया और इस तरह टीम इंडिया ने अपनी दूसरी विकेट को लूज किया। यहाँ पर अब कप्तान यशदुल जो है वो आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, इसलिए मैच के अंदर इन्होंने कमाल बैटिंग की और अपनी टीम को जितवाया। इन्होंने वहाँ पर जितवाने में एक अहम रोल प्ले किया। 42 की इनकी एवरेज है, 12 मैचेस के अंदर 386 रन को इन्होंने लिस्ट ए करियर के अंदर स्कोर कर रखा है। यशदुल जो कि टीम इंडिया के कप्तान थे। अब 80 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 12 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद स्ट्राइक पे मौजूद यशदुल कोई भी फील्डर स्लिप पर नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हारिस इमेच्योरिटी जो है वो दोस्तों दिखाते हुए, और लवली डिलीवरी दिस टाइम बाय मोहम्मद वसीम जूनियर। ये गेंद जाकर बल्ले के आउटसाइड एज से टकराते हुए कवर्स के एरिया में गई। हल्की सी अपील हो सकती थी लेकिन बच गई। तो स्कोर है 80, 2 के नुकसान पे 12 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। 80 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 12 ओवर्स और 3 गेंदों के बाद यशदुल ने कोई रन नहीं बनाया हुआ, एक गेंद का किया हुआ है सामना। यहाँ पर अब कप्तान वाली इनिंग्स खेलने की वो कोशिश में होंगे आज के इस दिन के अंदर, और अब देखते हैं कि वो ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अब बॉलर है एक बार फिर से तैयार, मोहम्मद वसीम जूनियर। आए गेंद क्या ऑस्ट्रम के बैट की ये गेंद, जिसे कवर्स के एरिया में ड्राइव करते हुए 1 रन को पूरा कर लिया है। उम्दा रनिंग पर उम्दा विकेट्स करते हुए ये दोनों ही बैटर्स। सिंगल के इजाफे के साथ ही 81 है स्कोर, 2 के नुकसान पे। 81 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो 81 है स्कोर, 2 के नुकसान पे 12 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है। वसीम जूनियर विकेट ले चुके हैं इस ओवर के अंदर। सामना करेंगे इस गेंद का अभिषेक। ओवर की अगली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट किया, पॉइंट और थर्ड मैन के एरिया में गई ये गेंद, 1 रन का होते हुए इजाफा। सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कोर है 82, 2 के नुकसान पे 12 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद। रेन आ सकती है क्या इस मैच में? नहीं भाई, बारिश के इम्कानात जो है फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बारिश है तो किसी भी वक्त आ सकती है, क्या कहा जा सकता है बारिश के हवाले से। सो 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जी बिल्कुल, 82 स्कोर, 2 के नुकसान पे 12 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। राइट आर्म ओवर द विकेट मोहम्मद वसीम जूनियर एक बार फिर से जो कि आए गेंद किया इस गेंद को, जो कि हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड ऑन के एरिया में खेला है, कोई भी रन जो लेने का मौका मौजूद नहीं है। डॉट के साथ ओवर का खेल अब पूरा। एक और कामयाब ओवर रहा ये टीम पाकिस्तान के लिए, 6 रन आए, 1 विकेट गिरी इस ओवर के अंदर। तो दोस्तों 6 रन आए हैं, विकेट गिरी है। इंडिया की टीम अपनी दूसरी विकेट को लूज करते हुए। रिक्वायर्ड रन रेट 7.32 का है अभी। टीम इंडिया नीड अ पार्टनरशिप हियर, और देखते हैं कि अब पार्टनरशिप लगा पाएंगे ये प्लेयर जो नहीं। 13 के बाद 82 स्कोर, 2 के नुकसान।
अगले ओवर की अब होगी शुरुआत। मेहरान मुमताज़ जो है वो बिल्कुल दोस्तों बॉलिंग के सिलसिले को अब हमें कंटिन्यू रखते हुए दिखाई देंगे। 2 ओवर्स के अंदर 7 रन दिए हुए मेहरान मुमताज़ ने, इनका सामना करेंगे अभिषेक। 33 के स्कोर पे 32 गेंदों का किया हुआ उन्होंने सामना। यशदुल ने एक बनाया हुआ है और यशदुल जो है वो अभी तक 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं कप्तान। तो दोस्तों अगले ओवर की अब होते हुए शुरुआत। मेहरान ने 2 ओवर्स के अंदर 7 रन दिए, कोई भी विकेट नहीं ली। इसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का स्कोर 86 था बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मेहरान मुमताज़ जो कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और स्पिन बॉलर हैं, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये बॉलर हैं जो कि अब हमें बॉलिंग के सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए दिखाई देने वाले हैं। अरशद इकबाल जो कि अब पाकिस्तान की टीम के बॉलर और फील्डर हैं, वो उनको रिप्लेस किया गया है, वो थोड़ा रेस्ट के लिए गए हैं शायद ग्राउंड से बाहर। 82 स्कोर 2 के नुकसान पे 13 का खेल अब हो चुका है पूरा। 1000 के ऊपर लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहाँ पर अभिषेक ने इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए, स्क्वायर लेग के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा कर लिया बआसानी। तो सिंगल के इजाफे के साथ 83 है स्कोर 2 के नुकसान पे। इजी पिकिंग्स अभिषेक शर्मा 34 के स्कोर पर 33 गेंदों का किया हुआ है सामना। अभी तक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं ये। और स्पिनर्स के खिलाफ गार्ड लेते हुए अब कप्तान यशदुल मेहरान मुमताज़ के खिलाफ गार्ड जो है वो दोस्तों लेते हुए। और टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इट्स स्टिल रेनिंग एट दिस मोमेंट। और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कवर्स के एरिया में खेला है। कवर्स की पोजीशन पर फील्डर अब मौजूद जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है वापस डॉट के साथ। अब 83 है स्कोर 2 के नुकसान पे। सो 83 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहाँ पर यशदुल हैं अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद जिन्होंने इस गेंद को तेज बल्ले का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा कर लिया है सिंगल के इजाफे के साथ। 84 है स्कोर 2 के नुकसान पे। अब लॉन्ग ऑन के एरिया में खेला गया है शॉट और आसानी के साथ खेला गया है शॉट। सिंगल के इजाफे के साथ 84 है स्कोर 2 के नुकसान पे। 13 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ये मैच इन दोनों ही टीम्स के दरमियान जो कि खेला जा रहा है, ये मुकाबला जो है वो दोस्तों इन दोनों ही टीम्स के दरमियान खेला जा रहा है कोलंबो से। और की है अगली गेंद वंस अगेन विकेट डिलीवरी जिसे बैटर ने लेग साइड में खेला है, एक और डॉट। सो 84 है स्कोर 2 के नुकसान पे। इंडिया और टीम वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाले मुकाबले का स्कोर भी हम आपके सामने लगा देंगे। और के लिए गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए कवर्स के एरिया में खेल दिया है अनदर डॉट डिलीवरी डॉट के साथ। अब और जो है वो दोस्तों रहते हुए 84 2 के नुकसान पे। मेहरान मुमताज़ जिनके ओवर की अगली गेंद, इस दफ़ा ये गेंद जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच थी, इस गेंद को उठा दिया है स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। उम्दा चौका लगते हुए जानते थे कि फील्डर सर्कल के अंदर हैं और इसलिए उन्होंने इस गेंद को जो है वो अब स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर के सर के ऊपर से खेलते हुए दे मारा है चौका। चौके की मदद से अब स्कोर बढ़ते हुए आगे। 88 है स्कोर 2 के नुकसान पे। 14 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। अभी भी रन रेट 6 के ऊपर का है टीम इंडिया का। तो 88 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दुल ने 2 रन बना रखे हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 रन जो है वो अब तक बना रखे हैं और उन्होंने 36 गेंदों का किया हुआ है सामना। अगले ओवर की अब होगी शुरुआत। मोहम्मद वसीम जूनियर 2 ओवर्स के अंदर 9 रन देकर 1 विकेट को अब तक कर चुके हैं अपने नाम और उनका ये स्पेल इतना लंबा नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के पास 2 पेस बॉलर्स हैं, तो शायद 4 ओवर्स का वो स्पेल करवाने में कामयाब हों और उसके बाद वो बॉलिंग से हट जाएं। राइट आर्म ओवर द विकेट वसीम जूनियर जिनके ओवर की ये पहली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है डाउन द ग्राउंड मिड ऑन के एरिया में और 1 रन को पूरा किया है सिंगल के इजाफे के साथ। और 89 है 2 के नुकसान पे 14 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। इंडियन फैंस जो कि इस मैच को एंजॉय करते हुए, पाकिस्तानी फैंस एंजॉय करते हुए और श्रीलंकन फैंस, क्योंकि ये मैच श्रीलंका में हो रहा है तो इसलिए श्रीलंकन फैंस भी इस मैच को जो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आज। 6,79,078 दोस्तों ने अभी तक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब। वी नीड ओनली 12 बल्कि कह लें कि 22 सब्सक्राइबर्स और चाहिए हमें अपना ये टारगेट पूरा करने के लिए 6 लाख।
अरे भाई सॉरी हो गया है। 79,000 दोस्तों ने कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब। 6,80,000 तक हम जाएंगे। स्ट्राइक पे मौजूद हैं अब प्लेयर अभिषेक शर्मा। इस गेंद को अपर कट करते हुए थर्ड मैन के एरिया में खेल दिया। 1 बाउंस टू दी फील्डर जो कि थर्ड मैन की पोजीशन पर मौजूद थे। उन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए जब तक किया है वापस 1 रन का होते हुए इजाफा। लेट कट किया था, अपर कट किया इस गेंद को और थर्ड मैन के एरिया में खेला। सो सिंगल के इजाफे के साथ 90 है स्कोर 2 के नुकसान पे। अभिषेक शर्मा जो कि 39 के स्कोर पे हैं, जिन्होंने अब तक 35 गेंदों का किया हुआ है सामना। यशदुल जो है वो स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है। मोहम्मद वसीम जूनियर की जो कि गेंदबाजी का सामना करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद। इस गेंद को बैकवर्ड पर जाकर बल्लेबाज ने पंच करते हुए पॉइंट के एरिया में खेल दिया। रन आउट का खतरा नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ हो सकता था, लेकिन मना किया साथी प्लेयर को सिंगल लेने से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की अगर बात की जाए तो वहां पर अब जो है वो बारिश ही बारिश है दोस्तों, और शायद पूरे के पूरे दिन का खेल जो है वो ज़ाया हो जाए। तो 90 है स्कोर 2 के नुकसान पे। अभी तक अच्छा कमबैक करने की कोशिश में टीम पाकिस्तान। 15वें ओवर के अंदर 90 रन। अभी भी रन रेट जो है वो 6 के ऊपर का टीम इंडिया का, जो कि एक अच्छा रन रेट। अच्छा दूसरी तरफ लैब मैच किदों ना शुरू होया वा सानू पता ही नहीं। अरे भाई साहब क्या बनेगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया और टीम वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुकाबला जो है वो अभी चल रहा है। तो दोस्तों स्कोर की बात की जाए तो स्कोर अब 91 है 2 के नुकसान। उसका स्कोर कार्ड जो है वो हम आपके सामने अब लगा देते हैं ताकि आप सभी को आइडिया मिल जाए कि क्या आज सिचुएशन जो है वो बनी हुई है अब तक उस मुकाबले की। तो अभिषेक की अगर बात की जाए तो पहले मैच के अंदर 19, दूसरे मैच के अंदर 87, तीसरे मैच के अंदर 20 और चौथे मैच के अंदर 34, पांचवें मैच के अंदर अभी तक 39 रन उन्होंने बना लिए हैं। तो ये है अब तक की सिचुएशन। वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑल आउट होने के दहाने पे, और उसका स्कोर कार्ड मैं अभी आपके सामने लगा देता हूँ ताकि आप सभी को आइडिया मिल जाए उस मैच के हवाले से कि क्या सिचुएशन जो है वो अभी तक बनी हुई है। और खेली गेंद को खेल दिया है पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से चौके के लिए। हवा में थी कुछ देर के लिए गेंद और गई ये गेंद अब पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से होते हुए 4 रनों के लिए। चौके की मदद से अब स्कोर है 95 2 के नुकसान पे। तो अभिषेक शर्मा अपनी हाफ सेंचुरी के बिल्कुल पास जा रहे हैं अब, और अभिषेक शर्मा उम्मीद तो इसी चीज़ की है कि बआसानी अपनी इस हाफ सेंचुरी को पूरा कर जाएंगे, बिकॉज ही इज प्लेइंग सम गुड क्रिकेट एट दिस मोमेंट। यहाँ पर अब ओवर की अगली गेंद मोहम्मद वसीम जूनियर की ये गेंद जिसे बैकफुट पर रहते हुए स्क्वायर लेग के एरिया में खेल दिया आसानी के साथ, और यहाँ पर रन्स को पूरा करते हुए। तो स्कोर जो है वो दोस्तों 96 2 के नुकसान पे। तो आइए आपके साथ इंडिया और टीम वेस्ट इंडीज़ का स्कोर भी हम लगा देते हैं ताकि आप सभी को आइडिया मिल जाए कि उस मैच का क्या हाल अब बना हुआ है। तो दोस्तों ये है अब तक की मैच की सिचुएशन। यहाँ पर आपको बता दें कि टीम इंडिया जो है वो अभी तक इस मैच के अंदर है, और अपनी अच्छी शुरुआत की वजह से भारतीय टीम जो है वो इस मैच के अंदर अभी तक मौजूद है, क्योंकि 2 ही विकेटों को लूज़ किया हुआ है उन्होंने, और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तेज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, रन रेट को जो है वो अच्छा बना के रखे हुए हैं। ये देखिए इंडिया और टीम वेस्ट इंडीज़ का स्कोर भी जो है वो अब आपके सामने आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के स्कोर की अगर बात की जाए तो मैच के अंदर अभी तक बारिश है, और बारिश ही बारिश है हर जगह पे। तो आई डोंट थिंक कि वो मैच जो है वो शुरू होते हुए हमें दिखाई देने वो वाला है। बहुत मुश्किल है कि वो मैच जो है वो हो पाए। और की अगली गेंद, इस गेंद को जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया है। उम्दा तरीके से खेला गया है शॉट, पॉइंट के एरिया में बाउंड्री की तरफ बढ़ते हुए ये गेंद फील्डर गेंद के पीछे, और बिल्कुल बाउंड्री के पास जाकर जब तक उन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए वापस किया है। वेस्ट इंडीज की टीम ने अपनी 8वीं विकेट को लूज कर दिया है दूसरी तरफ।
जी हाँ, अभी भी इंडिया के पास 194 रन की बड़ी लीड है। और मैच बढ़ते हुए आगे बैकफुट पर जाकर फिर से कट किया। इस दफ़ा ये गेंद बहुत ही तेज़ी के साथ बल्ले से निकली है। पॉइंट की पोजीशन पर मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद, जिन्होंने इस गेंद को पकड़ते हुए जब तक किया है वापस एक रन लेने का मौका, और इस एक रन को बआसानी पूरा किया गया है सिंगल की इजाफे के साथ। 99 है स्कोर, 2 के नुकसान पे। अच्छे शॉट्स लगते हुए इस ओवर के अंदर टीम इंडिया की ओर से, इंडिया की तरफ से। तो दिल से शुक्रिया आप सभी का हमारा साथ देने के लिए। स्ट्राइक पे हैं अब यशदुल, जिन्होंने इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए खेल दिया मिड विकेट के एरिया में, बल्कि लॉन्ग ऑन के एरिया में, और इसी के साथ अपने 100 रन को पूरा करते हुए टीम उम्दा क्रिकेट खेलते हुए 100 रन को पूरा कर लिया। 40 का फर्क है स्कोर और गेंदों का। तो 3 गेंदें हो चुकी हैं। पहली 50 35 गेंदों के ऊपर बनी थी, दूसरी 50 58 गेंदों के ऊपर बनी है इस टीम की अब। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो अब कम बैक की कोशिश में है। और के लिए गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए कवर्स के एरिया में खेल दिया है। उम्दा ये शॉट फील्डर गेंद के पीछे और बिल्कुल बाउंड्री के पास जाकर, जब तक उन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है, वापस 2 रन को पूरा कर लिया गया है। तो 2 रन आते हुए 102 है स्कोर, 2 के नुकसान पे। दे आर स्टिल वेल एंड ट्रूली इन दिस मैच, यू कैन से। यहाँ पर अब अभिषेक को 1 रन चाहिए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए। कमाल की पारी खेली हुई उन्होंने यहाँ पर अभिषेक के लिए गेंद, जिसे उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर बैट एंड बैट को साथ में लाते हुए खेल दिया है। वापस बॉलर के पास कोई भी रन लेने का मौका मौजूद नहीं है। कल के दिन जो है वो हम आपके साथ आ जाएंगे फॉर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच की कमेंट्री, भाई उससे इंटरेस्टिंग तो ये मैच हो रहा है। वो स्कोर कार्ड हमने आपके सामने लगा दिया है ना, तो आप उसको देख लें। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच करते हुए कवर्स के एरिया में खेलते हुए एक और सिंगल को पूरा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के हवाले से हम आपको जुबानी अब बताएंगे कि वो मैच जो है वो उसके अंदर अभी तक बारिश है। और इसी के साथ अभिषेक शर्मा अपनी 50 को पूरा करते हुए बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया उन्होंने कवर्स के एरिया में और एक लाजवाब हाफ सेंचुरी पूरी कर दिया। तालियां होनी चाहिए दोस्तों, और लाइक तो बनता है वीडियो के ऊपर इनकी इस बेहतरीन बैटिंग के लिए। शानदार बल्लेबाजी क्योंकि ये करते हुए हमें अब दिखाई दिए हैं। इंडिया की टीम अब आगे बढ़ते हुए, सागर भाई का ये कहना है, सागर सिंह का, कि इंडिया की टीम 210 तक 5 विकेटों को लूज़ की हुई होगी। चलिए देखते हैं भैया कि आपकी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित होगी या नहीं होगी। आप भी इस हवाले से जो है वो हमें बता सकते हैं कि आपके ख्याल से इंडिया की टीम 20 ओवर्स के मार्क तक कितने रन्स को जो है वो स्कोर करने वाली है। डू टेल मी गाइस। बिल्कुल इस हवाले से हमें बता दीजिएगा। आपके साथ हम स्कोर कार्ड की सिचुएशन को भी शेयर कर देते हैं ताकि आप सभी को आइडिया मिल जाए कि स्कोर कार्ड की जो सिचुएशन। एंड हियर वी हैव द स्कोर बोर्ड विद यू ऑल। ये जो है वो दोस्तों आपके सामने अब आ गया है स्कोर बोर्ड, जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने अभी तक साई सिद्धार्थन की विकेट को लूज़ किया। 29 रन बनाए उन्होंने। निकिन जॉन्स 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अब अगर देख लिया जाए तो 4 रन बनाए हैं अभी तक। यशदुल ने 8 गेंदों का किया उन्होंने सामना। मिलकर वो एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश में होंगे, जबकि साई सिद्धार्थन आउट हुए, जिसके बाद अभिषेक शर्मा। अरे भाई ये स्कोर कार्ड क्यों रुका हुआ है? ये जो अभिषेक का स्कोर है ये थोड़ा कम दिखा रहा है। ये अब क्रिक बस। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर आने वाले प्लेयर्स को, तो आने वाले प्लेयर्स में रेयान पराग का नाम हमें देखने को मिल जाएगा। निशांत संधू का नाम जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जुरेल जो है वो रहने वाले विकेट कीपर हैं। वो मानव को जो है वो अभी इसके बाद आना है। हर्षित राणा को अभी इसके बाद अभी आना है। राजवर्धन हंगरीकर हैं और साथ में दूधिया जो है वो दोस्तों उनको अभी आना है बैटिंग करने के लिए। तो ये है अभी तक टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी है इसके बाद आने वाली। और आज अगर दिन की बात की जाए तो दिन के अंदर जो काम हुआ वो ये मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक 1 विकेट को मोहम्मद वसीम जूनियर और 1 विकेट को अरशद इकबाल ने लिया हुआ है। अगर देखा जाए दोस्तों पाकिस्तान ए को, तो पाकिस्तान ए की तरफ से साइम अयूब ने 59, साहबजादा फरहान ने 65 रन बनाए, 62 गेंदों का किया सामना। इसके बाद उमर यूसुफ ने 35 से 108 रन की इनिंग्स खेली। तैयब ताहिर ने
बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी वो, और इसके साथ 35 रन बनाए। मुबशिर ने 13 रन बनाए, मेहरान मुमताज़ ने 17 रन बनाए, मोहम्मद वसीम जूनियर ने, और पाकिस्तान की टीम 352 का एक अच्छा टोटल जो है वो लगाते हुए हमें दिखाई दी इस मुकाबले के अंदर। 2 विकेटें जो है वो अभी तक गिर चुकी हैं। पार्टनरशिप लगाने की कोशिश में ये प्लेयर्स जो हैं वो अब हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मुकाबला ब्रेक के बाद जो है वो शुरू होते हुए। जी हाँ दोस्तों, मैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट अगेन, और अब बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे मोहम्मद वसीम जूनियर ही। जूनियर बाबा ही जो है वो दोस्तों गेंदबाजी को अब जारी रखने वाले हैं, जिनके ओवर की अब रहेगी पहली गेंद, और सामना करेंगे इस गेंद का। अरे भाई कहाँ पे गई टाइमर? हाँ जी, पहली गेंद है इस ओवर की। इस गेंद को बैकफुट पर जाकर अभिषेक ने खेल दिया है पॉइंट के एरिया में। अच्छा ये शॉट, 1 रन का होते हुए इजाफा विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिंगल को जो है वो दोस्तों ये प्लेयर अब पूरा करते हुए आसानी के साथ सिंगल को जो है वो दौड़ते हुए ये प्लेयर सिंगल के हिसाब के साथ अब 104 है स्कोर 2 के, मतलब सिंगल के साथ अब 104 है स्कोर 2 के नुकसान पे। क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है? दोस्त का सवाल आया तो भाई मेरे लग यूँ रहा है कि ये मैच अभी 50-50 लग रहा है हमें, और अगले आने वाले टाइम के अंदर इस मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है। राइट हम और द विकेट, ये गेंद ऑन पैड, ये गेंद अपील एलबीडब्ल्यू की हो सकती थी, लेकिन नॉट आउट दिया जाएगा क्योंकि ये गेंद डाउन द लेग साइड जा रही थी, तो इसलिए नॉट आउट ही जो है वो अब दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के हवाले से आपको बताते चले कि वो मुकाबला अभी शुरू नहीं हो पाया है, और होगा भी नहीं शायद, जिस किस्म के हालात लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश है, और बारिश की वजह से जो है वो अभी तक मैच के अंदर कोई भी हमें जो है वो प्रोग्रेस होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। एक 104 है स्कोर 2 के नुकसान पे। ऑस्ट्रम के बैट की ये गेंद जिसे बैकफुट पर रहते हुए बैटर ने खेल दिया है कवर्स के एरिया में। कवर्स की पोजीशन पे फील्डर हैं अब तैनात, एक और डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ अब 104 है स्कोर 2 के नुकसान पे। इस इनिंग्स के अंदर अभी तक 7 ओवर्स ऐसे हैं जो कि डॉट डिलीवरीज के मध्य में गुजर चुके हैं, यानी कि डॉट डिलीवरीज हो चुकी हैं। 7 ओवर्स लगभग ऐसे गुजरे हैं अभी तक इस इनिंग्स के अंदर। तो स्कोर 104 है 2 के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे मौजूद है यशदुल्ला, इस ओवर की अगली गेंद का करेंगे वो सामना। बॉलर आए गेंद क्या मोहम्मद वसीम जूनियर की ये गेंद, इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में उठा दिया है, गेंद हवा में, और कोई भी फील्डर इस गेंद के नीचे नहीं आ पाए। 2 रन को पूरा करते हुए प्लेयर्स अब आसानी के साथ 2 रन को जो है वो पूरा करते हुए ये हमें दिखाई दिए मिड विकेट के एरिया में इस गेंद को खेलने के बाद। यहाँ पर अब स्कोर रहते हुए 106 2 के नुकसान पे। कुछ देर के लिए गेंद जो है वो हवा में ज़रूर थी, बट दे हैव टेकन 2 runs easily here। 106 है स्कोर 2 के नुकसान पे 16 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद। इंडिया की बैटिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया की बैटिंग तो अभी अच्छी खासी बची हुई है। और के लिए गेंद को बैकवर्ड पर जाकर बल्लेबाज ने पंच करते हुए कवर्स में खेल दिया है। कवर्स की पोजीशन पर फील्डर अब मौजूद, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है वापस। 106 है स्कोर 2 के नुकसान पे। शाहीन आफरीदी इस मैच को एंजॉय करते हुए, अबरार अहमद, बल्कि पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो दोस्तों आकर बैठी हुई है और इस मैच को एंजॉय कर रही है। अब पाकिस्तान की टीम सुबह के वक्त हमें मैच खेलते हुए दिखाई देगी, कुछ टाइम के लिए इस मैच को वो देखने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तान की मेन टीम 106 है स्कोर 2 के नुकसान पे। कल को जो है वो उनका मैच SSC में खेला जाएगा, यानी कि कोलंबो में ही होना, लेकिन जो दूसरा ग्राउंड है वहाँ पर होगा। और के लिए गेंद ऑस्ट्रम के बैट की ये गेंद जिससे संभलते हुए बैटर ने खेल दिया है। अब संभलते हुए कवर्स के एरिया में खेला है एक और डॉट डिलीवरी। जी बिल्कुल, दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर टीम इंग्लैंड टू लेवल दी सीरीज, लेकिन यह है कि वहाँ पर इंग्लैंड की टीम जो है वो कुछ खास कर नहीं पाई, तो इस वजह से ये काम हुआ है। तो स्कोर जो है वो दोस्तों अब रहते हुए 106 2 के नुकसान पे। 17 का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। 18वें ओवर की अब होगी शुरुआत। एशिया कप की अगर बात की जाए तो एशिया कप में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि खेलने, मतलब टीम्स हैं जो कि खेलते हुए हमें दिखाई देने वाली हैं एशिया कप में। दूसरी और टीम इंडिया जो है वो दोस्तों
इंडिया की टीम की अगर बात की जाए तो दूसरी, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ है कि टीम इंडिया 250 रन खा गई है टीम वेस्ट इंडीज से इस बार, बट वो टीम भी ऑल आउट होने के दहाने पे है। अब अगले ओवर की अब होते हुए शुरुआत, मुकीम की ये गेंद इस गेंद को खेल दिया कवर्स के एरिया में। मुकीम की अगर बात की जाए तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर है ये, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर, समझ रहे हैं आप इस बार, चाइना मैन बॉलर। तो दोस्तों ये चाइना मैन बॉलर हैं। 107 है स्कोर, 2 के नुकसान पे 17 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ओवर की रहेगी अब दूसरी गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का यशदुल जो कि 7 के स्कोर पे 14 गेंदों का उन्होंने कर रखा है सामना। यहाँ पर बॉलर हैं तैयार सुफियान मुकीम, जिनके ओवर की अगली गेंद इस गेंद के ऊपर लगाने की कोशिश की, बड़ा शॉट, बल्ले का आउटसाइड एज लिया इस गेंद ने और ये गेंद स्लिप के फील्डर के सर के ऊपर से होते हुए गई है 4 रनों के लिए। खेलना इस गेंद को लेग साइड में चाहते थे अपने, लेकिन किनारा लेते हुए ये गेंद स्लिप के फील्डर के सर के ऊपर से होते हुए गई है अब 4 रन के लिए। अच्छी गेंद थी ये वैसे सुफियान मुकीम की। चाइना में ये बॉलर हैं और अगले आने वाले टाइम के अंदर इनका रोल जो है वो देखने लायक होगा कि ये किस अंदाज से जो है वो हमें क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। चौका लगते हुए 1-1-1 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। टीम इंडिया अब इस मैच के अंदर बनी हुई है दोस्तों, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल बनी हुई है और मजीद बन जाएगी। एक और खूबसूरत चौका, इस दफा डाउन द ग्राउंड इस गेंद को खेला है और मिड ऑफ के फील्डर ने दौड़ते हुए इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद उनकी पहुंच से दूर और गेंद जाते हुए बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। 115 पे 2 आउट। 105 गेंदों के ऊपर भारतीय टीम ने 115 रन बना लिए हैं और रिक्वायर्ड रन रेट को अभी भी 7.5 से नीचे ही रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा रन रेट जो कि बनाकर खेलते हुए ये टीम। स्कोर 115 है, 2 के नुकसान पे 17 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। इस इनिंग्स की बात की जाए तो 12 चौके जो हैं वो इस इनिंग्स के अंदर अभी तक लग चुके हैं। यहाँ पर सुफियान मुकीम जिनके ओवर की अगली गेंद जिसके ऊपर लगाने की कोशिश, बड़ा शॉट, बल्ले का इनसाइड एज और यह गेंद जाकर पैड्स पे टकराई है। तो लगातार जो है वो दोस्तों बड़े शॉट लगाने की कोशिश में यशदुल इन बॉलर्स को जो कि अच्छा खेलते हैं और यहाँ पर अब सुफियान मुकीम अपने ओवर की अगली गेंद के साथ एक बार फिर से जो कि आए गेंद क्या, ये गेंद जो कि बहुत ही अच्छी गेंद, बोल्ड आउट होते होते बाल बचे हैं यशदुल। देखना होगा कि ये गेंद कहीं बल्ले से तो नहीं टकराई थी। लेट कट करना चाहते थे इस गेंद को थर्ड मैन के एरिया में और ये गेंद स्टंप्स के बिल्कुल पास से होते हुए विकेट कीपर के पास गई है। बहुत ही करीबी मामला। 115 है स्कोर, 2 के नुकसान पे यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ के एरिया में, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा। तो सुफियान मुकीम जो कि एक चाइना मैन बॉलर हैं वो हमें महंगे साबित होते हुए दिखाई दिए हैं इस ओवर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुकाबले की सिचुएशन कुछ हुआ है कि बारिश की वजह से वो वाला मुकाबला जो है वो हमें अभी तक शुरू होते हुए दिखाई नहीं दिया है। फिजान राजपूत बस थोड़े ठंडे रहें, मैच ही कुछ ऐसा है, आप थोड़े ठंडे रहें भाई। तो स्कोर अब 116 है, 2 के नुकसान पे 18 का खेल अब हो चुका है पूरा। अगले ओवर की अब होगी शुरुआत, सामना करेंगे गेंदबाजी का अब अभी यशदुल जो कि 16 के स्कोर पे 19 गेंदों का किया हुआ है सामना। इट्स ऑल अबाउट दी विकेट्स फॉर पाकिस्तान एंड इट्स ऑल अबाउट दी पार्टनरशिप फॉर टीम श्रीलंका, वह माफ कीजिएगा टीम इंडिया। अगले ओवर की अब होगी शुरुआत, सामना करेंगे गेंदबाजी का, स्पिन बॉलर ही आ चुके हैं दोस्तों, सामना करेंगे यशदुल। ओवर की पहली गेंद और एक शानदार चौका, क्या बात है, शॉर्ट पिच गेंद थी, खराब गेंद और इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में उठाया, कोई भी फील्डर लेग साइड में मौजूद नहीं थे और मुबशर जो है वो एक बहुत ही खराब शुरुआत लेते हुए इस जो है वो कह लीजिए कि ओवर की बहुत ही ख़राब शुरुआत लेते हुए स्कोर 120 से 2 के नुकसान पे। अरे भाई गलत लैंग्वेज नहीं, वॉब डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज। हमारे मॉड्स कहाँ पे गए हैं आज, मॉड्स हैं क्या? तो चौका आ गया ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब टीम इंडिया इस मैच के अंदर प्रेशर को रिलीज़ करते हुए, इस ओवर की प्रेशर को रिलीज़ करते हुए पहली गेंद के ऊपर चौका लगाने के बाद यहाँ पर ओवर की अगली गेंद इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट करते हुए खेल दिया है पॉइंट के एरिया में, 1 रन का होते हुए इजाफा।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर भी बारिश है और बारिश ही बारिश है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अब बारिश जो है वो लगातार होते हुए इस मैच के अंदर अभिषेक ने इस गेंद को हल्का सा रूम बनाते हुए कवर्स के एरिया में खेला है और एक और मिस फील्डिंग, अनदर मिस फील्डिंग। जी बिल्कुल, लगातार मिस फील्डिंग पे मिस फील्डिंग जो है वो होते हुए अब हमें दिखाई दे रही है टीम पाकिस्तान की तरफ से। स्कोर 122 से 8 के नुकसान पे 18 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते हुए टीम इंडिया अब 53 रन जो है वो अभी तक के भी अभिषेक ने बना रखे हैं। कदमों का सहारा देकर इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए एक और सिंगल को पूरा कर लिया है। सिंगल के इजाफे के साथ टीम इंडिया 123 पे 2 आउट। बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते हुए इस ओवर के अंदर, पिछले ओवर के अंदर 10 रन आए, इस ओवर के अंदर अभी तक 7 रन बन चुके हैं। इंडिया हैविंग अ गुड स्टार्ट। यहाँ पर अब ओवर के गेंद को कवर्स के एरिया में खेला, बहुत ही अच्छा ये शॉट, एक्स्ट्रा कवर के एरिया में गई ये गेंद, एक और सिंगल का इजाफा। तो स्पिन बॉलर्स को आसानी के साथ खेलते हुए टीम इंडिया बिना किसी दिक्कत और परेशानी के आगे लेकर बढ़ते हुए इस मैच को, और बिल्कुल इसी किस्म की पार्टनरशिप की जो है वो उनको आवश्यकता और ज़रूरत थी, जो कि अब लग गई है और लगते हुए हमें दिखाई दे रही है। आखिरी गेंद है इस ओवर की, सामना करेंगे इस गेंद का यशदुल। 22 गेंदों के ऊपर 22 रन बना रखे हैं, जिन्होंने इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश की और गेंद पैड्स पे टकराई है, लेकिन डाउन द लेग साइड ये गेंद तो इसलिए नॉट आउट ही दिया गया है अब अंपायर की ओर से। जी हाँ, तो स्कोर 124 से 2 के नुकसान पे 19 का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो 124 पे 2 आउट। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उनका स्कोर 127 पे 1। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का स्कोर 124 पे 2। तो रन रेट का अगर देखा जाए तो रन रेट जो है वो बिल्कुल बराबरी की सतह पर चलते हुए हमें दिखाई दे रहा है और अच्छे रन रेट के साथ भारतीय टीम भी आगे बढ़ रही है इस मैच के अंदर। पिछले ओवर के अंदर 8 रन आए, उसके पिछले ओवर के अंदर 10 रन आए। तो शानदार तरीके से ये वाला मुकाबला जो कि अब बढ़ते हुए आगे, यहाँ पर अब बॉलिंग के सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए दिखाई देंगे ये स्पिन बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर की बात की जाए तो फास्ट बॉलर 2 ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो है फास्ट बॉलर को यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑस्टम के बैट की ये गेंद जिसे खेल दिया है कवर एंड पॉइंट के एरिया में, बेहतरीन तरीके से खेला गया है शॉट और मिलते हुए एक और सिंगल। अनदर इजी सिंगल, सिंगल के इजाफे के साथ 125 से स्कोर 2 के नुकसान पे 19 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका। 20वें ओवर का खेल जो कि है अभी जारी और टीम इंडिया का जो रन रेट है वो 6 से कहीं ऊपर 6.5 के आसपास का ये रन रेट चलते हुए टीम इंडिया का। एक स्लिप के साथ सुफियान मुकीम की ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट के एरिया में, कोई भी रन जो है वो लेने का मौका मौजूद नहीं है। डॉट के साथ 125 से स्कोर 2 के नुकसान पे सिंगल डबल के साथ मैच को डीप लेकर जाते हुए यशदुल। पाकिस्तान 131 पे 1, इंडिया 125 इसी स्टेज के ऊपर। यहाँ पर ओवर की रहेगी अब अगली गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का यशदुल। इस गेंद को हवा में खेल दिया मिड ऑफ के एरिया में, एक टप्पा लगते हुए ये गेंद मिड ऑफ के फील्डर के पास गई है। कासिम अकरम पीछे मौजूद, जिन्होंने इस गेंद को पकड़ते हुए जब तक किया है वापस 1 रन का होते हुए इजाफा। थोड़ा रिस्की शॉट था ये, क्योंकि सुफियान की गेंद जो कि एक चाइनामैन बॉलर है, उनकी गेंद टप्पा खाते हुए बाहर की ओर भी निकलती है और अंदर भी आती है, तो फिर मुश्किलात पड़ सकती हैं बैटर को। लेकिन फिलहाल अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आगे बढ़ते हुए सुफियान मुकीम जो है वो अभी तक थोड़े महंगे साबित होते हुए यहाँ पर ओवर की है अगली गेंद। इस गेंद को उठा दिया है हवा में 6 रन के लिए, मिड विकेट के एरिया को टारगेट किया और इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार। एक बेहतरीन छक्का लगते हुए 132 से स्कोर 2 के नुकसान पे इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स अब बराबरी की सतह पर आते हुए दोस्तों इस मैच में मैच इज 50-50। तो व्हाट अ 6 टुवर्ड्स मिड विकेट एरिया। कप्तान हारिस जो है वो बॉलर से खुश बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे, और दूसरी तरफ टीम वेस्ट इंडीज ने अपनी 9वीं विकेट को लूज कर दिया है ऑन 255। 183 रन अभी भी लीड है टीम इंडिया के पास, जो कि एक अच्छी खासी लीड है। अभिषेक शर्मा है स्ट्राइक लाइन पे मौजूद, और ये गेंद जाते हुए सीधा पॉइंट के फील्डर के पास, आउट होते हुए दोस्तों अभिषेक शर्मा। एक अच्छा कैच, एक बेहतरीन कैच लिया गया है पॉइंट के फील्डर की ओर से, नाम है जिनका तैयब है।
अभिषेक जो कि इस गेंद को कट करने के लिए गए और सीधा वो खेल बैठे इस गेंद को पॉइंट के फील्डर के पास, जिन्होंने इस गेंद को कैच किया। 132 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जोरदार तरीके से खेला गया शॉट, मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को एंड अ लवली कैच बाय तैयब ताहिर। एक उम्दा कैच लेते हुए तैयब ताहिर 132 से स्कोर 3 के नुकसान पे। विकेट फॉर टीम पाकिस्तान एंड अ बिग विकेट। सेट बैटर आउट हुए हैं, नाम है जिनका अभिषेक शर्मा। 61 रन बनाकर उन्होंने किया 51 गेंदों का सामना। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो उन्होंने इनिंग्स खेली। 120 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। ताली होनी चाहिए दोस्तों इनकी इस इनिंग्स के लिए। अभिनव बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। बिल्कुल सब खैरियत है और करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। तो तीसरी विकेट गिर चुकी है और सुफियान मुकीम को मिलते हुए ये विकेट। मच नीडेड विकेट फॉर टीम पाकिस्तान। यहाँ पर अब स्कोर 132 से 3 के नुकसान पे 19 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद। जरब दियोरल और साथ में रियान पराग और मतलब अच्छी खासी जो है वो टीम इंडिया की भी बैटिंग है। तो तीसरी विकेट गिरते हुए एट दिस स्टेज यहाँ पर अब स्कोर 132 से 3 के नुकसान पे 19 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। इंडिया ने पाकिस्तान से विकेटें ज़्यादा लूज़ की हुई। निशांत संधू आज के हैं दोस्तों बैटिंग करने के लिए। तो 3 मेन प्लेयर जो हैं वो टीम इंडिया के अभी मौजूद हैं। निशांत संधू जिन्होंने 12 मैचेस के अंदर 115 रन बनाए हुए 16 की एवरेज के साथ लिस्ट ए करियर में। इनकी लिस्ट ए की जो करियर एवरेज है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस किस्म के मैचेस के अंदर प्लेयर चल जाते हैं। और एक और चीज़ जिसको मेंटेन रखने की कोशिश की है टीम इंडिया ने वो ये है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन को जो मेंटेन रखने की कोशिश में होंगे अब ये। इसी वजह से निशांत संधू जो है वो अब आज के बैटिंग करने के लिए। 132 से स्कोर 3 के नुकसान पे 19 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। दैट्स अ बिग विकेट फॉर टीम पाकिस्तान हियर। यहाँ पर अब स्ट्राइक पे मौजूद हैं नए आने वाले ये प्लेयर, नाम है जिनका निशांत संधू, जिन्होंने इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर्स के एरिया में खेल दिया। कवर्स की पोजीशन पर फील्डर अब मौजूद, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है वापस। दोनों रन ऑन दिस डिलीवरी डॉट के साथ अब स्कोर 132 से 3 के नुकसान पे। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुकाबला जो है वो अब कुछ इस अंदाज से बढ़ चुका है आगे। मुकाबला जो है वो दोस्तों कुछ इस अंदाज से आगे बढ़ चुका है कि 9वीं विकेट गिर चुकी है टीम वेस्ट इंडीज़ की। दे हैव लॉस्ट देयर 9th विकेट। और दुल जो है वो दोस्तों इस मैच के अंदर अभी 23 के स्कोर पर मौजूद हैं। 25 गेंदों का किया हुआ सामना। इंडिया और पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स के अंदर बराबर स्कोर बनाए। इंडिया और पाकिस्तान की टीम की अगर बात कर लेते हैं तो सेकंड जो 10 ओवर्स थे उसके अंदर पाकिस्तान की टीम स्लाइटली थोड़ी ऊपर गई, स्लाइटली रन्स के मामले में। और अब देखते हैं कि तीसरा फेज़ जो है वो किस टीम का नाम रहता है, मिडिल फेज़। अगले ओवर की अब होगी शुरुआत। यश दुल जो कि स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, इस गेंद को जो कि ऑन पैच थी मिड विकेट के एरिया में खेल दिया आसानी के साथ। सिंगल को पूरा करते हुए ये प्लेयर सिंगल के इजाफे के साथ अब दूसरे के लिए भी आना चाहते थे, लेकिन सिंगल ही बनी है इस गेंद के ऊपर। 133 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 20 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। पहली गेंद के ऊपर जो है वो सिंगल आते हुए और अब नए आने वाले प्लेयर निशांत जो है वो दोस्तों स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं। निशांत संधू जी बिल्कुल वो हैं अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। और देखते हैं कि किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए अब हमें दिखाई देने वाले हैं निशांत संधू। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को मुबशिर की गेंद को बैट एंड बैट को साथ मिलाते हुए खेल दिया है वापस बॉलर के पास। स्कोर 133 से 3 के नुकसान। और दूसरी तरफ टीम वेस्ट इंडीज़ जो है वो दोस्तों ऑल आउट होते हुए, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो ऑल आउट होते हुए 21 मिनट हुए हैं अब आज के इस दिन के अंदर, यानी कि जो मतलब पहले दिनों के मुकाबले में खेल होता है। वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑल आउट हो गई है। टीम इंडिया के पास 183 की लीड है और आज वो सारे के सारे दिन खेलते हुए और जो है वो बड़ा स्कोर बनाते हुए इस मैच के अंदर कमबैक करने की कोशिश करेगी। अच्छी गेंद निशांत संधू के लिए, बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए ये गेंद फाइनल लेग के एरिया में गई है। 1 रन का होते हुए इजाफा और सिंगल के इजाफे के साथ दूसरे के लिए भी वापस आया। 135 से स्कोर 3 के नुकसान पे। मुबशिर की एक अच्छी गेंद बचते हुए यहाँ पर। तो ये है दोस्तों अब तक की सिचुएशन। बात की जाए 36 से स्कोर 3 के नुकसान पे।
इंडियन टीम जो है वो दोस्तों अभी भी इस मैच के अंदर है, क्योंकि इंडिया की टीम का जो रन रेट है वो काफ़ी बढ़िया है। सो इस वजह से अभी वो इस मैच के अंदर है। दे नीड अ पार्टनरशिप हेयर ताकि मैच जो है वो थोड़ा डीप जा सके। रिक्वायर्ड रन रेट 7.5, करंट रन रेट 6.5। कप्तान यश दुल ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन के एरिया में खेलते हुए एक रन को फिर से पूरा कर लिया है सिंगल के इजाफे के साथ। 138 है स्कोर। नंबर 3 के नुकसान पे 21 का खेल अब हो चुका है पूरा। और दूसरी ओर इंडिया और टीम वेस्ट इंडीज़ के मैच के अंदर जो है वो दोस्तों इनिंग्स एक आ चुकी है। इंडिया के पास एक अच्छी लीड, 183 रन्स की लीड जो है वो टीम इंडिया के पास है। उस लीड में आज के इस दिन के अंदर वो इजाफा करते हुए 200 रन्स का और फिर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर सकते आज दिन के लास्ट में शायद, या फिर कल। एक 137 पे 3 आउट है, 21 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। 174 गेंदें हैं, 216 रन की ज़रूरत है भारतीय टीम को। स्कोर और गेंदों का जो फ़र्क है वो उतने का उतना ही है जो कि लगभग इनिंग्स की शुरुआत में था, बल्कि उससे थोड़ा सा कम है। गुल जो है वो दोस्तों स्ट्राइकर एंड पे मौजूद यहाँ पर। और की गेंद, अच्छी गेंद, बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए ये गेंद गई है फाइनल लेग के एरिया में, बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए ये गेंद फील्डर गेंद के पीछे और बिल्कुल बाउंड्री के पास जाकर इस गेंद को साहबजादा फरहान ने फील्ड करते हुए जब तक वापस थ्रो किया है। 3 रन को पूरा कर लिया गया। 3 रन जो है वो आसानी के साथ पूरा करते हुए ये दोनों ही बैटर्स 3 रन के इजाफे के साथ 140 से स्कोर 3 के नुकसान पे। जी बिल्कुल, बाउंड्री को जो है वो चेक किया जा रहा है कि ये चौका हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर चौका नहीं हुआ क्योंकि साहबजादा फरहान की अच्छी फील्डिंग एफर्ट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की ये सिचुएशन है कि वहाँ पर अभी बारिश है। इट्स बीन रेनिंग ऑल डे, और अगले जो कुछ घंटे उनके अंदर भी बारिश की ही संभावनाएं हैं। बाउंड्री को जो है वो चेक किया जा रहा है कि ये चौका हुआ है या नहीं हुआ। इस चीज़ को जो है वो चेक किया जा रहा है कि ये चौका है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अब चेक करते हुए अंपायर इस चीज़ को, तो चौका नहीं हुआ है क्योंकि अच्छी एफर्ट देखने को मिली है हमें साहबजादा फरहान की तरफ से। 3 ही रन बने हैं इस गेंद के ऊपर। 1 रन कीमती 1 रन जो है वो अपनी टीम के लिए बचाते हुए हमें यहाँ पर वो दिखाई दिए हैं। स्कोर 140 से 3 के नुकसान पे 21 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। स्ट्राइक पे हैं अब निशांत संधू एक स्लिप के साथ। ओवर की अगली गेंद इनके लिए यहाँ पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पॉइंट के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा किया। रन आउट का खतरा और यहाँ पर कप्तान हारिस एक और रन आउट के चांस को मिस करते हुए। बहुत ही खराब फील्डिंग टीम पाकिस्तान की आज के इस दिन के अंदर 2 से 3 रन आउट के चांसेस मिस कर दिए और इसके अलावा 10 से 15 रन ऐसे हैं जो कि उन्होंने अपनी खराब फील्डिंग की तरफ से वजह से दिए हुए हैं। अगर हारिस इस गेंद को पकड़ लेते और विकेटों में दे मारते तो यकीनन ये आउट हो जाते प्लेयर। हारिस की पोजीशन बहुत ही खराब थी, वो विकेटों के आगे थे। और सिली फील्डिंग बाय पाकिस्तान इन दिस मैच। यहाँ पर अब 141 से स्कोर 3 के नुकसान पे बड़ा चांस दिया है उन्होंने यश दुल को जो कि कप्तान है टीम इंडिया के, और यकीनन इस चांस का वो फायदा उठाएंगे ही। ऑस्टम के बैट की गेंद को मिड ऑफ के एरिया में खेलते हुए सिंगल को पूरा किया आसानी के साथ, सिंगल के हिसाब के साथ। अब स्कोर 142 से 3 के। So 143 for the loss of 3 wickets. 21 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका। ओवर की है अगली गेंद, इस गेंद को बैकवर्ड पर जाकर कवर्स के एरिया में खेल दिया है। अनदर गुड शॉट, बाउंड्री की तरफ बढ़ते हुए ये गेंद फील्डर गेंद के पीछे और बिल्कुल बाउंड्री के पास जाकर जब तक उन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए वापस किया है। 1 रन का होते हुए इजाफा और दूसरे के लिए भी वापस। टीम इंडिया गोइंग अलोंग प्रीटी नाइसली इन दिस मैच। अच्छी पार्टनरशिप लगाते हुए ये प्लेयर्स अब जब से विकेट गिरी है उसके बाद पिछले ओवर के अंदर 5 रन आए, इस ओवर के अंदर 7 रन आए, कुल मिलाकर 12 रन जो है वो अब तक इस पार्टनरशिप के अंदर बन चुके हैं 2 ओवर्स के अंदर। ऑन पैड ये गेंद जिसे मिड विकेट के एरिया में खेला है, अनदर डॉट डिलीवरी। 144 पे 3 आउट। निशांत संधू 6 के स्कोर पर अब मौजूद हैं। ओवर की आखिरी गेंद का जो करेंगे सामना। ओवर की आखिरी गेंद जिसे खेल दिया है लेग साइड में, लेग के एरिया में खेलते हुए एक और सिंगल को पूरा करते हुए ये प्लेयर। पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग बहुत ख़राब रहते हुए इस मैच के अंदर, और हार की अगर बात कर लेते तो हार
हार और जीत का जो फ़र्क रहता है कभी कभार वो आपकी फील्डिंग का ही होता है। और यहाँ पर फील्डिंग जो है वो दोस्तों बहुत ही ख़राब टीम पाकिस्तान की। स्कोर अब रहते हुए 145, 3 के नुकसान पे 22 का खेल अब हो चुका है पूरा। यश दुल 29 के स्कोर पे 29 गेंदों का किया हुआ है सामना। निशांत संधू की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 7 रन बनाए हुए, 9 गेंदों का किया हुआ है सामना। अच्छी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स जो है वो दोस्तों खेलते हुए यहाँ पर यश दुल अपनी टीम को बना के रखे हुए इस मैच के अंदर। पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते तो उनकी पोजीशन बेहतर थी विकेटों के मामले में अगर देखा जाए तो पोजीशन बेहतर, लेकिन रन रेट जो है वो टीम इंडिया का लगभग पाकिस्तान की बराबरी पर चलते हुए, और एक साथ पाकिस्तानी टीम ने 180 के बाद जो है वो अपनी 3 विकेटों को लूज़ कर दिया था। और अगर टीम इंडिया तब तक ये पार्टनरशिप को लगा लेती है तो फिर चीज़ें जो हैं वो बराबरी पर चली जाएंगी। कवर्स के एरिया में खेला इस गेंद को, कोई रन नहीं आया पहली गेंद के ऊपर। यहाँ पर मुबशर अपने ओवर की दूसरी गेंद के साथ आए गेंद किया इस गेंद को, जो कि हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकवर्ड पर रहते हुए मिड ऑन के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा कर लिया है। सिंगल के इजाफे के साथ 146 है स्कोर 3 के नुकसान पे। 165 गेंदों के ऊपर 206 रन। स्कोर और गेंदों का जो फर्क है वो 40 के आसपास का, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। ओवर की अगली गेंद को कदमों का सहारा लेकर अपनी क्रीज से बाहर निकलते हुए लॉन्ग ऑन के एरिया में खेलकर 1 रन को पूरा किया आसानी के साथ। तो दे आर टेकिंग दी सिंगल्स वेरी इजीली एट दिस मोमेंट। काफ़ी आसानी के साथ जो है वो टीम इंडिया सिंगल्स को पूरा करते हुए, और जो है वो अभी तक अच्छा चलते हुए। इसके बाद अभी आना है ध्रुव जुरेल को, जो है वो दोस्तों बैटिंग करने के लिए आना है। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन के एरिया में खेलते हुए एक और सिंगल को पूरा किया आसानी। सिंगल के इजाफे के साथ 148 से स्कोर 3 के नुकसान पे 22 ओवर और बाद टीम इंडिया हर ओवर के अंदर 6-7 रन को जो है वो पूरा करते हुए और अच्छे रन रेट के साथ जो है वो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हमें दिखाई दे रही है। निशांत ने 9 बनाए हुए हैं, दुरल ने 20 रन जो है वो दोस्तों बनाए हुए हैं। यहाँ पर अब बॉलर एक बार फिर से आए गेंद किया इस गेंद को, जो कि ऑन पैड से खेल दिया है फाइन लेग एरिया में 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट ऑन पैड ये गेंद, और इस गेंद को जो कि खराब गेंद थी भरपूर अंदाज से फायदा उठाते हुए यश दुल की अगर बात की जाए तो तेज़ फास्ट हैंड्स का वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं वो। इनके बल्ले से निकलते हुए एक लाजवाब चौका, और चौके की मदद से अब 152 है स्कोर 3 के नुकसान पे। 150 को क्रॉस करते हुए टीम इंडिया तालियां होनी चाहिए। और के लिए इनको कदमों का सहारा लेकर अपनी क्रीज से बाहर आकर खेल दिया है लेग साइड में, मिड विकेट के एरिया में मौजूद फील्डर के पास ये गेंद एक और सिंगल। वो छोटी छोटी जो पार्टनरशिप्स हैं वो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए इस मैच के अंदर टीम इंडिया के लिए। 153 है स्कोर 3 के नुकसान पे। आज पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो बहुत ही ख़राब रही, और ख़राब फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इस मैच के अंदर उनको पीछे कर सकती है, और अभी तक किया हुआ है। 153 रन बन गए हैं 23 ओवर्स के बाद ही। रन रेट जो है वो 7 के आसपास का, बल्कि 6.5 के ऊपर का चलते हुए अब, और स्कोर और गेंदों का फ़र्क जो कि इनिंग्स की शुरुआत पर 53 का था वो अब कम होते हुए सिर्फ और सिर्फ 38 का बचा हुआ है, और लगातार ये फ़र्क जो है वो दोस्तों रहा है। उम्दा क्रिकेट खेलते हुए टीम इंडिया अभी तक कप्तान ने जो है वो अब तक अपनी टीम को इस मैच के अंदर बना के तो जो है वो रखा हुआ है, और इसके बाद अभी 2 बड़े हिटर्स को आना है जो कि स्पिन बॉलर्स को जो है वो अच्छे अंदाज से खेल लेते हैं। अगले ओवर की अब होते हुए शुरुआत सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स के अंदर 33 रन देते हुए 1 विकेट को किया हुआ है अपने नाम। यॉर्कर लेंथ के गेंद इस गेंद को पॉइंट के एरिया में खेला, कोई भी रन जो है वो लेने का मौका मौजूद नहीं है। स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की टीम 159 पे 2 आउट थे और टीम इंडिया 153 पे 3 आउट। लेकिन वहाँ से गेम बदल सकती है जब पाकिस्तान की टीम ने एक साथ अपनी 3 विकेटों को लूज़ किया था। एफर्ट पर जाकर कट करने की कोशिश, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के पास। वाइड बॉल की मांग, लेकिन वाइड बॉल नहीं दी गई अंपायर की ओर से, और 153 है 4 के नुकसान। अंपायर के डिसीजन से इतने खुश दिखाई दिए नहीं है। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद को फिर से कट करना चाहते थे, बल्ले के आउटसाइड एज को बीट करते हुए ये गेंद गई है विकेट कीपर के पास। अनदर डॉट। 3 गेंदें हुई अभी तक, और 3 गेंदों के ऊपर जो है वो कोई भी रन अभी तक नहीं आया हुआ।
यहाँ पर ओवर की रहेगी। अब अगली गेंद सामना करेंगे इस गेंद का यशदुल, जो कि अब 35 के स्कोर पर मौजूद है। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया है वापस बॉलर के पास। अनदर डॉट डिलीवरी। स्कोर 153 है 3 के नुकसान पे। अभी तक 4 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर के अंदर और अच्छी गेंदें जो है वो करवाते हुए हमें ये प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। ओवर की 5वीं गेंद के साथ अब सुफियान मुकीम है तैयार। तो ये 5वीं गेंद, इस गेंद को खेल दिया है कवर्स के एरिया में। उम्दा ये शॉट, बाउंड्री की तरफ बढ़ते हुए गेंद और मोहम्मद वसीम जूनियर की बेहतरीन फील्डिंग इस दफा। 1 रन का इजाफा और दूसरे के लिए वापस आते हुए 2 रन के इजाफे के साथ 155 है स्कोर 3 के नुकसान पे। 23 ओवर्स और 5 दिनों का खेल अब हो चुका है पूरा। सिंगल ही ली गई है इस गेंद के ऊपर। जी बिल्कुल सिंगल ही ली गई है इस गेंद के ऊपर, क्योंकि यशदुल को ये लगा कि चौका हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट डिलीवरी अब इस ओवर की सामना करेंगे इस गेंद का निशांत संधू। एक अच्छा ओवर चलते हुए टीम पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर सुफियान मुकीम की ये गेंद, इस गेंद को बैकवर्ड पर जाकर कट किया, पॉइंट के एरिया में खेला। एक और डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ अब स्कोर 154 3 के नुकसान पे। इंडिया और टीम वेस्ट इंडीज के दरमियान होने वाला जो मुकाबला है वो भी अब शुरू होने के है दहाने पे और पास, और उसका स्कोर कार्ड भी जो है वो हम आपके लिए सही कर देते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज बिल्कुल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड तो गाइस मैच जो है वो अब बराबरी पर चलते हुए इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। बराबरी पर इसलिए क्योंकि टीम इंडिया जो है वो जाहिर सी बात है एक साथ जो है वो अपनी इतनी ज़्यादा विकेटों को तो लूज़ नहीं करेगी जैसे कि पाकिस्तान ने की थी अपनी 3 विकेटों को 180 के बाद जाकर लगातार लूज़। 180, जी बिल्कुल 180। तो स्ट्राइक पे मौजूद है अब यशदुल। इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेला। 1 रन को जो है वो आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे के लिए भी आना चाहते थे लेकिन सिंगल ही बनेगा इस गेंद के ऊपर। दैट सिंगल द स्कोर इज 155 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कप्तान यशदुल 37 के स्कोर पर अब मौजूद हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, ये 37 के स्कोर पर अब मौजूद हैं। सामना करेंगे अब निशांत संधू इस गेंद का। बैकवर्ड पर जाकर इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर की ख़राब गेंद थी, पंच करते हुए पॉइंट ओवर के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा कर लिया है। सिंगल के इजाफे के साथ 156 स्कोर 3 के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स जो कि पूछी जा रही हैं वो ये हैं कि बारिश हो रही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल दोस्तों, बारिश जो है वो हो रही है। वंस अगेन ये गेंद जो कि शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को मिड ऑफ के एरिया में खेलते हुए 1 रन को दौड़ लिया। बहुत ही उम्दा रन विकेट्स करते हुए सिंगल डबल के साथ मैच को जो है वो आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया। स्कोर 157 है 3 के नुकसान। कप्तान जो है वो अब फील्डिंग में तब्दीली करते हुए जिन्होंने लेग साइड में अब फील्डर को जो है वो बाउंड्री लाइन पे लगा दिया है। ओवर की अगली गेंद, बड़ा शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और एक बहुत ही उम्दा कैच, एक लाजवाब कैच लेते हुए एंड निशांत संधू जो है वो दोस्तों आउट होते हुए इस मैच के अंदर। अब मिड ऑफ के एरिया में जो फील्डर थे उनका एक बहुत ही उम्दा कैच। तैयब ताहिर इस मैच के अंदर एक अलग ही रंग में दिखाई दे रहे हैं हमें। एक उम्दा कैच लेते हुए दोस्तों तैयब ताहिर। विकेट गिरते हुए टीम इंडिया की और आउट होते हुए यहाँ पर प्लेयर नाम है जिनका निशांत संधू। 10 रन बनाए इन्होंने और ये ऐसे ही प्लेयर थे, 10 रन बनाने वाले ही प्लेयर थे, क्योंकि 16 की इनकी एवरेज थी और अब ये आउट हुए हैं 10 रन बनाकर। और दूसरी तरफ जायसवाल ने आते ही दावा बोल दिया है। 7 के स्कोर पे अब मौजूद हैं और इंडिया की टीम तेज़ क्रिकेट खेलते हुए इस मैच के अंदर अपने टाइम को बचाते हुए मैच को जो है वो फिर जीतने की कोशिश में होगी। 5वें दिन के अंदर आज आखिरी सेशन के अंदर वो टीम वेस्ट इंडीज़ को बल्लेबाजी दे देगी और कल फिर 5वें जो है वो दिन के अंदर मैच को जीतेगी। जायसवाल का एक और चौका। तो स्कोर 157 है 4 के नुकसान पे। अब 24 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है। विकेट दिलवाते हुए स्पिन बॉलर मुबशिर, जिनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन इस विकेट ने इन्होंने अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ाना है और आएगी भी। एक लकी ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए पाकिस्तान की टीम को ये दर्व आ चुके हैं दोस्तों बैटिंग करने के लिए। दर्व जुरेल जो है वो अब आ चुके हैं। जुरेल
जुरेल जो है वो दोस्तों बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। विकेट कीपर बैटर हैं टीम इंडिया के, एक अच्छे बल्लेबाज इनको समझा जाता है। ये की रहेंगे टीम इंडिया के लिए, यशदुल की रहेंगे टीम इंडिया के लिए, और साथ में रियान पराग जो है वो दोस्तों, ये 3 प्लेयर जो हैं वो टीम इंडिया के बहुत ही की रहने वाले हैं इस रन चेज में। 21 नंबर की जर्सी पहने हुए जुरेल जिन्होंने अब बैटिंग करनी और मुबशिर बॉलिंग करते हुए लगातार हमें अब दिखाई दे रहे हैं। लास्ट विकेट निशान संधू की 10 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए। बड़ा शॉट खेलने के लिए लॉन्ग ऑफ के एरिया में फील्डर गेंद के दौड़ते हुए इन्होंने अपनी दाएं जानिब दौड़ते हुए इस गेंद को कैच किया और बहुत ही अच्छा कैच लेते दिखाई दिए। $157 है स्कोर 4 के नुकसान पे। इंडियन टीम दूसरी तरफ T20 क्रिकेट खेलते हुए 16 के स्कोर पे हैं अब, 1 ओवर और 1 गेंद के। मुबशिर जिनके ओवर की अगली गेंद जिसे कवर्स के एरिया में किया है ड्राइव, कोई भी रन जो है वो लेने का मौका मौजूद डॉट के साथ अब स्कोर रहते हुए यहाँ पर 157 4 के नुकसान। एक अच्छा मैच जो कि चलते हुए अब यहाँ पर मुबशिर की ये गेंद जिसे संभलते हुए कवर्स के एरिया में खेला, अनदर डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ अब स्कोर 157 है 4 के नुकसान। 1-25 का खेल जो कि अब हो चुका है। 25 ओवर्स के अंदर 157 रन बना लिए टीम इंडिया ने, यानी कि 150 गेंदों के ऊपर 157 रन ये टीम बना चुकी है। और अब जो जीत के लिए गेंदों और स्कोर का फ़र्क है उसकी अगर बात की जाए तो वो फ़र्क जो है वो 246 का। 3 रन आए इस ओवर के अंदर, 1 रन आया पिछले ओवर। तो पिछले 2 ओवर जो है वो काफ़ी बढ़िया गए हैं टीम पाकिस्तान के लिए। 300 लाइक्स कर दिए हुए आप सभी ने, नई लाइक के ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। प्रीति ने हमें ज्वाइन किया हुआ, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम प्रीति। अगले ओवर की अब होगी शुरुआत। यशदुल जो के हैं स्ट्राइकर एंड पे अब मौजूद, जिन्होंने इस गेंद के ऊपर लगाया है बड़ा शॉट। लकी रहे कि यह गेंद गैप में गई सर्कल के फील्डर्स को बीट करते हुए, अदरवाइज ये गेंद किसी भी तरफ जो है वो जा सकती थी। 158 है स्कोर 4 के नुकसान पे। मुकीम छठे ओवर के अंदर जो है वो बॉलिंग करते हुए इनका इस ओवर के अंदर सामना करेंगे अब जुरेल। 158 है स्कोर 4 के नुकसान पे। 25 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका। फील्डिंग की बात की जाए, पॉइंट और लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर है, इसके अलावा लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मौजूद है। जुरेल जो कि अब स्ट्राइक पे है मौजूद। ओवर की रहेगी अगली गेंद, मुकीम की ये गेंद, इस गेंद को कवर्स के एरिया में खेल दिया। अच्छा ये शॉट, पीछे है फील्डर, उन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए किया है वापस सिंगल का होते हुए इजाफा। सिंगल के इजाफे के साथ 159 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी तक गिरने वाली 4 विकेटों की बात करें तो टीम इंडिया ने अपनी पहली विकेट को लूज़ किया था। शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर साइड सिद्धार्थन आउट हुए और उसके बाद शॉर्ट पिच ही गेंद के ऊपर क्रॉस जो है वो दोस्तों आउट हुए। और उसके बाद अगर बात की जाए तो तीसरी विकेट गिरी यशदुल जो है वो दोस्तों स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। बड़ा शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे एंड अनदर विकेट फॉर टीम पाकिस्तान। बड़ी मछली का शिकार। कप्तान जिनके ऊपर ये गेम काफी हद तक डिपेंड कर रही थी वो अब आउट हुए और सुफियान मुकीम को मिलते हुए ये दूसरी विकेट। यशदुल जो कि छक्का लगाने के लिए गए, हालांकि अभी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल हारिस वाली गलती कर दी है उन्होंने। यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने जो गलती की थी बिल्कुल वही गलती आप इसे बोल सकते हैं। विकेट के बाद विकेट गिरते हुए टीम इंडिया की 2 विकेट एक साथ गिरते हुए 159 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पाकिस्तान वेल एंड ट्रूली इन दिस मैच। यहाँ पर अब स्कोर 159 है 5 के। कप्तान यशदुल जिन्होंने अपनी टीम को पिछला मुकाबला जितवाने में एक अहम रोल प्ले किया वो अब आउट हो चुके हैं। 40 रन बनाए, 41 गेंदों का किया सामना। एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद ये आउट हुए, लेकिन थोड़ा टाइम जो है वो इनको और लेना चाहिए था क्योंकि ये चाइनामैन बॉलर हैं सुफियान मुकीम और इनकी गेंद को समझना जो है वो इतना भी आसान नहीं है जितना कि उन्होंने बनाया हुआ था। इनके साथ ही खेलते हुए अंडर 19 से आए हुए हैं ये प्लेयर, सुफियान मुकीम और महरान मुमताज़ और हारिस भी, आयम अयूब भी, ये सभी। तो दोस्तों स्कोर 159 है 5 के नुकसान पे। अब इंडिया की टीम दूसरी तरफ 21 पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे रियान पराग आ चुके हैं बैटिंग के लिए।
ये दो प्लेयर्स जो कि इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, ये की रहने वाले हैं टीम में। रेयान पराग जिन्होंने 36 के एवरेज के साथ 43 मैचेस के अंदर 1200-1300 के करीब रन को बनाया हुआ है। यहाँ पर रेयान पराग जिन्होंने इस ओवर की पहली ही गेंद को कवर्स के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा किया है। सिंगल के हिसाब के साथ अब 160 है स्कोर 5। बहरान मुमताज़ की वो फ्लाइटेड गेंद थी, उन्होंने प्लेयर को मजबूर किया कि वो बड़ा शॉट लगाएं। जी बिल्कुल, दाना जिसे कहते हैं हम, दाना डाला और प्लेयर जो है वो इस गेम 60 है स्कोर 5 के नुकसान पे। यहाँ पर के लिए गेंद ऑस्टन के बाहर की ये गेंद जिसे कवर्स के एरिया में ड्राइव कर दिया है। अच्छा ये शॉट, एक ही रन बनेगा इस गेम के ऊपर। सिंगल के हिसाब के साथ ये एक और अच्छा ओवर चल अभी तक टीम पाकिस्तान के लिए। पिछले ओवर के अंदर विकेट आई, उससे पिछले ओवर के अंदर 1 रन बना और इस ओवर के अंदर अभी तक 4 बने हुए हैं। कम ऑन इंटरनेट 161 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। यहाँ पर अब स्ट्राइक पे मौजूद है बैटर, नाम है जिनका अब क्या लेके नाम है जिनका रेयान पराग। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के एरिया में, फील्डर गेंद के नीचे नहीं थे और इस वजह से लगते हुए चौका। लॉन्ग ऑन के फील्डर जो है वो लॉन्ग ऑन के फील्डर को सर्कल के अंदर लाया गया, प्लेयर को बड़ा शॉट खेलने पे मजबूर किया और प्लेयर जो है वो बड़ा शॉट खेलते हुए रेयान पराग चौका दे मारा है। 165 है स्कोर 5 के नुकसान पे। ये एक अच्छा चौका। इंडिया की लीड आपके सामने 200 के ऊपर की हो चुकी है। 204 रन टीम इंडिया की हो चुकी है। तो दोस्तों चौका देखने को मिला है हमें और अब चौके की मदद से 165 है स्कोर 5 के नुकसान पे। $165 फॉर द लॉस ऑफ 5। जीतेगी कौन सी टीम इस मैच को, इस हवाले से दीजिएगा बता। 8 रन आए पिछले ओवर के अंदर, 1 विकेट गिरी पिछले ओवर के अंदर। नाउ अगर विकेट्स की बात की जाए तो विकेट्स के एतबार से भी टीम इंडिया पाकिस्तान की बराबरी पर आ चुकी है और खेली गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग के एरिया में और 1 रन को बआसानी पूरा किया है इन दोनों ही बैटर्स ने सिंगल के साथ। और 166 है 5 के 26 ओवर्स और 1 गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। यू फैक्टर भी जो है वो दोस्तों एक अहम चीज़ हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। यू फैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं और लवली डिलीवरी दिस टाइम, इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए बैट खेल दिया है। कोई भी रन जो है वो लेने का मौका मौजूद। स्कोर 166 है 5 के नुकसान पे। 26 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। 166 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और के लिए गेंद को खेल दिया है कवर्स के एरिया में। कोई भी रन लेने का मौका मौजूद नहीं है। इंडिया का स्कोर जो है वो दोस्तों 28 है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रोहित और जसवाल जो है वो तेज़ क्रिकेट खेलते हुए अब हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ते हुए वो प्लेयर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, इस गेंद को संभलते हुए बैटर ने खेल दिया है अगेन कवर्स के एरिया में। अनदर डॉट डिलीवरी डॉट के साथ अब और 166 है 5 के नुकसान पे। एशेज़ के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं कि एशेज़ का हाल क्या है। तो एशेज़ के हवाले से आपको बताते चलिए दोस्तों हम कि यहाँ पर बारिश है। इट्स रेनिंग एंड रेनिंग एंड रेनिंग इन एशेज़। जी बिल्कुल दोस्तों अभी भी बारिश हो रही है। दैट्स द अपडेट्स, दीज आर द लेटेस्ट अपडेट्स जो कि अब से कुछ ही देर पहले आई थी और उसके मुताबिक बारिश ही हो रही है। बारिश तो दोस्तों जुरेल जो है वो स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। शॉट पिच गेंद, इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के एरिया में। 1 बाउंस ओवर द फेंस। चौका मिलते हुए 171 है स्कोर 5 के नुकसान पे। अब 27 का खेल अब हो चुका है पूरा। ब्यूटीफुली उनका जुरेल हल्की सी ये शॉट पिच गेंद थी। मुबशिर को जो है वो बॉलिंग से उतारा गया और इस चीज़ का जो है वो अब थोड़ा सा खुमियाजा भुगते हुए पाकिस्तान और इंडिया का मैच 2 सितंबर कैंडी से खेला जाएगा और वो एक अच्छा मैच रहने वाला इन दरमियान। ये जो 2 प्लेयर्स हैं ये की प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस्म की इनकी ओर से जो है वो बल्लेबाजी की। रेयान पराग जो कि हैं अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। ओवर की ये पहली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है उन्होंने फाइनल के एरिया में। अच्छा ये शॉट, 1 रन का होते हुए इजाफा और आसानी के साथ दूसरे के लिए भी वापस आए हैं
एंड दे विल कम बैक फॉर द थर्ड वन एज वेल। जी बिल्कुल दोस्तों, तीसरे के लिए भी वापस आते हुए और 3 रन के हिसाब के साथ अब स्कोर 174 है 5 के नुकसान पे। तो रन्स लगाते हुए टीम इंडिया पिछले ओवर के अंदर 6 रन आए, इस ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर 3 रन आ गए हैं। रन रेट को जो है वो मेंटेन रखते हुए टीम इंडिया 6 के ऊपर का रन रेट, जो कि अब उनको 7 रन पर ओवर चाहिए, तो 6 के ऊपर 6.5 के आसपास का रन रेट रखते हुए छुट्टे हैं। भले उन्होंने 5 लूज़ की हुई है, लेकिन रन रेट को जो है वो दोस्तों मेंटेन रखते हुए इसके बाद अभी जिन प्लेयर्स को आना है बैटिंग करने के लिए उनके बारे में आपको बताते चले। तो इसके बाद अभी आना है किन को। जी बिल्कुल दोस्तों, सुफियान मुकीम जिनके ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद, विकेट ये गेंद जिससे संभलते हुए खेल दिया है वापस बॉलर के पास। मानव को इसके बाद अभी आना है बैटिंग करने के लिए। मानव, हर्षित राणा को आना है, हंगरीकर को आना है और युवराज को जो है वो अभी आना है। तो इस मैच को जो है वो डीप लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए टीम इंडिया को, ताकि जितना लंबा ये मैच जाएगा उतने ही टीम इंडिया के चांसेस जो हैं इस मैच के अंदर बढ़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच बारिश की वजह से अभी तक नहीं है। 174 स्कोर 5 के नुकसान पे 27 ओवर्स और 3 दिनों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट किया, पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल पास से खेला और डीप पॉइंट के एरिया में गई ये गेंद 1 रन का होते हुए इजाफा। इसके बाद मानव को आना है दोस्तों, और मानव की अगर बात की जाए तो 8 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर उन्होंने 267 रन बना रखे हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर की हैसियत से वो खेलते हैं। रेयान पराग जो कि हैं अब स्ट्राइक पे मौजूद, ये 2 प्लेयर बहुत ही की रहेंगे। टीम इंडिया को जीतना है अगर, तो इन 2 प्लेयर्स को जो है वो उम्दा परफॉर्म करना पड़ेगा। बैकफुट पर रहते हुए इस गेंद को स्क्वायर लेग के एरिया में खेल दिया, 1 रन का होते हुए इजाफा और दूसरे के लिए भी वापस आ चुके हैं ये दोनों ही बैटर्स 2 रन के साथ। और 177 है 5 के नुकसान, 27 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद। वन 177 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। टीम इंडिया 35 पे कोई आउट नहीं, 35 विदाउट लॉस। और क्या अगली गेंद, और यहां पर क्या ड्रॉप करते हुए हारिस जो कि विकेटों के पीछे वो कैच को ड्रॉप करते हुए, दैट इज नॉट द मैन यू वांट टू ड्रॉप। हारिस विकेटों के पीछे थे, उन्होंने इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद जो है वो पल्ले का किनारा लेते हुए उनके हाथों से निकल गई। स्कोर 177-5 पे बिग चांस, बहुत ज़्यादा चांसेस को मिस करते हुए टीम पाकिस्तान इस पूरे के पूरे मैच के अंदर। खराब फील्डिंग पूरी की पूरी जो है दोस्तों रहते हुए सवाए एक फील्डर के वो हैं तैयब ताहिर, बाकी कोई भी फील्डर जो है वो अभी तक हमें इतनी बढ़िया फील्डिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। पहली गेंद रहेगी इस ओवर की, पिछले ओवर के अंदर 6 रन आए। पहली गेंद इस ओवर की, इस गेंद को संभलते हुए खेल दिया है वापस बॉलर के पास डॉट के साथ। 177 है स्कोर 5 के नुकसान पे। सुफियान मुकीम की वो गेंद, कोई भी फील्डर स्लिप पर नहीं था। भाई क्या ही कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पर हारिस, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि व्हाट ही वांट टू डू हियर, क्योंकि नए दोनों ही नए बैटर हैं और कोई भी प्लेयर स्लिप पर नहीं है। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर उनकी गेंद जो है वो टप्पा खाते हुए बाहर की तरफ भी निकलती है। ये एक बहुत ही अजीब सी कप्तानी करते हुए यहाँ पर एक और यॉर्कर जिसे खेल दिया है लेग साइड में, एक और सिंगल का इजाफा। जब कोई भी प्लेयर नया आता है तो उसके खिलाफ स्लिप्स जो है वो लगाई जाती है। यहाँ स्ट्राइक पे मौजूद है रेयान पराग, 11 के स्कोर पर मौजूद है। ओ लवली डिलीवरी, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए ये गेंद पॉइंट के एरिया में गई, बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में। अनदर गुड डिलीवरी। कप्तान हारिस जो है वो उनको अभी काफ़ी सी स्ट्राइक पे मौजूद है दोस्तों यहाँ पर अब रेयान पराग। और के लिए गेंद, बड़ा शॉट, टॉप एज, गेंद हवा में, मौका बन सकता था लेकिन लकी रहते हुए दोस्तों रेयान पराग की ये गेंद बॉलर के सर के ऊपर से होते हुए पीछे जाकर गिरी है। दैट कुड बी अ चांस, लेकिन लकी रहते हुए यहाँ पर अब रेयान पराग, कोई भी फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाया इन टाइम और इसलिए बचते हुए ये प्लेयर सर्कल के अंदर लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ में कोई भी फील्डर नहीं था। स्कोर अब 179 है 5 के नुकसान पे। और की अगली गेंद, बड़ा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे है। इस दफा एक अच्छा कैच, आसान कैच और कोई गलती ना करते हुए टीम पाकिस्तान 179 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। वाओ,
बड़ी विकेट मिलते हुए 179 6 के नुकसान पे आउट हो चुके हैं प्लेयर। गेंद को लॉन्ग ऑफ के एरिया में खेलने के लिए गए, गेंद हवा में रही और गेंद गई सीधा फील्डर के पास और इस तरह टीम जो है वो विकेट को लूज करते हुए, टीम इंडिया एक बड़ी विकेट को लूज करते हुए आउट होने वाले प्लेयर जुरेल। वन 79 for 6 टीम। तो अच्छा मिडिल फेज जो है वो टीम पाकिस्तान के लिए चलते हुए अब दिखाई दे रहा है हमें, बहुत ही शानदार किस्म। वन 79 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 28 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। जो रेल 14 के स्कोर जो कि आउट होकर गए पवेलियन की तरफ वापस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑलराउंडर। ऑलराउंडर जो है वो दोस्तों ग्राउंड के अंदर आते हुए अब बैटिंग करने के लिए रियान पराग। रियान पराग जो है वो दोस्तों की रहने वाले, उनके लिए याद रहे कि रियान पराग को भी एक 3 से 4 ऐसे प्लेयर हैं जिससे पाकिस्तान की टीम ने डबल चांसेस दिए हैं। कभी उनके रन आउट चांसेस, कभी उनके कैचेस ड्रॉप किए गए हैं, तो लकी रहते हुए 179 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हर्षित राणा आ चुके हैं और 9 रन हैं शायद इनके। हर्षित राणा जो है वो दोस्तों बैटिंग करने के लिए आज बिल्कुल देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या रहती है। 179 है स्कोर टीम इंडिया 6 के नुकसान पे। वी हैव प्लेयर नाम है जिनका हर्षित राणा। किस किस्म की क्रिकेट खेलने वाले हैं हर्षित राणा। अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इनका, कैसी क्रिकेट जो है वो इन्होंने खेली हुई है। ओवर की अगली गेंद ऑन पैच, ये गेंद अपील LBW की लेकिन नॉट आउट। ओवर एक और कामयाब ओवर जो है वो खत्म होते हुए। जी बिल्कुल दोस्तों 179 है स्कोर 6 के नुकसान पे 29 के बाद। हर्षित राणा की अगर बात की जाए तो इनके हवाले से हम आपको बता देते हैं 7 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर इन्होंने जो है वो अब तक 28 विकेट्स ले रखी हैं। और अगर बात की जाए तो इनके रन्स के हवाले से हम आपको बता देते हैं, रन्स 343, 49 की एवरेज के साथ ये बैटिंग करते हैं। तो बैटिंग कर लेते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ये बात थी। लेकिन लिस्ट ए में इन्होंने 5 मैचेस के अंदर 9 रन बनाए हुए। लिस्ट ए का मतलब वनडे मैचेस होता है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर, यानी कि डोमेस्टिक के। लेकिन अगर बात की तो वो टेस्ट मैचेस होते। तो 179 है स्कोर 6 के नुकसान पे। टीम इंडिया 43 पे, कोई आउट नहीं है दूसरी तरफ। इसके बाद मानव कौन है 125 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते हैं। इट्स ऑल अबाउट रियान पराग नाउ। जी बिल्कुल दोस्तों, अब सारी की सारी बात जो है वो इनकी है। देखते हैं कि ये अपनी टीम को लास्ट तक लेकर जा पाते हैं, नहीं लेकर जा पाते। बैकफुट पर रहते हुए इसके इनको बल्लेबाज ने खेल दिया है। पर लेग के एरिया में 1 रन का होते हुए फिर से इजाफा। 180 है स्कोर 6 के नुकसान। तुफान मुकीम जो है वो 8वें ओवर के अंदर 49 रन देते हुए 2 विकेटों को कर चुके हैं अपने नाम। अभी नए प्लेयर हैं और इनको जो गलतियों को हारने को, यानी कि अपनी इकॉनमी जो है वो दुरुस्त करने का मौका मिलेगा अगले आने वाले टाइम के अंदर। ओहो हो, खूबसूरत गेंद और राणा के बल्ले से बल्ले को बीट करते हुए ये गेंद गई है विकेट कीपर के पास। लाजवाब गेंद, एक तरह से गुगली थी। और लवली डिलीवरी वंस अगेन, अपील लेकिन नॉट आउट। शानदार बॉलिंग होते हुए बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए ये गेंद एक बार फिर से गई है विकेट कीपर के पास। 180 है स्कोर 6 के नुकसान पे। 30 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। तुफान मुकीम अच्छी बॉलिंग करते हुए फिलहाल यहाँ पर एक स्लिप को लगा दिया गया है, तो कुछ सीखते हुए यहाँ पर कप्तान हर्षित जो है वो दोस्तों स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है। राणा जो है वो स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। ओ लवली डिलीवरी वंस अगेन, एक बार फिर से ये गेंद बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के पास। मुकीम ने अभी तक 49 रन देते हुए 2 विकेटों को किया हुआ है अपने नाम। तो यहां पर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम कैच को ड्रॉप करते हुए दोस्तों, और राणा का इस बार बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर को ये गेंद जो है वो बीट करते हुए और उनके सर के ऊपर से होते हुए गई है 6 रन के लिए।
छक्का लगते हुए दोस्तों, छक्के की मदद से 186 है स्कोर 6 के नुकसान पे। अब दूसरी ओर टीम वेस्ट इंडीज कैच ड्रॉप कर, वेस्ट इंडीज की टीम ने मुझे लग रहा है कि कोई 8-10 कैचेस तो ड्रॉप कर ही दिए हैं। 186 है स्कोर 6 के नुकसान पे। छक्का लगाया है राणा भाई ने। तो लास्ट डिलीवरी रहेगी दोस्तों अब इस ओवर की। सामना करेंगे राणा, इस गेंद को डिफेंड करते हुए उन्होंने खेल दिया है। अब कोई भी रन नहीं आया, 6 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर के अंदर। 6.20 के रन रेट के साथ टीम इंडिया जो है वो अब आगे बढ़ते हुए, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते हुए 8.35 का हो चुका है। दे नीड 167 रन्स टू विन इन 120 डिलीवरीज। पे आशिफ अली ने हमें ज्वाइन किया हुआ है 2 गेंदों की कुप्पी के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल? उम्मीद है क्या सब लोग ठीक होंगे। मैच की सूरत हाल देखी जाए तो 186 हो चुका है स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पे 30 और का खेल हो चुका मुकम्मल। बोल रहा है गेंद किया, अगेंस्ट इस गेंद को ड्राइव कर दिया है और फील्डर मौजूद, इसलिए कोई भी रन नहीं लिया गया। और उतना का उतना गेंदों के अंदर इजाफा होते हुए बोल रहा है गेंद किया, बढ़िया गेंद, कोई भी रन इसके साथ भी नहीं लिया गया। डिफेंड किया है लेकिन वापस जाते हुए बॉलर पास। ये लेग स्टंप पर पिच छोड़ी, रन इसके साथ भी नहीं लिया गया। डिफेंड किया है लेकिन गेंद को भी खेल दिया है, कोई भी का मौका पास। जो से बॉलिंग करवा रहे हैं, 1 विकेट अभी तक इन्होंने हासिल किया है। 21 रन है 5 3.5 ओवर के, छोड़े रन इसके साथ भी नहीं लिया गया। डिफेंड किया है लेकिन बैट को भी खेल दिया है, कोई भी को ड्राइव कर दिया है बड़ी अंदाज से। 1 रन लेने का मौका और इसके बाद आसानी पूरा कर लिया है और रन एक साथ 6 विकेट नुकसान है लेकिन आउटसाइड कोई भी को ड्राइव कर दिया है बड़ी अंदाज से। 30 रन लेने का मौका और इसके बाद आसानी काशिफ वो भी एंजॉय करते हुए मैचेस के अंदर 78 रन बनाए हुए आईपीएल के अंदर। ड्राइव कर दिया बड़ी अंदाज से, 30 रन लेने का मौका और इसके बाद आसानी वहां पर ये हमें इतनी अच्छी फॉर्म में दिखाई। काशिफ वो भी एंजॉय करते हुए मैचेस के अंदर 78 रन बनाए हुए आईपीएल के अंदर। ड्राइव कर दिया बड़ी अंदाज से, 30 रन लेने का मौका और इसके बाद आसानी वहां पर ये हमें इतनी अच्छी फॉर्म में दिखाई। काशिफ वो भी एंजॉय करते हुए मैचेस के अंदर 78 रन के लिए गेंद और बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ लवली डिलीवरी दिस बाय मेहरान मुमताज और आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज। 14 के स्कोर पर 17 गेंदों का किया उन्होंने सामना। 188 टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गेंद और बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ लवली डिलीवरी दिस बाय मेहरान मुमताज और आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज। 14 के स्कोर पर 17 गेंदों का किया उन्होंने सामना। 188 टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गेंद और बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ लवली डिलीवरी दिस बाय मेहरान मुमताज और आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज। 14 के स्कोर पर 17 गेंदों का किया उन्होंने सामना। 188 टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गेंद और बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ लवली डिलीवरी दिस बाय मेहरान मुमताज और आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज। 14 के स्कोर पर 17 गेंदों का किया उन्होंने सामना। 188 टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गेंद और बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ लवली डिलीवरी दिस बाय मेहरान मुमताज और आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज। 14 के स्कोर पर 17 गेंदों का किया उन्होंने सामना। 188 टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गेंद और बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ लवली डिलीवरी दिस बाय मेहरान मुमताज और आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज। 14 के स्कोर पर 17 गेंदों का किया उन्होंने सामना। 188 टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गेंद और बोल्ड कर दिया है। व्हाट अ लवली डिलीवरी दिस बाय
आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स होल्ड कर दिया है आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स होल्ड कर दिया है आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स होल्ड कर दिया है आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स होल्ड कर दिया है आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज टीम इंडिया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स होल्ड कर दिया है आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए आउट होते हुए यहाँ पर ये प्लेयर नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में हुए यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज ये बड़ा शॉट होल्ड के लिए और इस दफा बल्ले का किनारा ये गेंद सिर्फ के फील्डर के हाथों में यहाँ पर राणा जी नाम है जिनका रियान फराज
Just
बॉल में के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है अरशद इकबाल ने। के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है। शॉट की जगह कट करने की कोशिश गेंद को लेकर आउटसाइड के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है। शॉट की जगह कट करने की कोशिश गेंद को लेकर आउटसाइड के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है। शॉट की जगह कट करने की कोशिश गेंद को लेकर आउटसाइड के लिए गेंद और फोल्ड कर दिया है। एक शानदार गेंद फोल्ड आउट कर दिया है। शॉट की जगह कट करने की कोशिश गेंद को लेकर आउटसाइड
Thank you.
जबरदस्त तरीके से खेलते हुए आज और पाकिस्तान शाहिया है और इसी के साथ पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया और पाकिस्तान शाही के साथ साथ टाइटल को जीतते हुए किया है डिफेंड कर दिया है उसने टाइटल को शानदार तरीके से खेलते हुए आज और पाकिस्तान शाहिया है बेटा सेकंड पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया और पाकिस्तान शाही के साथ साथ टाइटल को जीतते हुए किया है डिफेंड कर दिया है उसने टाइटल को शानदार तरीके से खेलते हुए और पाकिस्तान शाहिया है बेटा सेकंड बॉल के बाद आपने जो ऐसा जीत लिया और यहाँ पर जो बॉल ये गेंद नहीं रहेगा और जीतते हुए पाकिस्तान की टीम ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट जो है वो पूरा होने वाला है 6,80,000 का, वो भी पूरा कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान की जिन्होंने इस मैच में जीत लिया और जीतने के साथ ही टाइटल को डिफेंड किया। दे आर दी सेकंड टाइम चैंपियन ऑफ दिस टूर्नामेंट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्रीलंका ने 2 दफ़ा टाइटल को जीता, इंडिया ने 1 दफ़ा टाइटल को जीता और अब पाकिस्तान की टीम ने टीम श्रीलंका को ऑल आउट किया और इस मैच को जो है वो 128 रन के एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते हुए। जी बिल्कुल, ग्रुप स्टेज के अंदर ये दोनों ही टीम्स टकराई ज़रूर थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो टीम पाकिस्तान हमें नाकाम होते हुए दिखाई दी और यहाँ पर जो है वो आपको बताते चले कि जो है वो ये सिचुएशन बनी है और दोनों ही कप्तान जो है वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए दुरुल जो भी है मतलब यशदुल भी जो है दोस्तों उनको कंग्रेचुलेट करते हुए पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ACC इमर्जिंग एशिया कप का ये फाइनल मुकाबला जिसे जीत लिया है टीम पाकिस्तान ने और टाइटल को कर लिया है डिफेंड। दे आर दी डिफेंडिंग चैंपियंस और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है उन्होंने और 128 रन के बड़े मार्जिन से जीता है। एक वन साइडेड सा मैच हमें जो कि देखने को मिला और कमाल की बैटिंग की गई दोस्तों आज के इस दिन के अंदर टीम पाकिस्तान की तरफ से और उसके बाद बॉलर्स ने मिडल ओवर्स के अंदर जो है वो इंडियन बैटिंग की कमर तोड़ते हुए इस मैच को जो है वो जीत लिया है टीम पाकिस्तान ने। अब और यहाँ पर अगर बात की जाए टीम पाकिस्तान की तो इससे पहले 2019 में उन्होंने टाइटल को जीता था और अब पाकिस्तानी टीम जो है वो टाइटल को जीतते हुए 2023 में ये कह लीजिए कि शाहीन्स का मैच, ये टीम का मैच और यॉर्कर लगाकर बोल्ड आउट किया मोहम्मद वसीम जूनियर ने बैटर को, दूधिया को और इस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टाइटल को जीतने में कामयाब हुई। अगर बात की जाए दोस्तों आज के इस मुकाबले की तो टॉस हुआ, इंडियन टीम ने टॉस को जीता और टॉस को जीतने के बाद टीम इंडिया जो है वो उन्होंने जो काम किया दोस्तों वो ये किया कि यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया। जी बिल्कुल, पिछले मैच की तरह पाकिस्तान की बैटिंग आई और पिछले मैच के अंदर आपको याद होगा पाकिस्तानी टीम 200 के ऊपर जाकर ऑल आउट हो गई थी। इंडिया की टीम को यही लग रहा था कि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ क्योंकि जो ओपनर्स थे उन्होंने कमाल कर दिया। यहाँ पर साइफ अयूब की बात की जाए 59 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली उन्होंने, 65 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 65 रनों का किया सामना और यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुरुआत जो है वो लेने में टीम इंडिया पाकिस्तान कामयाब हुई। उसके बाद मिडल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन 5 विकेट गिरने के बाद जो है वो तैयब ताहिर ने कमाल किया दोस्तों। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा तैयब ताहिर को और यहाँ पर उन्होंने 100 के ऊपर रन को बनाया और साथ में लाजवाब कैचिंग भी की आज के इस मैच के अंदर, तो उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और पाकिस्तान की जो मेन टीम्स के प्लेयर हैं वो भी उनको अप्रिशिएट करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो कि स्टेडियम के अंदर मौजूद इस मैच को देखने के लिए आए हुए, वो भी उनको अप्रिशिएट करते हुए। और कल मैच से पहले जो है वो उन्होंने जो है वो कह लीजिए कि उनके साथ मीटिंग की और शायद वो मीटिंग का ही असर था कि इनका जो कह ले कि यहाँ पर हौसला जो है वो बढ़ते हुए हमने देखा और उसके बाद जो है वो आपके सामने ये रिजल्ट आया है।